And you will notice if you look at your mobile phones that we are starting exactly on time. And we intend to keep to time right through all the 5 days. We have still some 30 people in their rooms, and we have about another 40, 50 in the trains coming. But we'll start right away. The first thing is, of course, to put your mobiles off. And if you're addicted to your mobiles, then you have to keep it on silent. Please do that so that the session is not disrupted at all. And try not to go out if you see some message on your phone. Try not to go out. During lunch and so on, you can answer your mobiles. You have very, very good people here in the hall today. Very good speakers. People who have done a lot of work in their lives. And it's really an honor to have them and to listen to them in this training program. The theme of the training program, right through from day 1 to day 5, will be widespread discrimination and violence against women. I'm putting it broadly, there are many, many sections. But the broad theme is violence and discrimination. And when we say that, we don't want to focus so much on stating the problem, because everybody knows what the problem is. We can state it. We don't want you not to state it. You can state it and say this is a problem, but everybody in the hall knows the levels of violence, rape, forced sterilization, sexual assault, sexual harassment in universities. We all know what the problem is. So we don't want to start too much by talking about the problem. What we want to do in these 5 days is the solution to the problem. Generally, but not entirely, generally we are looking at the solution in law. How do we use the law to find a solution to the problems that society throws up? और हालांकि ये political session नहीं है, फिर भी violence और discrimination against women, अगर इसका background नहीं देखेगा, तो बहुत मुश्किल है समझना। और नया जो राजनीतिक जो स्थिति है पिछले 3 सालों का, जो दमन है, जो मेल अग्रेसिवनेस है, जो स्टेट अग्रेसिवनेस है, पुलिस अग्रेशन, politicians' aggression. This new government has given us license to persecute women, isn't it? So now not only we have our enemies in people like rapists and all that, sexual harassers, professors who are harassing people, people who are harassing transgender people. But now the state is saying, go ahead, go. Karo, jo karna hai. He will not prosecute, he will not bother. Women, we are not concerned with jo karna hai karo. So violence by the state, by the police, by private people, discrimination will be a recurring theme right through this conference. कानून का उपयोग कैसे हो? व्यक्तिगत तौर से मतलब individual cases और सामूहिक तौर पर. How do we do public interest litigation? How do we do public interest litigation? And we want to lead. 5 दिन के बाद कुछ नतीजा निकलना चाहिए. Namely, what is our plan of action? What cases are we going to do in the states? What cases in the High Court are we going to do? How to do a PIA? What kind of PIAs will you do? And you'll hear all kinds of interesting speakers. Forced sterilization, illegal abortions, marital rape. All kinds of speakers will tell you of the possibilities of doing PILs in the high courts. And there will be with you today, there will be approximately 130 participants, out of which something like 40 to 50 participants will be lawyers. And we'll try and team you up with your lawyers, the activist lawyer. And at the end of 5 days, we want to make a plan of action for doing PILs in all the states and some PILs in the Supreme Court as well.
The last few years, even though we had a very oppressive government, the courts are doing something interesting and we look at it very carefully. We had a triple talaq judgment. Then Justice Lokur, I wonder how many of you have seen it. He gave one deadly judgment last year. On the inhuman conditions. Inhuman conditions is prisoners, yeah. On child marriages. Okay? Now I think all of you have it on by email, you've got it. And I think we'll also have pen drives, but we can't give it free, right? Or whatever. Anyway, we'll see. But you'll get it on your computers soon. Justice Lokur gave a brilliant judgment on child marriages. And so we always said that child marriages को रोकना नामुमकिन है. ये हमारा संस्कृत है, ये हमारा परंपरा है, हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारा कस्टम है. इसको रोकना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है. Now we'll see. Child marriages को रोक सकता है? Is it possible? और अगर possible है, तो what is the way to stop child marriages? And the marital rape cases are also coming now. Can you imagine? इसमें शायद और बहस होगी. Lot of चर्चा will happen on this child marital rape. So, I want you to focus on law, focus on solution, no complaining about the problem. Okay? Problem हमें मालूम है, दोबारा बताना इतना डिटेल में जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या करना चाहेंगे, हमारे राज्य में हम क्या करना चाहेंगे और हम किस तरह का केस करना चाहेंगे, और केस के बाहर भी स्ट्रगल, नेटवर्क, यूनिटी, संघर्ष. ठीक. फिर अगर आपके संपर्क में कुछ यंग लॉयर्स हैं आपके स्टेट में, आप प्लीज नेटवर्क बनाने में, लीगल नेटवर्क, और ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क सिर्फ लीगल नेटवर्क नहीं है, बल्कि लॉयर एंड सोशल एक्टिविस्ट, ये जोड़ी जो है ना, ये हमारा काम करने का परंपरा है. एक्टिविस्ट एंड लॉयर. नाउ देयर आर पीपल फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स? 15 स्टेट्स एट लीस्ट, roughly 15 states. तो आपके स्टेट में हाउ टू मेक अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, how to expand, how to set up legal aid centers in your state, you please come and suggest to us. Because we want to use this meeting not only to train, we want to use this meeting to build a stronger network. Right? So please come forward. There are lots of young lawyers, I met them over breakfast. Please come forward and meet us, meet the organizers. We want to keep very close touch with the young lawyers, and all women lawyers I saw. The men lawyers are not to be seen much, but I saw a lot of young women lawyers. And we are very happy. Even if there are only women lawyers, we are still very happy. If you want any changes in the program, क्योंकि प्रोग्राम में शायद ये भी हुआ कि कुछ लोगों का नाम नहीं आया, कुछ चेंज होना, आप प्लीज बताइए कि ये चेंज करो, वैसा चेंज करो. There is no problem at all. We have 5 days, we have enough time. And we want that everybody in the hall has adequate time to speak. So you please come up and say, I would like this to say something, I would like to do this. You forgot one very important point, you please come and say it. Okay, so good luck. I want you all to come on time, please. Today we started exactly at 9. It's a respect shown to the speakers. Now look at Kamla, our dear sister Kamla. She's come from very far. We're so happy to have her with us. And if I take, or if we take a little more time than we should, then we cut it up to other people's time. And Kamla, I want to say from my side, I'm so happy to see you here. And this is just one of our many programs. Immediately after this, we do the Prisoners' Rights Program in Delhi, where 200 plus legal aid lawyers are interested. People like you because you are a very inspiring person. Experience, of course, you have tremendous experience, but more than that, you can inspire young people to do great things, So we are very proud to have you among us today.
Okay, thank you everybody. That's all that I want to say. And Sarita will give you a little thing about, I can only talk about our friendship and our, things that we've done, exciting things that we've done together. So Sarita will give you the rest of the stuff. Thank you for coming. Everybody keep to the timings, please. Have a nice time, because this is a beautiful place. And look at God, just look at the rains welcoming us. Have a nice time, everybody. Thank you. Friends, that was Colin Gonzalez, the laureate in 2017 Right to Livelihood Award, widely referred to as the Alternative Nobel Prize. The next person that I would like to introduce is a social scientist by training. She has been actively engaged with issues related to development, gender, education, media, and others since 1970. She's deeply engaged with issues related to gender, development, peace, identity politics, militarization, human rights, and democracy, and seeks to explore and articulate connections between these issues and to promote synergies between movements. Her main work is at the South Asia level and has included the capacity building of South Asian and other young activists and networking amongst civil society organizations in South Asia. Her writings have been extensively on gender, women's empowerment, participatory and sustainable development, participatory training, media, and communication. She's been one of the leading leaders directing the women's movement in India as well as across globally. So I'm honored to present Dr. Kamala Hassan for a keynote lecture. So we have equal numbers. I came prepared, knowing it's a national training. I came prepared to speak in English. अगर बीच में हिंदी में बोलूँगी, चलेगा? दौड़ेगा? So दोस्तों, first of all, I want to say that it was a total surprise and a total honor to be invited here as a keynote speaker. बहुत अच्छा लगा, and I came all the way from Himachal, where I go for 3 months, and I don't go out, but I could not say no to this honor and this surprise. Listening to Colin, really delighted that you are here for 5 days to develop a common understanding on issues related to laws. A common understanding, a clear understanding बहुत जरूरी होती है और बीच-बीच में मिलके रहना पड़ता है क्योंकि लॉ ऐसी
चीज नहीं है कि वो बदलता नहीं, बदलता रहता है। हमारी स्ट्रैटेजीज भी बदलती रहेंगी। तो और नॉर्मली लोग 5 दिन की ट्रेनिंग करते नहीं, 1-2 दिन में निपटा देते हैं, फर्जी आगे बढ़ जाते हैं। पर दोस्तों, आई फील as important as clarity and understanding is solidarity across organizations and across sectors. That for me is almost more important. I can be a brilliant lawyer, but without the network, without unity with people, it's not enough. So I really do want us to recognize this great work HRRN has been doing and has done through this meeting of bringing us together for cross-organization, cross-sector solidarity. ये जो एक संगठन की शक्ति है, ये जो एक एकता की शक्ति है, वो भी 5 दिन में बढ़ाने की कोशिश करिए। सिर्फ ये नहीं कि ये लॉ समझ लिया, वो लॉ समझ लिया, ये बहुत जरूरी है। Civil society today needs most of all unity, most of all solidarity, otherwise we will be wiped out. And for me, this meeting is also for that. So, एक शुरू करेंगे एक नारे के साथ, जो सॉलिडेरिटी का नारा है। आपको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा पहले। आपको बोलना है will never be defeated। क्या बोलना है? will never be defeated। कॉलेज ने बोला कि यहाँ एक्टिविस्ट भी हैं और लॉयर्स भी। अब हमने एक्टिविस्ट को थोड़ा सा लॉयर बना देना है और लॉयर को थोड़ा एक्टिविस्ट बना देना है, थोड़ा मिक्सचर करना है। हाँ, ये अलग-अलग कैटेगरी को थोड़ा मिक्सचर करके ट्रांस बना देंगे, सबको ट्रांस। क्या ख्याल है? सबको ट्रांस बना दो। आपको बोलना है will never be defeated. The women united. The women united. The activists united. The Dalits united. The LGBTIQ divided but united. Will never be defeated. Civil society united. हिंदी में है संगठित महिलाएं न हारी हैं न हारेंगी। क्या है? न हारी हैं न हारेंगी। संगठित महिलाएं न हारी हैं न हारेंगी। संगठित सिविल सोसाइटी न हारी हैं न हारेंगी। संगठित दलित न हारी हैं न हारेंगी। संगठित ट्रांसजेंडर्स न हारी हैं न हारेंगी। कभी नहीं हारेंगे अगर संगठित हैं। तो मेरे ख्याल से इसको ट्रेनिंग के साथ साथ एक नेटवर्किंग, एक सॉलिडारिटी, एक यूनिटी अगर बचना है तो, अगर आगे चलना है। दोस्तों, दिस ट्रेनिंग इज अबाउट लॉज, बट नो लॉ, एंड द ऑर्गेनाइजर्स नो दैट आई डोंट नो एनी लॉ। सो व्हाट डज दिस मीन? I think it means they don't want me to talk about law. So I will not talk about law. I will talk about other issues which should inform the work we do as lawyers, which should inform the work we do as activists. Legal solutions और law बहुत जरूरी है। इसके बगैर कोई देश आगे नहीं बढ़ सका। मगर एक बात ध्यान में रखिए कि लॉ हमारी जिंदगी में कब आता है? जब कोई घटना हो चुकी है तब लॉ आता है। When a crime is done,
when injustice is done, when violence is done, and when discrimination is done, then law comes. After it is done. Very important. But it comes after. My problem is not with after. My problem is, why does it happen? Why does it happen? अपराध हो गया, इंसल्ट हो गई, जिंदगी चली गई, 50 मिलियन लड़कियों का अबॉर्शन करा के उनको निकाल दिया, ट्रांसजेंडर्स के साथ रेप्स हो गए, उसके बाद वकील साहब भागवाने आ रहे हैं कुछ करने को। बहुत जरूरी है, क्योंकि तब लोग सुधरेंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसके पहले भी हमें कुछ करने की जरूरत है। प्रिवेंशन की मुझे लगता है बहुत जरूरत है। और प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ये समझना पड़ेगा कि ये वायलेंस क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। I think often most other violence is between two different communities, two nationalities, two religions, two castes, two this, two that, two families. But violence against women is within the family, most of it. So the question I ask is, what kind of families do we live in? What kind of families do you and I live in? We can all talk about our families. All of us have seen this within our families. So the discrimination we are talking about here is mostly within the family or family circle. तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा। और कहने को तो हम कहते हैं कि एशियन फैमिलीज, एशियन वैल्यूज। मुझे एशिया का तो नहीं पता, पर इंडिया का पता है। जिस देश ने 60 मिलियन औरतों को और बच्चियों को मार डाला, 60 million. Hitler killed 6 million Jews. We Indians, we bloody Aryans, we have killed 60 million. Can you imagine the figure? And in the last 100 years, we have killed more and more. Even after independence, since 1947, the sex ratio has constantly gone down. And we were told, when the British will go out, when education will come, when development will come, men and women will live happily. अच्छे दिन कहाँ है अच्छे दिन? ना तो ये 4 साल वाले अच्छे दिन कहीं हैं, और ना वो अच्छे दिन जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें प्रॉमिस किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। So what is this? Sometimes जब मैं लॉयर्स की ज़्यादा बातें सुनती हूँ, मुझे एक कहानी याद आती है। तो वो कहानी वही है कि ज़्यादा लॉ बनाओ। एक फैक्ट्री बनी, a new factory came up, and immediately after 2 weeks, 3 weeks, they found out that every day some workers lose their hands or their legs. There's some problem with the factory, with the way the machines are. Every day किसी न किसी को चोट लगती है, किसी न किसी का हाथ कटता है, किसी न किसी का पैर कटता है। तो मीटिंग बुलाई गई जिसमें HR मैनेजर आए, सोशल वर्कर आए, डॉक्टर आए, सबकी मीटिंग आई। एंड सब ने कहा कि हाँ ये बहुत गड़बड़ है, क्या करना चाहिए? एक अस्पताल बनाना चाहिए। अस्पताल बनेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, सोशल वर्कर्स हमारे जैसों को नौकरियां मिलेंगी। किसी ने नहीं कहा कि फैक्ट्री को रिडिजाइन करना चाहिए,
मशीनों को बदलना चाहिए। तो मुझे भी यही लगता है कि लॉज के साथ साथ जरा देखें तो सही कि ये कौन सी मशीन है जो 60 मिलियन बच्चियों को मार देती है, जो हर कुछ मिनट में एक डाउनी डेथ करा देती है। ये कौन सी मशीन है इस देश में जो हर 20 मिनट में एक लड़की का बलात्कार करा देती है, एक औरत का बलात्कार, ट्रांसजेंडर का बलात्कार? ये मशीन क्या है? उस मशीन को पहचानने के लिए पहले और उस मशीन के डिजाइन को बदलने की जरूरत है दोस्तों, ये मुझे लगता है। अस्पताल बनाने से, लॉ बनाने से ये सोल्यूशन है, मगर क्या यही सोल्यूशन है? तो थोड़ा सा पहचान लें कि ये वायलेंस क्यों हो रही है। सबसे बड़ा कारण है पेट्रियार्की, पितृसत्ता, पितरशाही, लव ऑफ पावर, हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी है ये। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी वजह से the Constitution declared almost 70 years ago, men and women are equal, rich and poor are equal, Dalits and Brahmins are equal. Where is that equality? We have made the finest laws in this country and stringent punishments. Is rape going down? I think it is becoming more violent, more brutal. At least I don't remember hearing in my childhood or even in my youth these kinds of rapes. So what is happening, Dosto? So we have to understand this. Why is this? A German feminist said some 40 years ago that women are the last colony. Women are the last colony. What is a colony? A colony is some place or somebody whose key resources, human resources, intellectual resources, physical resources, are exploited by someone else. So she said all other colonies have been at least formally liberated. We women have not been formally liberated despite our constitutions all over the world. We are the last colony. Our sexuality, our reproductive power, our productive power, they are all exploited by other people. Families, husbands, society, capitalism. In 1995, UN tried to find out that if you give minimum wages to the work women do at home all over the world, minimum wages for women's care work, what will be the value? पता है क्या जवाब आया? $11 trillion annually. This is the work women do all over the world. And what does society say? No, my wife, sir, she's just a housewife. Just a housewife. She doesn't do anything. $11 trillion is her contribution globally. Patriarchy cannot give up this free labor, $11 trillion. Why can't you remove the caste system? Because the Dalits are also among the last colonies who have not been liberated. Hindu society cannot live without their labor. We cannot live without the labor of women. So we need to discriminate. We need to do violence. दोस्तों, पेट्रियार्की के अंदर वायलेंस जरूरी है,
पेट्रियार्की बिना वायलेंस के चल ही नहीं सकती। कास्ट सिस्टम बिना वायलेंस के चल ही नहीं सकता। रेस सिस्टम बिना वायलेंस के नहीं चल सकता। तो वायलेंस तब तक नहीं जाएगी जब तक पेट्रियार्की नहीं जाएगी। तो पेट्रियार्की हटाने के लिए क्या करना है? अब आप देखिए हमारा कॉलोनाइजेशन। A woman before marriage belongs to her father. After the constitution, I thought कन्यादान would be illegal. 18 साल से बड़ी लड़की का कन्यादान उसका बाप भी नहीं कर सकता। वो कोई चीज है क्या? Is she a thing that he can pick her up and give it to the new owner? Now look at the colonization. Before marriage, father colonizer है, उसको उठा के कन्यादान कर देता है, नए मालिक को दे देता है। नए मालिक को क्या कहते हैं हिंदी में? पति, उड़िया में शामी, बांग्ला में शामी, उर्दू में मजाजी खुदा, शौहर, खामिन, or in English husband. Even this word does not connote equality. The word husband, look up a good dictionary. It's the same word as animal husbandry. Husband is somebody who domesticates you. एक आजाद चीज को, एक आजाद इंसान को जो डोमेस्टिकेट कर दे, फालतू बना दे, जो करो और पीछे पीछे आ जाए। ये करता है आजकल हमारे साथ, और हम पीछे पीछे पूछ लगाते हैं, चलते रहते हैं। कोई और हमारी भाषा में कोई और शब्द नहीं है जो कहे कि ये रिश्ता बराबर का है। अगर मेरा खामिन मालिक है तो वो क्यों नहीं रेप करेगा? ये क्या बकवास है मैरिटल रेप? वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर में मैरिटल रेप हो ही नहीं सकता। अरे मालिक है वो, गुस्सा आएगा तो मारेगा, गुस्सा आएगा तो रेप करेगा। मालिक है, आप उसको कहते हो मालिक है। How many people in this room don't choose the word pati? In Odia don't choose the word swami and shami. You tell me. How many of us who got married did not get married with Kanyadan business? So I am sorry, you can't do law and PIS outside and do this nonsense at home. तो पहले मुझे बताओ कॉलेज गंदा किसकी क्या कन्यादान क्या अगेंस्ट कोई PIS करके जाओगे 5 दिन के बाद एक पति शब्द के खिलाफ क्या PIS होगा कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दीजिए या पति शब्द आपकी जबान से निकाल दीजिए। पति का मतलब मालिक है। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहता है कि कमला नसीम तुम्हारा कोई मालिक नहीं हो सकता। तुम हिंदुस्तान की आजाद नागरिक हो, तुम्हारा कोई कन्यादान नहीं कर सकता। These are the things we need to work on. Without working on these, there is no way. अरे आपकी भाषा में डिस्क्रिमिनेशन है, आपकी कन्यादान में डिस्क्रिमिनेशन है, आपके हर त्योहार में डिस्क्रिमिनेशन है, आपकी हर कल्चर में डिस्क्रिमिनेशन है। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर काम करने की जरूरत है। तो आप तो बात करते हो लॉज की जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, पर घर में तो वो चलते नहीं। घर में तो मनु महाराज का लॉ चलता है। आप तो बात करते हो बाबा साहब अम्बेडकर की, पर घर में तो बाबा साहब को एंट्री नहीं है। एंट्री मिस्टर मनु बैठे हुए। तो जब तक मनु जी को अपने घरों से बाहर नहीं निकालोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। एंड अनफॉर्चुनेटली मनु जी आपके और मेरे अंदर बैठे हैं। तो ये जो हमेशा है ना, सरकार को बदलना है, सरकार को बदलना है, कानून को बदलना है, मेरा तो मानना है कि वी द पीपल को बदलना है। वी द पीपल को बदलना है। हमारे देश में हमारा
हमसे सेंचुरीज आगे है। हमारे घरों में खाप पंचायतें चलती हैं, हमारा लॉ नहीं चलता। तो दोस्तों, जैसा कॉलिन ने कहा, बिना एक्टिविस्ट और लॉयर्स की पार्टनरशिप के ना हम आगे जा सकते हैं और लॉ आगे जा सकता है। लॉ को जिंदगी का हिस्सा बनाना है। कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब के अंदर नहीं रहना है, वो मेरी जिंदगी में आना है। अगर मेरी जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन आना है तो कन्यादान नहीं चलेगा, पति शब्द नहीं चलेगा। We need to work on our language. We need to work on our jokes. We need to work on the songs we sing and dance on. We need to work on every tradition in every religion. And I think that's where things need to work. Menstrual taboos. अब PIL करिए ना एक menstrual taboo के खिलाफ। मेरे घर में वो कहते हैं कि जब तुमको menstruation होता है तुम अपवित्र हो, you are impure, you are dirty, you are dangerous. If you touch a plant, the plant will die. If you touch a pickle, the pickle will deform. If you touch a man, वो मर जाएगा बेचारा। अगर मेरा menstrual खून इतना नापाक है तो दोस्तों एक इंसान ले आओ, कहीं से ले आओ, जो मेरे खून के बिना बन गया हो। Get me one human being who has been created without our menstrual blood. If our menstrual blood is dirty, then all the 7.5 billion men and women in this world are dirty. This kind of nonsense going on all around us. Temples not giving us entry, masjids not giving us entry, and we are talking of ritual solutions here and there. So what can we do against these taboos? Can we do a PIM after 5 days? Can you tell me? I will tell you what. This kind of nonsense going on in your family and my family. So friends, कन्यादान मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को औरतों से, लड़कियों से बहुत प्यार है। They run a कन्यादान योजना, and to be fair to Muslims, they also run a nikah योजना. These are government policies in Madhya Pradesh. Nikah योजना and कन्यादान योजना. There is no shiksha dan for girls. There is no sampatti dan for girls. There is kanyadan of girls. Government, democratically elected twice already, hoping for the third victory or the fourth victory. What are we talking about? Laws. So, कन्यादान करो, ओम स्वाहा, और चलते जाओ आगे। So friends, we the people need to change, and I think we need many more campaigns. That's why my emphasis on solidarity and unity. PCMAT law pass कर दिया, उसके बाद sex ratio better हुआ कि घटा? इतना जबरदस्त stringent rape law पास कर दिया, घटा ये बढ़ा। So it is quite clear to me that laws alone can't do it. What can do it? Campaigns, changing the mindset of people, changing we the people of India, हम भारत के लोग, और तब जाके दुनिया बदलेगी। तो मैंने बहुत साल पहले कहा था कि हमें नए लॉज चाहिए, नए बिल चाहिए, मगर उससे ज्यादा चाहिए नए दिल। बिल से कुछ नहीं होगा, दिल से होगा। तो दिमाग और दिल बदलने की कोशिश की जाए,
और तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये क्यों बढ़ रहा है? ये वायरस क्यों बढ़ रही है? मैस्कुलिनिटी क्यों उभार पर है? मैं 3 चीजों पे जोर दूंगी। First is something new in my life. I'm 72 years old and I have seen this growing. I call it capitalist patriarchy. पूंजीवादी पितृसत्ता। नंबर 2, राइट विंग पॉलिटिक्स। ये जो ट्रम्प जंप कर रहा है अमेरिका में, जंप ट्रम्प, ये ट्रम्पिश पीपल, राइट विंग पॉलिटिक्स, जहां बेशर्मी is allowed. Trump can say anything he likes and we have Trumps in this country also. ये अलग अलग क्षेत्र में आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हुए आते हैं ट्रम्प्स। और तीसरा है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, कैपिटलिस्ट पेट्रियार्की, राइट विंग पॉलिटिक्स, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। ये 3 भाई हैं, तीनों इकट्ठे चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। इनको डील किए बिना डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस ना तो औरतों के खिलाफ जाएगा, ना कास्ट के खिलाफ जाएगा, ना रेस के खिलाफ जाएगा, ना LGBTIQ के खिलाफ जाएगा। ये तीनों भाई, capitalist patriarchy, right-wing politics, religious fundamentalist politics. उसमें religion नहीं है, उसमें politics है। Let me speak for a few minutes about capitalist patriarchy. इसका क्या मतलब है? Pornography दोस्तों $1 billion इंडस्ट्री है, जो आज मोबाइल फोन में है। आज कहते हैं कि 60 to 70% boys under 15 are looking at pornography. Child pornography is $1 billion industry, and pornography is against use of women as bodies, and men are the main actors. Number 3, cosmetic industry. $1 billion इंडस्ट्री है जो औरत को कहती है कि तू सिर्फ एक जिस्म है, अगर तू गोरी नहीं है तो तू बेकार है। साउथ एशिया की औरतें गोरी क्यों होगी भाई? यहाँ तो सूरज उगता है, हमारा तो रंग ही काला और ब्राउन है। वो गोरे लोग जो आते हैं धूप में बैठने के लिए, गोवा के बीचेस में बैठने के लिए, ताकि मेरा वाला रंग लेके जाए, और मेरे को कहते हैं कि तू लगा फेयर एंड लवली, और फेयर एंड लवली से पैसा पूरा नहीं बना तो मर्दों के पीछे पड़ गए, फेयर एंड हैंडसम। और कौन लोग ये बदतमीजी फैला है? करोड़पति शाहरुख खान। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, कितना पैसा लगाओगे तुम लोग? रेसिज्म है ये, फेयर एंड लवली इज रेसिस्ट, and this man Shahrukh Khan has no shame. If a poor man does it, I don't accept it. वो बेचारा भूखा है, उसको ये बकवास करनी है, मगर शाहरुख खान को बकवास करनी है, रेसिज्म करना चाहिए। So cosmetic industry making us all women unhappy and telling us you are just a body. So patriarchy के क्या चाहना है? पहले औरत को एक जिस्म बनाओ, just make her into a body. She's not a human being, she's a body. Once she is a body, you can pinch her, you can go for her breasts, you can go for her boobs, you can rape her, you can put acid on her, because वो इंसान तो है नहीं ना। पहले दलित को इंसानियत से नीचे लाना पड़ेगा, वो दलित इंसान नहीं है, आदिवासी इंसान नहीं है, औरत इंसान नहीं है, और अब माइनॉरिटीज इंसान नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमान इंसान नहीं है, पहले उनको एक चीज बनाओ, and that's what cosmetic industry does to us, turns us into bodies
which are not human. Number 4, capitalist patriarchy में toys, guns for boys. 2 साल के लड़के को बंदूक पकड़ा देते हैं। अमेरिका में हर हफ्ते एक लड़का या मर्द बंदूक उठा के 8, 10, 15 को मारता है। Every week बंदूकें दे दे, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, फलाना मैन, ढिकाना मैन, machismo, macho, hegemonic masculinity, dirty, filthy, violent masculinity on the one hand, and Barbie bloody doll on the other hand. Barbie doll in salwar kameez, Barbie doll in Gujarati clothes, Barbie doll in sarees. Barbie doll is the worst form of sexualized, objectified, colonized woman. इतना बड़ा ब्रेस्ट, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा बाजारों में बिकता है, आप लोग में खरीदते हैं, हमारे घरों में आता है। स्पोर्ट्स, एक वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन आता है, देखा किसी ने? अब उसमें औरतें भी ले आए। वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन अगर लड़का कोई 1 साल तक देख ले, वो वायलेंस से बच नहीं सकता। आज जो स्पोर्ट्स की और बॉलीवुड की और सेक्स की मैरिज हो रही है, आईपीएल में 8 साल पहले वो आधी नंगी वाइट औरतों को ले आए चीयर में बैठ। Men today apparently can't even watch cricket without these half-naked women jumping up and down on every chokka and chikka. What is happening? If we are being sold at every corner in every cricket match, then you are talking of violence, हटाओ, discrimination हटाओ, अरे ये फैक्ट्री तो हटाओ, जो फैक्ट्री ये बनाती चली जा रही है, और हम चुप बैठे हैं। आईपीएल की टीमों के नाम क्या है? Delhi Daredevils. Men, you are not even ashamed of having such names. Daredevils. Is it a sport or is it killing? Coaching Tuskers. Team का नाम है Coaching Tuskers. They can't think of anything more decent. And the 5th biggest capitalist patriarchal thing is Hollywood and Bollywood films. Every now and then you will have one good film, and we are grateful for that. A film like Dangal or some such film. But 90% of them are all the same. What are they doing? Londhiya पटाएंगे, missed calls. हमारे हिंदुस्तान के लड़के लड़कियों से दोस्ती नहीं करेंगे। पहली बात उसको लौंडिया समझेंगे। लौंडी का मतलब सेक्स वर्कर। लौंडिया पटाएंगे, दोस्ती नहीं करेंगे, पटाएंगे। और मैं, व्हाट इज द वुमन से, मैं तंदूरी मुर्गी हूं, मुझे विस्की से गटका नहीं। दिस फिल्म गॉट 100 crore business. Whom do I blame? The producer, the director, the actor, or we, the people of India, who gave it 100 crore business? लौंडिया पटाएंगे लिस्ट कॉल से, फिर आप कहते हो कि साहब डिस्क्रिमिनेशन मत करो औरतों के खिलाफ। And what is the power? How many of us are sitting here? 130. How many million listen to these songs? Every Punjabi wedding we dance on these songs. लौंडिया पटाएंगे लिस्ट कॉल से, मैं तंदूरी मुर्गी हूं, मुझे विस्की से गटका ले। तो दोस्तों, this is what is happening around us. And this is the patriarchal, capitalist, neoliberal factory, along with right-wing politics, which is giving full freedom to corporate world and all-sided religious fundamentalists. They are all twin brothers. The right-wing Muslims, the right-wing fundamentalists of all kinds. मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रात को बैठ के प्लानिंग करते हैं कि कल तुम हिंदुओं के
things which give me hope are things finally पिछले 20-25 साल से we have started thinking of कि पेट्रियार्की मर्दों का कितना नुकसान कर रही है। क्या पेट्रियार्की सिर्फ औरतों का नुकसान कर रही है? पेट्रियार्की जितना बड़ा नुकसान मर्दों का कर रही है। मर्द को इंसान नहीं बचे। एक मर्द जो अपनी बीवी पर हाथ उठा सकता है वो इंसान तो नहीं। और कितने मर्द बीवियों पर हाथ उठाते हैं इंडिया में? हिंदुस्तानी सरकार कहती है 40%, ICRW कहता है 60%। तो 60% मर्द जो अपनी विवाहिता पत्नी पर हाथ उठाते हैं, वो मर्द जो 6 महीने की बच्ची का बलात्कार करता है, वो मर्द जो अनजान लड़की को मेट्रो में हाथ लगा के खुश हो जाता है, उसकी ब्रेस्ट छू के खुश हो जाता है। All these men need to go to doctors. They are mentally ill people. तो कितने mentally ill हैं यार? 60% of them. दोस्तों, 100% terrorists, 99% terrorists are men. 99% suicide bombers are men. 100% rapists are men. 90% criminals are men. जितनी आप रोज टेलीविजन में देखो, कहीं आग लग रही है, कहीं लोगों को मार रहे हैं, कहीं लिंचिंग हो रही है, कौन कर रहा है? मर्द कर रहे हैं। क्या मर्द ऐसे पैदा हुए थे? नहीं, कोई मर्द वायलेंट पैदा नहीं होगा, ये बायोलॉजिकल नहीं। तो कैसे बन गए इतने सारे मर्द? हमने बनाए, आपने और मैंने घर के अंदर उन्हें धीरे धीरे बनाया, उन्हें बदतमीज बनाया, कहीं भी लड़के को खड़ा कर दिया पेशाब करने। You know the biggest contribution of Indian men to India is they have made the whole of India into a bloody urinal. कहीं भी खड़े हो जाते हैं, मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है इनके अंदर। मोदी जी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, स्वच्छ भारत बन ही नहीं सकता जब तक इनकी लीकेज खत्म नहीं होगी। ये तो लीक ही करते रहते हैं, जब देखो वहां लीक कर रहे हैं। So दोस्तों, the biggest thing which has happened in the last 20 years that all over the world men have started working on masculinity. 2014 we had a global conference in Delhi of men engage. 1100 लोग आए थे 90 देशों से, where they are working with men and boys on patriarchy. In India, we have organizations like MAVA, Men Against Violence Against Women, MASVA, Samyak in Pune, Azad Foundation all over India. These are organizations and many, many more working with men and boys against patriarchy. In 12 states of India, a campaign is going on called Ek Saath, working with boys and men. तो दोस्तों, अगर पेट्रियार्की औरतों के खिलाफ है, मर्दों के खिलाफ है, LGBTIQ के खिलाफ है, we need to join hands to demolish patriarchy. For decades, we have been doing 16 days of activism. Since 2013, we started doing 1 billion rising. A global campaign in 207 countries. I coordinate South Asia, 1 billion rising. 1 billion rising is also saying no to violence. So 1 billion rising का एक स्लोगन होगा, करेंगे थोड़ा सीधे बैठ जाओ, सीधे। आप लोग तो झटक के ऐसे ऐसे हो गए, सीधे ऐसे नहीं होगा। 5 दिन में कुछ नहीं बदलेगा, आधा लेट गए। आपने बोलना है और थोड़ा गा के
बोलना है, थोड़ा मूव करके बोलना है। हम सारे बोले, क्या बोलना है? हम सारे बोले। हमारा के थोड़ा सा हिल के बोले रे बोले, बोले रे बोले। अब कहना है हम सारे बोले, हम सारे बोले। अरे बोले रे बोले, हम सारे बोले। आज बोले रे बोले, हम सारे बोले। OPR के लिए हम सारे बोले। सुखी परिवार के लिए हम सारे बोले। सुखी संसार के लिए हम सारे बोले। और प्यार के लिए हम सारे बोले। आज बोले रे बोले, हम सारे बोले। हिंसा के लिए हम सारे बोले। इंसाफ के लिए हम सारे बोले। समानता के लिए हम सारे बोले। आज बोले रे बोले, हम सारे बोले। बोलना पड़ेगा दोस्तों। इसके साथ साथ एक चीज मैं और लॉयर्स को बोलना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी राइट्स पर बहुत काम करने की जरूरत है। हमने एक और कैंपेन शुरू किया है, प्रॉपर्टी फॉर हर, और उसमें हमने जानबूझ के कहा कि हम सिर्फ लॉ की बात नहीं करेंगे। लॉ तो बहुत बन गए, हम दिल की बात करेंगे। तो इसका मेन स्लोगन है, बेटी दिल में, बेटी विल में। बोलेंगे बेटी विल में, बेटी दिल में, बेटी विल में, बेटी दिल में, बेटी विल में। विल में बेटी को डालना है भाई को, बहनों, लॉ की वेट नहीं करनी। ना दहेज ना महंगी शादी, बेटी को देंगे संपत्ति आधी। ना दहेज ना महंगी शादी, बेटी को देंगे संपत्ति आधी। तो दोस्तों, अंत में मैं 5 बातें कहूंगी क्योंकि मेरा टाइम हो रहा है। और सबसे जरूरी बात जो आज सुबह कॉलेज में गई और 3 बार गई, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, टाइम। और मैं ऑर्गेनाइजर्स को कहना चाहता हूँ कि स्पीकर्स के लिए पानी जरूर रख देना अगली बार। दोस्तों, my first final point is that the feminist slogan "personal is the political" has become more important today. Personal is the political, निजी ही राजनीतिक है। We have to begin with ourselves. चेंज अपने घरों से आएगा, अपने अंदर से आएगा, अपनी संस्था में आएगा। डेमोक्रेसी की बात संस्था से शुरू करो, जेंडर इक्वालिटी की बात संस्था से शुरू करो, इंक्लूजन की बात संस्था से शुरू करो। कितने मुसलमान हैं आपकी टीम में, कितने दलित हैं आपकी टीम में, कितने LGBTIQ हैं आपकी टीम में। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। पर्सनल इज द पॉलिटिकल। सेकेंडली, बड़ी चीज नहीं करनी, दुनिया नहीं बदलनी, खुद को बदल लो, दुनिया अपने आप बदल जाए। We can't change big things, but if small people change themselves, this will be a huge change. Every NGO should be a model of democracy. Unfortunately, they have become models of authoritarianism. They have become models of sexual violence. In India, the Me Too team had been many of my NGO leader friends whose names were in that list of Me Too. People I know, people I have worked with for so many years. So begin with ourselves. We need to change. We, the people of India, need to change. And then the country will change. Second, just as this training is trying to do, our work has to be intersectional, interconnected. सिर्फ पेट्रियार्की को हटा नहीं सकते जब तक कास्ट को नहीं हटाएंगे, हेटेरोनॉर्मेटिविटी को नहीं हटाएंगे, क्लास को हटाने की बात नहीं करेंगे, रेस के खिलाफ बात नहीं करेंगे। तो इंटरसेक्शनल, इंटरकनेक्टेड काम करना पड़ेगा दोस्तों। मुझे लगता है कि ये कुछ भी नहीं हटेगा जब तक हम नियोलिबरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी बात नहीं करेंगे। I really feel this economic paradigm is
what is happening in Delhi this week is created by us, and it is created by this greed-based neoliberal paradigm. And you and I are part of the problem in this neoliberal paradigm. We are not part of the solution. Our lifestyles, NGOs, गरीबों के लिए शुरू हुए. आज कोई NGO है बिना AC के काम करता है, तो हम बात क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है दोबारा से एक कल्चरल रेवोल्यूशन की जरूरत है. लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा. अब यहाँ देखिए इतना सुंदर मौसम है, पर न जाने कितने AC चल रहे हैं. ये तो जीसस साहब की दुनिया है, यहाँ भी वही हो गया, तो हमारी दुनिया में तो ये हो ही गया है. जब तक हमारी अपनी कल्चरल लाइफस्टाइल नहीं बदलेगी, तब तक नारेबाजी है दोस्तों, और नारेबाजी से दुनिया नहीं बदलती. सारा पैसा तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को दे देंगे. 15 फर्स्ट क्लास AC लगे हुए हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को पैसा दिलाओ, फिर यहाँ आके नारे लगाओ. We have to put our money where our words are. तो दोस्तों, इंटरसेक्शनल पर्सपेक्टिव के लिए ये सॉलिडारिटी, ये यूनिटी जो HRLN बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत जरूरी है. मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया में जो हिंसा है वो क्यों है? क्योंकि हम सब सत्ता को प्यार करते हैं. We love power. We have to reverse it. Love of power को हटा कर power of love की बात करते हैं. हम लोगों ने love के 4 letter word love को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया. We have to bring it back. I think violence को हटाने का एक तरीका है, वो है प्यार. उसके अलावा कुछ नहीं है, वो लाना पड़ेगा. तो दोस्तों, ये सब करना है. सबसे ज्यादा सॉलिडारिटी, यूनिटी खुद से शुरू करना है, और पितृ सत्ता को मिलकर हटाना है. तभी काम बनेगा. और मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों पर भी अगले 5 दिन में बात करेंगे. अंत में एक नारा लगाएंगे फिर से, क्योंकि मैं तो नारेबाज हूँ, नारे लिखती हूँ, नारे लगाती हूँ, गाने लिखती हूँ, गाने गाती हूँ. ये नारा बहुत मशहूर भी हुआ, बहुत बदनाम भी हुआ. ये आज़ादी का नारा है, जो मैंने 1983 में पाकिस्तानी फेमिनिस्ट से सीखा था, और फिर मैंने लगाना शुरू किया. उर्दू में लगाती थी, हिंदी में लगाती थी. बेजिंग कॉन्फ्रेंस में गई तो इंग्लिश में लगाना पड़ा. आपके साथ भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगाऊंगी. आपने क्या बोलना है? आजादी. ठीक है नहीं? और जरा सीधा होकर बोलना है. हाँ, मेरी बहनें लेंगी आजादी, मेरी बेटी लेगी आजादी, मेरा बेटा लेगा आजादी. मजदूर का नारा आजादी, किसान का नारा आजादी, दलितों का नारा आजादी, आदिवासी का नारा आजादी, LGBTQ का नारा आजादी, नारी का नारा आजादी. हम लेके के रहेंगे आजादी. है प्यारा नारा आजादी, हम सबका नारा आजादी. हिस्सा से लेंगे आजादी, बलात्कार से लेंगे आजादी, अत्याचार से लेंगे आजादी, भ्रष्टाचार से लेंगे आजादी. From endless violence आजादी, from helpless silence आजादी, from patriarchy आजादी, from all hierarchy आजादी, from media vultures आजादी, from monoculture आजादी. We love it madly आजादी. Come say it loudly आजादी. For laughing loudly आजादी. For singing madly आजादी. For dancing madly आजादी. For self-expression आजादी. For celebration आजादी. Come say it loudly आजादी. We love it madly आजादी. And not have human rights practices, right? And we are planning to set up a big training center which will work
not only in India but also other countries on human rights and law. She said something very important. She said you can't have air-conditioned rooms and so on. And maybe I should add, you can't have water bottles circulating like this. We have made this mistake many times. But this conference will be the last conference, hopefully, when we will make this mistake. Now we have to live and do our conferences authentically. And we have to live our lives as close to being authentic as possible. The next conference will be in Jindal again. It will be air-conditioned, I can guarantee you that. Again, we will have plastic bottles. But after that, and very soon, you must take, all of us must take a decision to get out of this thing as much as we can. It was a very important lesson. It was a sisterly, very kind, criticism of the way we are doing it, but we must take it very seriously. And let's try by the second or third meeting to get out of this plastic bottles, air-conditioned venue, these things that affect climate change so much, we must try and get out of it. Just a little bit of self-reflection that for the future of our world. Thank you. Thank you, Babaji. That was wonderful, and we're grateful for the time and effort you took to share your thoughts and enthusiasm. And I think it's infectious, and I'm hoping that next 4 or 5 days we keep up the tempo and maintain the tempo. With this, I open the house. Would anybody have any questions to ask Babaji? If you do, otherwise we could break for a short tea break, and you could take the questions out there. I just have a comment that we talk a lot about changing existing structures without realizing that those structures, be it marriage or be it the words we use, are rooted in a lot more things other than these evil institutions, right? So a lot of work is now starting, a lot of people are now starting to do work on reclaiming what we look at as oppressive, reclaiming the meaning of words, reclaiming the meaning of relationships, rather than having to take the absolutely radical stance of sort of like, letting go of any semblance of that history. So what would be your thoughts on that? What's your name? My name is Shivam. Shivam. If there is any other thing, otherwise. मेरा सवाल है आपसे कि हम बहुत सारा कैपिटलाइजेशन के बारे में आपने जो बात की और नेचुरल जस्टिस और नेचर के करीब जितना इंसान था और नेचर से जितना दूर हट रहा है उतना ही जस्टिस और हिंसा की ओर बढ़ रहा है। तो नेचुरल जस्टिस और नेचर के हिसाब से जेंडर का हिंसा जो होता है, ये दोनों का क्या रिश्ता है? मेरे तो नाम बताइए मैंने छोड़ दिया। हाँ? मैंने छोड़ दिया। हो गया। कुछ ना आवाज में कुछ गड़बड़ है ना? नहीं क्लियर है। जोर से बोलो। आपको ऐसे नहीं। No, I'm talking about how Kanyalam practices like that actually in a way denormalizes the situation. But then with the current scenario where people don't understand that the reasons behind certain thing and they don't have the ideological belief in such practices but follow it because of the cultural belief, how is there even awareness around such cases where they don't understand why they're doing it, but there is a cultural belief
is what your identity is. Okay, I'll take these, and then I went down because the timetable said I will 10 o'clock there will be another session, so I rushed back to my. Please carry on. Shiva, whether you reclaim, you question, you redefine, that's what I'm asking for. Don't live life unconsciously. हम बेहोश जिंदगी जीते हैं। किसी ने कह दिया पति शब्द यूज करो तो पति शब्द यूज करो, बेहोश। मैं कह रही हूँ बाहोश जियो। Whether you reclaim, you redefine, you reuse, दिमाग को लगाओ यारो। I mean, how can a young man like Shivam get married to a woman and he's called Pati? And if you say Pati, Pati, Pati 10 times a day, even a nice decent man will become a bloody Pati. तो हिटलर ने किसी दोस्त ने नहीं बोला था कि 10 बार झूठ बोलो, 11वीं बार झूठ सच होता है. So it goes into my subconscious. And if you are a Pati, who am I? आप मालिक हैं तो मैं दास हूँ. And it's not just the words. This is the package. After marriage, हिंदू लड़की अपने पति परमेश्वर के पैर को हाथ लगाती है. She's an MBA. और वो चक्कर लगा के साथ और उसके ध्यान करके पैर को हाथ लगाती है. फिर वो उसके सिर में सिंदूर भरता है. वो उसके सिर में कोई सिंदूर नहीं भरती. उसका पता ही नहीं लगता कि ज्यादा शादीशुदा है कि कितनी है. हमारा पता लगना चाहिए 5 किलोमीटर दूर से. All I'm saying is live your values, whether you reclaim, etc., etc. और रजनी जितना नेचर से दूर होगे उतना गड़बड़ होगी. और ये जो कैपिटलिज्म है ये पूरा नेचर को काबू करने का तरीका है. इन्होंने पहले नेचर को नाम दिया नेचुरल रिसोर्स. वो जो माँ है हमारी नेचर उसको बोला रिसोर्स. फॉर व्हाट? फॉर प्रॉफिट. उसके बाद इंसानों को बोला ह्यूमन रिसोर्स. आप और मैं इंसान नहीं है अभी, हम ह्यूमन रिसोर्स है. अभी एनजीओज भी अपने स्टाफ को बोलते हैं एचआर मैनेजर आ गए एनजीओज के अंदर भी. हम भी रिसोर्स है. ऐसा बनाओ, रिसोर्स को लगाओ. कैपिटलिस्ट लैंग्वेज. अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना एक और नया बदतमीज शब्द. क्या? सोशल कैपिटल. मतलब कमला वसीम की बहुत दोस्ती है तो बोलेंगे कमला की सोशल कैपिटल बहुत है. मतलब दोस्ती नहीं है, ये सब सोशल कैपिटल है. अभी रजनी से मुलाकात हो गई सुबह, मेरी सोशल कैपिटल बढ़ गई. Even our language and the language of NGOs is becoming this, and that's what I mean. और रजनी नेचर का और जेंडर का तो कोई रिश्ता ही नहीं है. जेंडर एक नकली चीज बनाई है समाज में कि तुम लड़के हो, तुम्हारा पीनस है, इसलिए तुम नीले कपड़े पहनोगे, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे, तुम ऐसे. मतलब ये नेचर में. अब ये दुपट्टा है, अगर नेचर होता तो मैं पैदा होती ना तो पहले तो मैं आती, उसके बाद अंदर से मेरा दुपट्टा आता. तब तो नेचुरल था. उसके बाद मेरे कान में पहनने भी आते हैं, उसके बाद मेरी माला आती, उसके बाद अंदर से मेरी लिपस्टिक आती. ऐसा कुछ नहीं हुआ. अंदर से सिर्फ मैं आई. और मैं लड़के के जैसे रह सकती हूँ, मैं लड़की के जैसे रह सकती हूँ. ये सारी की सारी बकवास नेचर को दबाने के लिए. नेचर भेद बनाती है. नेचर कितने भेद बनाती है दोस्तों कि पूरी दुनिया में 7.5 बिलियन लोग हैं, 750 करोड़. उनमें 2 भी एक जैसे नहीं है. Not even 2 people in the world are exactly the same. That is the diversity of nature. Nature भेद बनाती है, समाज भेदभाव बनाता है. क्या समझे? भेद is diversity.
ट्रांसजेंडर की बात ही नहीं होती। तुम्हारी मर्जी आए तुम औरत के वैसे रहो, मेरी मर्जी आए तुम मर्द के जैसे रहो, ये सब बनावटी चीजें हैं। इट इज अ परफॉर्मेंस एंड आई थिंक हमें इस चीज के लेके चलना है। कल्चरल बिलीफ्स, some people think that culture is something permanent. ये तो मेरी कल्चर है साहब, मैं यही करूँगा। 500 साल पहले कल्चर दूसरी थी। एयर कंडीशन तो सब अपने घरों में लगा लेंगे, लेकिन बेटी की कल्चर वही रखेंगे जो 5000 साल पुरानी है। मर्द की कल्चर बदल गई। जितने मर्द यहाँ बैठे हैं एक को छोड़ के सारे अंग्रेजी पतलूनों में आए हुए हैं, सारे आगे जिप लगी हुई है, सारे पतलूनों में आए हुए हैं। अपने कपड़ों के लिए उनको कल्चर याद नहीं आती, इनकी बीवी की कल्चर इनको याद आ जाएगी कि तुमने साड़ी पहनी है। तो कल्चर का ठेका हम औरतों को दे रखा है। कल्चर कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कल्चर इंसान बनाते हैं। हम कल्चर बनाते हैं, कल्चर हमें नहीं बनाते। और कल्चर को वक्त के साथ बदलना चाहिए और बदलती रही है और बदलना पड़ेगा। खाप पंचायत ठीक थे जब वो बने थे, आज खाप पंचायत ठीक नहीं है। कन्यादान किसी जमाने में ठीक रहा होगा, आज उसको बदलना पड़ेगा। दलित किसी जमाने में इन्होंने बनाए थे, उनकी कल्चर होगी, हिंदुओं की। आज इस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ये नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो कल्चर अगर मेरे संविधान के खिलाफ है तो कल्चर को बदलना पड़ेगा, संविधान नहीं। थैंक यू। सुबह के सेशन के बाद हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। ये जो सत्र है ये जनरल नसबंदी के ऊपर है और जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है नसबंदी को लेकर, इसके ऊपर है। तो लाइक इन द मॉर्निंग वी वर डिस्कसिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ पेट्रियार्की। Now, apart from the burden of bearing children, like women have to bear within the family. One of the forms of violence is that women have to bear the burden of contraception or family planning in the relationship or marriages. And this form of patriarchy is taken forward not just by science, which basically focuses on various forms of contraception for women, and the government also is a part of this patriarchal structure because the government policies also focus on women and put women at the center of its various contraception and family programs. तो जैसे सुबह हम कह रहे थे कि पितृसत्ता के अलग-अलग ग्रुप होते हैं, उसमें से एक ग्रुप जो परिवार में पितृसत्ता का एक बहुत ठोस ग्रुप होता है, वो है कि परिवार नियोजन में एक जिम्मेदारी होती है, वो महिलाओं के ऊपर होती है। और उसको विज्ञान की तरफ से भी पढ़ाना मिलता है क्योंकि जो पूरी साइंस है परिवार नियोजन को लेकर, कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर, वो महिलाओं की जो फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे फोकस करती है। और and if you look at the main problems in this country, it is that to top all this is that the way the government conducts sterilization for women, and we see women dying in this very simplest medical procedure. We see women dying and services not being provided as per different standards. और हम वो देखते हैं कि हमारे देश में जो बहुत ही सिंपल मेडिकल प्रोसीजर होती है जो नसबंदी की, उसको किस तरीके से बिल्कुल ही स्टैंडर्ड्स के विपरीत सेवाएं दी जाती हैं महिलाओं को। हमने देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से कैंप्स होते हैं और किस तरीके से महिलाओं की डेथ होती है। तो हमारा अगला सेशन जो है इसी पर केंद्रित है। और इस सेशन पे जो हमारे जो मेन स्पीकर हैं वो सरिता जी हैं। मैं सरिता जी के बारे में थोड़ा बताऊँगी। सरिता जी ने वर्किंग विद डेवलपमेंट सेक्टर फॉर द लास्ट 25 years and has wide-ranging experience in the field of sexual reproductive health and rights, HIV/AIDS, public health, development, gender justice, human rights at state and national and international levels. She has worked in the state government of Odisha and government of India in various capacities.
is one of the few development experts who provides a strong macro policy and program. She's passionate about her work and has provided technical support and knowledge to European Union and Government of India. So, with this, I give this now to Socio-Legal. Thank you, Rajni. I think मुझे जो टॉपिक मिली है आज और जिस पे मैं पिछले 10-12 साल से काम कर रही हूँ, वो ऐसी टॉपिक है जो हर बार मतलब स्टेट्स को देखते हैं, वो हर बार नई नई कहानी ऊपर लाकर दिखाती है. We know that the family planning initiative of India has been implemented or is being implemented by the government of India since the past 7 decades. Nothing has changed. जब मैं nothing has changed मैं कह रही हूँ, इसमें you also need to look at the policies, the programs, the guidelines, the ethics that has been established in order to ensure that the first point of contact of medical services for women, which is primary health care, just does not exist. So, this state-rooted discriminatory policy that you see is very much evident in the family planning program. For example, 2013-14 को जितना भी खर्च किए सरकार ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, उसमें से 85% पैसा खर्च हुआ फीमेल स्टेरिलाइजेशन के प्रोग्राम से. उसमें से 0.01 खर्च हुआ contraceptives like condoms and oral pills. इसी से भी पता चलता है how woman-centric our family planning program initiatives are. So there have been several surveys, there have been several reports and research, and even the Common Review Mission reports of the Government of India shows how appalling the conditions are in the primary healthcare sector. And if you look at the places where sterilization is provided to women, female sterilization is being provided to women, you will notice that these are under subhuman and subnormal conditions. And these camps have failed to protect the privacy and confidentiality of women. So I'll start with the first case. And that is the Ramakant Rai versus Union of India, which was filed in the year 2003. This was a public interest litigation which cited practices of female sterilization in the government, by the government, in the states of Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra. One of our partners is out here, Headwatch Board is out here, and they had done a lot of grassroots studies which helped in filing a petition, filing the Ramakant Rai petition. In these states, Uttar Pradesh, Bihar and Maharashtra, we came to see that sterilization camps were indiscriminately established and taken forward, and they lacked counseling of informed consent, they lacked pre- and post-operative care, and were unhygienic and subhuman in terms of providing the services to women. We talk about obstetric violence. These camps were places where abuses and violence by the healthcare provider and the NGO CPOs
services was by the way they were thrown after the operation, they were thrown on the floor, by the way they were pushed out of the cabs to walk or take their own private commute like a cycle or a rickshaw three-wheeler and go back home. No post-operative care was provided to them, and they also were not provided with any incentives. So, Human Rights Law Network submitted a memorandum in support of its petition in the Supreme Court of India, citing coercion and abusive practices resulting from poor quality of care in these government-run sterilization camps. The focus was also on the failure to comply with national guidelines on the performance of sterilization, which established mandatory procedures for obtaining informed consent. उस वक्त भी था कि एक औरत के परमिशन के बगैर हम उसको स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज नहीं दे सकते। फिर भी ये कैंप्स में ये रूल तोड़ा गया और सर्विसेज दिया गया उनको बिना बताए कि ये स्टेरिलाइजेशन सर्विस हम दे रहे हैं। So many of the women did not even know that sterilization services were being provided to them. The objective behind this petition was to make known the injustice being done to the poor and vulnerable who underwent these procedures without a number of essential rights, including informed consent, pre- and post-operative care, hygienic facilities, anesthesia, when appropriate, and freedom from coercion, cruelty, and sterilization of minors. Girls as young as 17 were also provided with sterilization services, especially in the females. Even the basic things that are required in a sterilization operation, watch, bandage, Dettol, ये सारे भी नहीं थे वो स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज में। और एक घंटा में ऑलमोस्ट 85 to 90 ऑपरेशंस वो लोग कर देते थे। एक डॉक्टर, एक लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट और 80 स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन एक के बाद एक कर देते थे डॉक्टर ये कैंप्स। It was further asserted that the current sterilization conditions violated not only the guidelines, but also the patient's reproductive rights, women's rights, and health rights as articulated in international instruments ratified by India, including the Alma Ata Declaration, CEDAW, the ICTD Program of Action, and the Beijing Platform of Action. आमतौर पर हम लोग आल्मा आटा के बारे में बात नहीं करते हैं, but आल्मा आटा ये कहता है कि primary health center should be the first point of contact between a medical officer and a community member. ये 1971 में लिखा गया था और इसकी अहमियत ये है कि सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का दायित्व है कि वो आल्मा आटा डिक्लेरेशन के तहत PHC एस्टैब्लिश करे जिसके द्वारा स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटीज मिले, क्लीन एंड हाइजीन स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटीज मिले और ये क्लीन हाइजीन स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटीज उन औरतों को मिले जो पाना चाहती हैं, स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज जो पाना चाहती हैं, ना कि जिसको जबरदस्ती दिया जाता है। ये केस का सिग्निफिकेंस ये है कि the Supreme Court ordered state governments to take immediate steps to regulate healthcare providers who perform sterilization procedures and to compensate women and families of women who suffer complications or death as a result of unsafe sterilization. The Supreme Court directed the Union government to lay down uniform standards to be
followed by the state government with regard to the health and age of proposed patients, norms for compensation, the formats of statistics, the checklist, consent pro forma, and insurance. ये गाइडलाइन में पहली बार के लिए फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर ये क्लियरली लिखा गया कि यदि एक औरत को फीमेल स्टेरिलाइजेशन का सर्विस दिया जाता है और यदि वो फेलियर है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, यदि डेथ हो तब भी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए, यदि मोर्बिडिटी एंड इन्फेक्शंस हो तब भी compensation. Until such time as the Union of India prescribes guidelines governing compensation, the Supreme Court had directed the states to pay ₹1 lakh in case of death of the patient sterilized, 30,000 in case of incapacity, and in case of post-operative complications, the actual sum of treatment was limited to the sum of ₹20,000. पर यदि आप देखें, ये रमाकांत राय वाज अ लैंडमार्क जजमेंट। इसके आने के बाद सरकार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश किया। इसके आने के बाद गाइडलाइंस फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड काउंसलिंग एस्टैब्लिश किया गया। एंड इसके आने के बाद सरकार यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने का आदेश भी दिया, पर स्टेट्स को टारगेट से सख्त प्यार था। वो सोचते थे कि हम यदि टारगेट रखें और उतनी टारगेट के हिसाब से हम औरतों को ऑपरेट करें, स्टेरिलाइज करें, तो हमें फैमिली प्लानिंग की जो इतनी बड़ी रकम है वो हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे एएनएम्स अपने सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पीछे गड्ढा खोदकर उन्होंने सारे कॉन्डम्स को they had dug a hole and they had buried all the condoms out there. They did not even go around giving the oral pills in the fear that female sterilization, they might not be able to get women for female sterilization. So that was the fear that all the service providers had, because they had received a target that they had to sterilize women, permanent sterilization, and typically they had been given that. So even after that, even after the Ramakanth Rai judgment, nearly 4 million sterilizations took place during 2013 and 14. Out of this, officially more than 700 deaths took place and 356 reported cases of complications. But newspapers came out with horrifying stories of the quality of chibectomy services provided in the camps. One such similar incident, which got much of media attention and subsequently led to the filing of the PI, was Devika Biswas versus Union of India Health. January 2012 में काकरफोरा करके अररिया डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां पर एक एनजीओ एक मिडिल स्कूल में दिन में क्लासेस होते थे और रात को छुट्टी हो जाता था, तो वो मिडिल स्कूल में उन्होंने स्टेरिलाइजेशन कैंप सेट किया। रात के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे में अंडर टॉर्च लाइट विद सपोर्ट फ्रॉम एनजीओ वॉलंटियर्स, एक डॉक्टर 53 वुमेन का स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन किया। These women belong to the age group of 18 to 23. यहाँ पे पानी नहीं था, वो equipments धोने के लिए पानी नहीं था, neither was there any water to hydrate the patients. सबको general anesthesia दिया गया था और general anesthesia
एनेस्थीसिया देने से एक प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोटोकॉल बिना माने इन्होंने इतने सारे औरतों का ऑपरेशन किया। जो औरतें आई थी वो लोग सारे शेड्यूल कास्ट और बिलो पॉवर्टी लेवल, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के थे। और ये जो कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था वो रमाकांत राय के बाद जो गाइडलाइन निकला था वो गाइडलाइन की कंप्लीटली अगेंस्ट वो कैंप किया गया था। और ये जो सर्जन था वो एक ही सर्जन था, वो 8 बजे से 10 बजे के भीतर सब ऑपरेशंस कर चुका था। एंड सारे 53 औरतें को पेन किलर्स दिया गया था जो एक्सपायर्ड था, जो जिसका एक्सपायरी डेट ऑलरेडी वो एक्सपायरी डेट के आगे जा चुका था। वो पेन किलर्स देकर उनको बाहर छोड़कर डॉक्टर और एनजीओ वो सारे वहां से गायब हो गए। This was reported in the media, but जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और जो दूसरे सीनियर ऑफिशियल्स थे, they refused to take action against it and instead they praised the camp and the NGO. जिसको देखकर देवी का विश्वास जो petitioner थी and एक जर्नलिस्ट थे, किसी एक जर्नलिस्ट थे फ्रांसिस लियोन करके, वो दोनों they did a fact finding and देवी का विश्वास filed the BIA and the Supreme Court. पर बिहार एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। उसके बाद से उड़ीसा में हुआ, माल्टा में हुआ, राजस्थान में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में एक औरत जो ट्विंस से प्रेग्नेंट थी, उसको स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन किए, जिसकी वजह से वो मर गई। She died out there. Then came the छत्तीसगढ़ massacre. 8/11/2014 छत्तीसगढ़ में एक सिंगल डॉक्टर 83 वुमेन को एक नेमीचंद ट्रस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल सकरी टाउन में, वहाँ पे 83 वुमेन को फीमेल स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन किया। ये एक अबैंडन्ड प्राइवेट चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में था। ये बंद था, ये हॉस्पिटल बंद था और बहुत गंदा था, फिर भी यहाँ पे उन्होंने वो ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में जब वो लोग मरे, बहुत जोर से मीडिया प्रेस वाले बहुत बोले, जिसकी वजह से उन्होंने एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज कमीशन बिठाया, मिस अनीता झा कमीशन करके, जो एक वेरी प्रेडिक्टेबल सा रिपोर्ट दिए कि वो डेथ हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन्स। तो ये वाली जो केस है, ये केस आया सुप्रीम कोर्ट को, एंड ऑन September 2016 a brilliant landmark judgment was passed by the Supreme Court, taking all the violences and the violations that have taken place in the camps. And in that judgment, the court noted that evidence of poor quality of care during sterilization camps led to the deaths of the women. The judge also took notice of the deaths that have happened in Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Kerala, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, and recognized the deaths, complications, coercions as a result of female sterilization, which has an implication on the woman's right to live life. The judgment issued directions to the government to phase out provision of sterilization services through camp approach in the next 3 years. It also asked the union government to take responsibility as family planning was in the concurrent list. The judgment also directed the union as well as the state governments to undertake regular audits and
post the audit reports in the internet, the quantity, and also said that the quantity of compensation that has been fixed under the family planning indemnity scheme should be raised by the government of India and the state government. ये जो effort है Indian government towards population control through sterilization is ill-informed and based upon a patriarchal structure which does not take into account important intersections of gender, socio-economic status, or location of the people upon which the policies are implemented. Many countries have stopped female sterilization and have negated the theory, Mathis theory, and have gone to a more humanistic approach towards family planning, focusing more on education, abolition of child marriage, behavior change information, and communication. Thank you. थैंक यू सरिता जी, ये जजमेंट के बारे में डिटेल्स शेयर करने के लिए। ऑर्गेनाइजर आपको ये जजमेंट की सॉफ्ट कॉपी दे देंगे अगर किसी को चाहिए हो तो। सो वी हैव वेरी लिटिल टाइम फॉर डिस्कशन, और अपने स्टेट से अगर कोई एक्सपीरियंसेस बताना चाहता है कि हम ये का विश्वास करें और कुछ केसेस कर सकते हैं उस गाइडलाइंस के वायलेशन के बारे में, हम इन स्टेट्स में केस कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे 5 मिनट के लिए। Thank you, Sarita. Very nice presentation. मैं राजस्थान में काम करती हूँ, मेरा शिला है और इसी क्षेत्र में काम करती हूँ। तो ये जो 2 केसेस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलती है जब फील्ड में जब हम स्टेरिलाइजेशन पीरियड के केसेस आते हैं। दुख की बात ये है कि जो जजेस हैं उनमें शायद बेपैथी है या क्या है, स्पेशली हमारे साथ हमारे लॉयर को बताएंगे कि जब भी केसेस शेयर करते तो they don't see emotional about it. They think कि ठीक है हो गया तो क्या। तो बहुत ज़रूरी है हम सबको कि ये दोनों जजमेंट को हमें समझना। हम जो फील्ड में काम करते हैं, तो हम जब कम्युनिटी में भी काम करते हैं, हम सरकारी लोगों के साथ मिलते हैं, they are also aware of these brilliant judgments, because after that we had brilliant guidelines which are very important. So only us who are working in the field, we are aware of this. So every time we go in the community, it's very important for all of us to talk about these judgments, और कैसे हम थोड़ा कोशिश करें कि सरकारी लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सरकारी लोग हैं उनका हम कैसे माइंड इसकी तरफ झुकाएं, उनको हम कैसे जागरूक करें। ये इतना ग्रेव इशू है, दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, बिकॉज विमेन सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं रहेंगे। तो एक तो ये, और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि कैंप के खिलाफ अच्छा जजमेंट है, लेकिन अभी भी वो फॉलो नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि स्टेरिलाइजेशन कैंप ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे हैं, पर एक दिन फिक्स कर दिया जाता है। आई कैन स्पीक फॉर राजस्थान, आई एम श्योर आपके स्टेट्स में भी ऐसा होता होगा कि एक दिन फिक्स कर दिया कि कल ट्यूसडे नजर होगी या थर्सडे नजर होगी। तो कैंप नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स नर्सेस के अंदर वो फीलिंग है कैंप वाली, उनको ऐसा टारगेट है कि वो कैंप का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हो जाता है। तो थोड़ा सा हमें और डीपली जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, GPMs हैं, SPMs हैं, we need to bring them together more, because they are seriously not aware of this like we are aware. मेरा नाम राजदेव है, उत्तर प्रदेश से हूँ, हैदराबाद से। हैदराबाद फोरम जैसा कि आप जानते हैं यहाँ काम आया लगभग मैंने उसका रहा। हम लोग उसके बाद ऑर्डर आने के बाद भी लगातार अपने वॉच कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा चेंज नहीं है। दूसरी बात थी कि टाइम को लेकर उत्तर प्रदेश में जब डॉक्टर आता है स्टेरिलाइजेशन करने के लिए, चाहे वो डेट मिस कर दें और चाहे वो कैंप तो आता है 5 और महिलाएं आती हैं 10 बजे। 5 बजे के बाद जब स्टेरिलाइजेशन शुरू होता है, 60-70 होता है, तो
उसका मोस्टली 10 बच जाता है या बच जाता है, मेरा प्रोसेस देर होती है, तो ये बहुत बड़ा है। दूसरी बात तो कंपनसेशन की बात है। पहले तो इन्होंने भारत सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी को दिया, बाद में बोर्ड को दे दिया, इतना बड़ा अमाउंट पता नहीं क्या सोच करके लोग दे रहे थे और किसी को कंपनसेशन नहीं मिला। बाद में इन्होंने इसको फॉलो किया ग्रेट्युटी स्कीम। इस स्कीम के आने के बाद तो और भी लोगों को नहीं कंपनसेशन मिल पा रहे हैं। महिलाएं भी मतलब ग्रहण कर रही हैं, कॉम्प्लिकेशन से गुजर रही हैं, महिलाएं मर रही हैं, लेकिन सरकार के लोग जिसमें डॉक्टर होते हैं उनको आज भी लग रहा है कि कहीं कहीं डॉक्टर का घर बना होगा, इसलिए वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये डॉक्टर के लेवल से होगा। कहीं कहीं आकर के ब्लेमिंग टू विक्टिम के सिद्धांत पर उस महिला के ऊपर ये लेना आता है कि महिला पहले कैसे कर सकती थी, फिर आपने जांच क्यों नहीं किया। और दूसरी बात एक कंसेप्ट ले रही है तो आप रहेगी देविका विश्वास वाले केस में कहा गया कि 3 साल कैंस खत्म कर दिए गए, इनके पास सर्जन नहीं है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, आजमगढ़ उसमें दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन की दृष्टि से आता है, करीब 50 लाख पॉपुलेशन है और आज भी 2 सर्जन हैं। डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, सर्जन बहुत सारे हैं, स्टेरिलाइजेशन के 2 सर्जन। जब हम बात करते हैं कि आप इसे कैसे खत्म करोगे तो देखते हैं कैसे खत्म करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मुझे लग रहा है बात करने की जरूरत है, आगे से कैसे हो सकता है। हम लोगों ने कोशिश की थी, ने किया था, एक पोस्टर बना था, मुझे याद है बेचारे ने बनाया था संस्था की, कौन सा क्या होने पर क्या कंपनसेशन मिलेगा। और हम लोगों को लगा था कि उस समय शायद संजय शर्मा जी थे या शिक्षा बात हुई थी, ये पोस्टर सरकार एडॉप्ट कर रही है, लेकिन एडॉप्ट नहीं हो पाया। और हम लोगों ने जो मांग किया था कि हम कसबंदी ऑपरेशन के बाद उसे सर्टिफिकेट मिलती है, जो कार्ड मिलता है, उसके पीछे भी किया जाना चाहिए, तुम्हारी कसबंदी फेल होती है तो ये मिलेगा, एक मौत हो जाती तो ये मिलेगा। लेकिन आज तक वो नहीं लिखा जा सकता। तो जनता भी जागरूक नहीं है, लोगों के तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाई हैं कि इसके किस स्थिति में क्या कंपनसेशन मिलेगा, वो काम ये भी अधूरा है। धन्यवाद। मैं सरिया उड़ीसा से। ये जो नस्बती होती है उसके बाद जो उसका फेवर हो जाती है। ऐसे महिलाएं काफ़ी है हमारे एरिया में जिनकी नस्बती हुई थी, उसका 8 साल के बाद 5 साल के बाद वो फिर प्रेगनेंट हुई। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसे कैसे हुआ तो वो कोई जवाब नहीं देता और महिला काफ़ी परेशानी में है जब फिर प्रेगनेंट हो गई। और दूसरा ये है कि नस्बती करने के लिए जैसे वेट वर्कर को उनका एक फिक्स राशि होता है कि 1 लाख के तुम ऑपरेशन करवा दोगे तो इतना पैसा मिलेगा, तो वो मोटिवेट करते हैं गांव में जाकर। तो उसको कैसे हम क्या करें? मैं प्रशिक्षण से शुरू करती हूँ। सर, मेरे एक सवाल this case is specific that we particularly to the public sector and mass sterilizations and violations related to that. Do you know anything specific to violations that are happening in the corporate sector or private sector? Any judgments particular to that? नहीं, मेरा आवाज़ बहुत बड़ा है। रजनी जी, मेरे को ये जो हमारा 2019 में आवाज़ बहुत बड़ा है। हेलो, मेरा कहना है जो छत्तीसगढ़ का जो स्टेरिलाइजेशन के विषय में बात हुआ वो हम लोग सब लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन मेरा कहना है 14 में वो जो केसेस हुआ, 16 में जजमेंट आया, लेकिन जजमेंट हो गया, जजमेंट आया, जजमेंट आया तो हम खुश हुआ, लेकिन उसमें जो डॉक्टर थे, उसमें जो लेटर ऑफ
जजमेंट है, वो जजमेंट एटलीस्ट उसके बारे में लोग जाने। इवन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कम लोग ये जजमेंट के बारे में जानते हैं। तो आई थिंक मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप जुड़े हुए हैं, ये नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, एंड ये नेटवर्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू नो एंड वी सपोर्ट यू एज एडवोकेट, एंड वी सपोर्ट यू, एंड let's do meetings out here around these judgments, you know, that will be the only way you can actually educate people as well as take them forward. और ये मेरा सजेशन है राजदेव जी को। मेरा भी यही था कि जो जजमेंट मेरा भी यही था। मैं आपका ऑफिस आई हूँ, जो कुछ भी हम HR के लिए काम करते हैं वो सब जजमेंट ग्रासरूट लेवल पर जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को असर पड़ेगा कि जो जजमेंट आया वो एक्शन भी होगा और फॉलो भी होगा। इस तरह से हम जो NGO और जो मैडम जो बताए कि NGO और लॉयर्स, सोशल एक्टिविस्ट और लॉयर्स दोनों का जो स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि लोग काम करेंगे हमें भी और हम भी जाके क्लासरूम में बताएंगे, वो एक प्लेटफॉर्म बनाने से अच्छा होगा जजमेंट का और फॉलो का और एक्शन का। ये मेरा था तो आपका ये एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो 2 जजमेंट है रामाकांत रॉय का और देविका विश्वास का, आपके सबके ईमेल IDs है हमारे पास, and I'll ensure that we send across the judgments to all of you so that you can take it forward and you can inform the public and the civil society. एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपने जो पॉइंट उठाया ना, ये संगठन का जो एक्टिविटी है, ये बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि संगठन अपने लेवल पे कुछ कर रही है और जब कोर्ट में आ जाता है तो नेचुरली हम पॉइंट बिकम्स की कोर्ट सीज ऑफ द मैटर, वहाँ पे एजुकेशन पेंडिंग है तो हमको अपने हाथ नीचे करने पड़ते हैं। पर एक प्रावधान है कि आप उसके अंदर इंटरव्यूनर बन सकते हैं। जितनी संगठन की शक्ति अपनी बहुत ज़्यादा है, तो संगठन अपने आप को इंटरव्यूनर बना के अपना पक्ष कोर्ट में रख सकती है। उससे इतना तो होता है कि कोर्ट को एक कोई ये मिलता है कि अभी एक पर्टिकुलर संगठन ने डाला हुआ है, किसी लॉयर ने डाला हुआ है या PI ने डाला हुआ है, इससे और इतने लोग इम्पैक्ट और प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। तो इंटरव्यूनिंग का प्रावधान आप लोग यूज करेंगे तो कोर्ट को ये जरूर रहेगा कि इतने लोग अफेक्टेड होते हैं। अच्छा, जब चर्चा से पहले मैं शिप्रा जी को स्टेज पे मंच को बुलाना चाहूँगी। तो शिप्रा जी निवेदिता फाउंडेशन संगठन के जुड़ी हैं और महिला मंच से जुड़ी हैं, और मैं उनसे कहना करती हूँ कि वो मंच पे आके अपनी बात करें। शिप्रा जी आप आइए प्लीज। आपने बहुत बड़ा सवाल उठाया, कानूनी रास्ता और संघर्ष का रास्ता, और इसमें क्या रिश्ता है, इसमें क्या रुकावटें आता है, इसमें क्या खराब असर पड़ता है, इसमें क्या अच्छा असर पड़ता है, अपने लिए आप बैठिए करो ताकि लोग देख पाए। या यहाँ से थैंक यू, मैंने को मौका दिया गया उसमें बोलने के लिए। और राजनीति हमारा जितना केसेस होता है हम राजनीति को देते हैं और HRL और हमारे संगठन वहाँ पर मिलकर काम करते हैं और राजनीति में बहुत अच्छे से जाती हूँ। मेरा काम है छत्तीसगढ़ का जो सिचुएशन है, अभी लोग डर रहे हैं छत्तीसगढ़ का नाम सुनने से। आप कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ से। लोग मुँह मोड़ के चला
की लड़ाई है उसकी सीमाएं होती हैं और किस तरह से कानून की लड़ाई जो है वो आंदोलन में रोक के बजाय आंदोलन को बढ़ावा कैसे दे सके हमें उस दिशा में काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नसबंदी पे और बाकी सवालों के जवाब। थैंक यू। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आई थिंक बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं सारे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं वो साइमल्टेनियसली करना पड़ता है in order to reach the goal। People's movement and social movement, women's movement एक बहुत ही strong mechanism है जिसके द्वारा हम अपनी goal पा सकते हैं and simultaneously public interest litigation भी एक माध्यम है। So I don't think anyway they clash or anyway one gets rid of the other। मैं सोचती कि दोनों पैरेलली जाए तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है हमारा चेंजेस जो होने को हम मान रहे हैं वो और भी अच्छा से हो सकते हैं। थैंक यू। वन लास्ट क्वेश्चन। मेरा नाम अंकल है, मैं वेस्ट से हूँ, कोलकाता से। ये रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर जो सेशन चल रहा है ये मेरे पास एकदम ही नया है। मैंने पहले इसके ऊपर कभी काम नहीं किया। मेरा एक सवाल है, अभी जब हम लोग रिप्रोडक्टिव राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, why we are talking about only tubal like this? Why not vasectomy? Why government think that if the tubal ligations are done, then everything will be fine? Why not this vasectomy? This was my very short question. Thank you. So this is the last question that I'm taking. Because that's the question that we've been asking the government. Why is there so much of focus on women and female sterilization and not on male? And the order has directed the government, union as well as the state, to ensure that there is an increase of vasectomies by 30% in the next 3 years. So hopefully if we are going to do a research, hopefully if we are going to look into the fact findings that we are going to undertake, we might see some changes in there, and even the budget there might be some changes. So we will be looking at it. Thank you. So with that, we are closing the session। और नसबंदी पे और कुछ चर्चा और कुछ सवाल होंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजर से हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जिसके बाद मैंने उत्पादन किया उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में एक साथ अभियान चलाया जा रहा है और फोकस उसमें ये मेल पार्टिसिपेशन इन फैमिली का तो कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। अलग अलग प्रयास कर रहे हैं जिसके अलग अलग लोग उन बातों को कुछ करने रखा। मैं मुख्य रूप से इंडिया के बारे में बात करना चाहूँगा। अभी देश के 145 जिले में परिवार के लिए लेकर के देश के 145 जिलों में जो हाई प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं आइडेंटिफाई किया भारत सरकार ने, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 57 जिले 57 जिले जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर मिशन परिवार विकास चलाया गया है। मिशन परिवार विकास में पहले जो कंट्रासेप्टिव्स थे उनके अलावा अंतरावर्ष छाया में 2 और कंट्रासेप्टिव्स शामिल किए गए। लेकिन स्थिति ये है आज भी जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है वो अभी भी 1.5 लाख में जो 57 जिले हैं उनके 1.5 लाख या 57 जिलों में अभी भी, जबकि पिछले अक्टूबर से लागू कर दिया गया है, आज भी ये लोगों को उपलब्ध नहीं है क्योंकि उतनी मात्रा में भी इंजेक्शन खरीदे ही नहीं गए हैं ताकि लोगों को समय पर दिया जा सके या फिर उनके पीरियड से उस पीरियड पर पहुंचाया जा सके। अभी जब
संबंधी को लेकर के इसका जो प्रस्तुतिकरण था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश आए, उनके आलोक में कहीं न कहीं गवर्नमेंट प्रेशर में है और ये कैंप को एक फिक्स डे के रूप में किया है। उसमें भी पॉलिटिक्स है। अगर आप 45 आ गए तो 30 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 30 एक दिन में दिखा रहे हैं, दूसरे दिन में 15 दिखा रहे हैं। अभी उसको एक सिस्टम किया, वो PPI पोस्टमार्टम कंट्रासेप्टिव ICD ने उसे शिफ्ट किया है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि महिला की कोई जांच नहीं की जा रही है, और अगर उसको इंसर्ट करना है महिला, तो महिला से कोई सहमति नहीं है। सहमति कब दी जा रही है? वो लेने, जब वो लेने में है उस समय उसे सहमति दी जा रही है, वो सहमति दे रही है या करा रही है, ये समझ में नहीं है। लेकिन उसका कंसेंट मान करके और इंसर्ट किया जाए। और अगर वो जाने के बाद जैसा कि नया होता है, ब्लीडिंग हो जाए, उसे दिक्कत महसूस हो या उसे कोई संक्रमण हो, उस संक्रमण का कोई मैनेजमेंट नहीं है कि संक्रमित महिला के लिए कोई उपाय CHC पर मिल जाए, ऐसा नहीं हो पाता। उसको बाहर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है या प्राइवेट डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, उसके पैसे लगते हैं। कई बार PPI को बाहर निकलवाने के लिए खर्चा करना पड़ गया है। काउंसलिंग नाम की चीज नहीं है। जबकि ऐसी काउंसलिंग की जाए तो शायद हो सकता है इसको एडॉप्ट करते हैं, नहीं ऐसे हो सकता है। काउंसलिंग नहीं है। इन चीजों का लाइक इसमें है, न तो महिला की लगाने के पहले कोई जांच हो, दूसरी बात उसका कंसर्न को लिया नहीं जा रहा, तीसरा है लगने के बाद कोई काउंसलिंग नहीं। तीनों तरीके से वायलेशन हो रहा है। और कई इसमें आप देखें, मेरा अपना अनुभव है, मैं CHS के साथ स्टडी कर रहा था और गोरखपुर के रिश्तों को लाकर मेरा अनुभव है कि वहाँ पर 15 मैंने स्टाफ से लिस्ट लिया, जिसमें बुला के 5 होगा कौन कौन लोग ICC बनवाए हैं, 15 की लिस्ट ली मुझे। और जब हम उनसे जाकर के देखा, उसमें से 10 महिलाओं से हम मिले, उनका हमको हफ्ता है ही नहीं, हम तो इसे जानते नहीं, हमें तो लगा नहीं। तो हमने डॉक्टर से डायलॉग किया, उसमें डॉक्टर ने कहा कि 75% फेक रिपोर्टिंग होगी। और कोई डॉक्टर का देने वाले 75% फेक रिपोर्टिंग होती है, उससे क्या बहस कर सकते हैं? कोई बात ही नहीं। तो ये स्थितियाँ मुझे लगा ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में भी PPI के लड़के की हर नर्स का टारगेट, एक टारगेट मास टारगेट नसबंदी का भी है, इसके लिए भी हर स्टाफ नर्स को 1 महीने में कम से कम 5 PPI लगाने हैं। CHC पर होता है और 5 लगाने। धन्यवाद। इससे संबंधित कोई आपको सवाल उत्तर प्रदेश से जाना हो? Just to do a quick English translation for people who didn't understand it Hindi. What Pushpa was saying was that the entire field will receive, we do not have any such thing as basket of choice, and there are limited options available. Most of the focus is around women who do not have male staff engaging with other men, trying to get them to accept condoms, and accepting a female, expecting that a female worker would be able to talk with the male in the community and motivate them to use condoms is a little difficult. Rajdev ji flagged the issue of postpartum from IUCDs. This is a new thing which has started. The same principle applies. It remains a target-based approach. There is no consent. You're asking the woman for consent when she is at the delivery table. How informed would that consent be, or would that be considered as consent, is a matter of discussion. And when there are complications, there is no cure for it because many of the staff don't know how to deal with it. If we come to the last slide, so just summing up, basically our concept program in India is not rights-based. ये अधिकार बेस्ड है ही नहीं, अधिकार का नजरिए पे हमारा प्रोग्राम नहीं बना है, और इसीलिए जितने भी हम वायलेशंस देखते हैं ये ज़्यादा होते हैं। प्लस यहाँ पे चॉइस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना आपका इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, फोकस आपका जो एक्सेप्टेबिलिटी पर है वो है ही नहीं, मतलब इट्स जस्ट वन मेथड जो आप पुश करते जा रहे हैं। क्वालिटी पे कोई बात नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। सो एवरीवन नोस क्वालिटी इन दिस सिस्टम। और ये जेंडर बेस्ड इश्यूज और डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल नहीं एड्रेस करता है, और
इनफैक्ट पेट्रियार्की जो है उसको चलाया जा रहा है विमेन अनुसार सॉफ्ट टारगेट आसानी से आप उनको उनके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं तो यही चीज़ है जो चला जा रहा है बेसिकली दिस इज व्हाट I'd like to end with. We don't have rights-based principles guiding the program. It is bound to be full of violations. Thank you, Rajesh, and thank you, Pushpa. So now we go to Zara. So Zara has worked on a range of issues, including access to contraception, unsafe abortion, child marriage, Rohingya refugees, and gender-based violence. She co-wrote an HRS recent publication on child marriage, which featured research in several different states. Recently, along with her team, she visited 11 Rohingya refugee camps across Delhi and Haryana to document reproductive violations taking place, which was then compiled into a comprehensive report and submitted to the Supreme Court of India as evidence adjoining a petition. Additionally, she regularly speaks at consultations in states such as Nagaland, Arunachal, Odisha on marital reproductive rights issues. So, Zara. So I think we gave a really nice summing up of the situation regarding contraception in India. So I'm just going to dive right in and talk about the public interest litigation petition which HRN has recently filed in the Supreme Court regarding the lack of access of contraceptive information and services. So if you can skip this slide. So in the next few slides, I'm going to be taking you through some of the main arguments that we put forth in our petition. So a big part of the evidential basis of our petition was a fact-finding commission report that we conducted in July 2017. This is regarding the role of ASHAs, who are ground-level health workers, in the delivery of contraceptive information and services. So the research that we did found that ASHAs have a severe lack of adequate training and are therefore spreading a lot of misinformation regarding contraception. A key thing that we discovered was they were planning to sterilize a group of homeless men in a hope that it would stop the spread of HIV. Obviously, we know that sterilization does nothing to stop the spread of sexually transmitted diseases. Another very big problem is the incentive payments that they're receiving. So ASHAs don't receive any flat-based salary, they receive incentives, and the disparity between the incentives paid for spacing methods and limited methods is massive. So for condoms, they receive maybe 1 rupee. For promoting female sterilization, they receive about 200 rupees. And coming on from this, there's a big shortfall of ASHAs. They're incredibly overburdened. So much so that they're actually falsifying contraception reports, and they're prioritizing activities with a higher incentive. And we found that contraception information services are not being delivered in poor communities and rural communities. So I'm going to try a quick translation. हिंदी में थोड़ा अनुवाद कर देती हूँ. तो इन्होंने जो पहले बताया था कि कॉन्सेप्ट सर्विसेज से इनका मतलब क्या है, तो पहले 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है. एक है आपकी पहुँच, दूसरी आपकी जानकारी होनी चाहिए इसको लेकर, और तीसरा आपको जागरूकता होनी चाहिए. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. उन्होंने आगे बोला कि HRN का जो फैक्ट फाइंडिंग है PIL के पहले जो उन्होंने किया था, इसमें उन्होंने आशा की भूमिका देखने की कोशिश की और यहाँ पाया गया कि आशा जो है उनका ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है, इसलिए वो सही तरीके से जानकारी नहीं दे पाती हैं. इंसेंटिव उनको मिलता है और ये इंसेंटिव जो है वो बेसिकली स्टेरिलाइजेशन को भी हम कैसे बढ़ावा दे पाए इस पर भी है, फीमेल स्टेरिलाइजेशन. और आशाओं में भी कमी है, उनकी संख्या जो है वो पर्याप्त नहीं है. और ये जो सर्विसेज हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, ये सबसे राशि पे रहने वाले गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो समुदाय हैं उन तक नहीं पहुँच पाते हैं और वो बढ़ती चली जाएगी. ये जो कमी है, ये जो पहुँच की जो कमी है, ये बढ़ती चली जाएगी. Another key argument is the lack of cohesion between the national health officials' plans and the reality on the ground. So we took the document, which is the framework and implementation
to focus on spacing methods, male involvement, including male sterilization, will be promoted. The distribution of contraceptives at the doorstep through ASHAs and other channels will be actively promoted. And improved family planning service delivery, including access, availability, and quality of services, counselling services through dedicated counsellors, improved technical competence of the providers, and increased awareness among the beneficiaries will be ensured. तो इनका कहना है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसकी प्लान को लेकर इस स्लाइड में चर्चा की गई और नेशनल हेल्थ मिशन का जो था ये सोच थी कि फैमिली प्लानिंग की जो सर्विसेज हैं इसको इसलिए भी बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि न सिर्फ पॉपुलेशन इससे कंट्रोल में आएगा, काबू में आएगा, बल्कि जैसे मैंने बताई थी इस प्रेजेंटेशन में कि मैटरनल मॉर्टेलिटी जो माताएं मरती हैं डिलीवरी के दौरान, जो महिलाएं मरती हैं और बच्चों की जो मौत होती है ये कम हो सकती है। फिर इस मिशन में ये भी था कि सभी स्टेट्स जितने भी हमारे राज्य हैं इस सब में फोकस अभी स्पेसिफिक मेथड्स पे होगा कि 2 बच्चों के बीच हम कैसे अंतर रख पाएँ और खासतौर पर जोर दिया जाएगा IUCD के इस्तेमाल को लेकर। पुरुषों को कैसे हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनकी भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पुरुष कैसे मेल स्टेरिलाइजेशन को अपनाएं, इस पर भी फोकस किया गया है और हर महिला या हर दंपति या हर पुरुष के पास स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज उनके घर तक पहुंच कैसे बनाया जाए आशा के थ्रू, इस पर भी इस प्लान में चर्चा हुई है। और इन्होंने ये बोला कि स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज को अगर हमको बेहतर बनाना है तो पहुंच, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ये ज़रूरी है, काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी है और जो दे रहे हैं सर्विसेज उनकी ट्रेनिंग भी पर्याप्त होनी चाहिए, जो ले रहे हैं सर्विसेज उनमें जागरूकता होने की बहुत ज़रूरी है। But despite this, the national unmet need and unmet need for clarification is women, married women aged 50 to 49 who do not have access to contraception. So the national unmet need as of now is 21.3% and this has actually jumped up from 20.8% since the last time the survey was taken. The global unmet need is 12.3% and in northeastern states such as Bulgaria, the unmet need soars to 55%. इस स्लाइड बेसिकली ये दिखाता है कि जो महिलाएं कॉन्सेप्शन इस्तेमाल, महिलाएं और पुरुष भी जो कॉन्सेप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन उनकी पहुंच नहीं है, इसको वो अनमेट नीड कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इंडिया में अनमेट नीड जो है वो 21% है, लेकिन कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा है, जैसे मेघालय में 55% ऐसे हैं लोग जिनको चाहिए लेकिन उनको ये प्राप्त नहीं है। And then we focus on the consequences of a lack of contraceptive information services in India and the cyclical nature of it. So you have the initial unwanted pregnancy, which is often adolescent pregnancy, which can lead to unsafe abortion, sexually transmitted diseases, maternal mortality, and infant death. तो ये बताता है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्शन नहीं है तो कैसा एक चक्र जो चलता है कि ऑब्वियसली कॉन्सेप्शन नहीं होने पे आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। कई यंग गर्ल्स जो सेक्सुअली एक्टिव है उनके पास अगर ये पहुँच नहीं है, एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज बढ़ जाती है, तो इन प्रेगनेंसीज को वो नहीं चाहते तो अबॉर्शन सर्विस इस्तेमाल करते, जो अधिकतर देखा गया है कि अनसेफ अबॉर्शन सर्विसेज हैं। प्लस कॉन्सेप्शन का इस्तेमाल न होने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कई सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के वक्त मर जाती हैं और लगातार प्रेगनेंसी होने से बच्चे जो पैदा होते हैं वो भी दुर्बल पैदा होते हैं और उनमें भी बहुत मौतें हो जाती हैं। So as per the National Health Mission, the ASHAs and the government healthcare facilities should have a range of contraceptive methods. So this includes oral contraceptive pills or OCPs, emergency contraceptive pills or ECPs, condoms, IUDs, and of course male sterilization and female sterilization. परिवार नियोजन के साधन जो है
argument we made in our petition, which quite extended talked about, was pledges that India made at the London Family Planning Summit. So they actually committed to spending 1,500 crore rupees a year on family planning, but we looked into their expenditure and they're only spending about 77,665 lakhs, so barely half of their pledge is what they're currently spending. तो ये जो मैं प्लानिंग समिति के बारे में बात कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इतने पैसे को लगाएंगे फैमिली प्लानिंग में, वो लाल है, जो लाल आपको दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली जो खर्चा हुआ है वो उससे बहुत कम हुआ है, जो नीला आपको दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कमिटमेंट था और एक्चुअली जो इस्तेमाल हुआ है. And as was touched upon previously, the expenditure is massively skewed. About 85% of the budget being spent on female sterilization. I don't know why that was from other, but anyway, 85% of the budget is being spent on female sterilization, 1.5% is being spent on spacing methods, and 13.5% is being spent on things like salaries and administrative costs. तो ये दिखाता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो हम लोग का भारत का है वो किस तरीके से क्या क्या स्पेंडिंग होती है. इसमें सबसे ज़्यादा नीला जो बड़ा हिस्सा है वो है फीमेल स्टेरिलाइजेशन, फिर स्पेसिंग मेथड्स लाल पतला सा जो है, और बाकी जो है हरे में जो आप देख रहे हैं वो सैलरीज हैं, जो एम्प्लॉयज हैं हमारे गवर्नमेंट के, तो उनकी जो तनख्वाह है वो है. So one of the key things we focused on in the petition was the ASHA doorstep delivery service. So in 2011, the Ministry of Health and Family Welfare rolled out a scheme to improve access to contraceptive information services by having ASHAs deliver a variety of contraceptives at the doorstep of households. तो आशा का प्रयोग सरकार ने सोचा करते हैं फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, और ये घर घर जाकर आशा काम वो कॉन्सेप्ट को बांटे, और एक पायलट रूप में इसको पहले प्रयोग किया गया, मतलब इसको रोल आउट किया गया था 17 स्टेट से. But the reality that we found on the ground in a range of states, Assam, essential drugs were available, Chhattisgarh, emergency contraceptive pills were available, Haryana, pills haven't been received, Jharkhand, counselling on spacing methods is non-existent, Karnataka is focusing on female sterilization, and so on and so forth. असलियत में हम देखते हैं कि जैसे वो सोचे कुछ भी नहीं हुआ है, और वही चीज़ें चाहिए. हर स्टेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और मोस्टली ये प्रॉब्लम जो है सब वैरायटी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो नहीं निकल रहे. So the petition itself focused on all the arguments that I've just told you, and we can come to the next slide. So the legal purposes of this petition, firstly the Indian Constitution, Article 21, the right to life, several cases beforehand, such as Vaz and actually Mandel, have read the right to health into the right to life, and also the right to equality. And in addition to this, we have CCRI, the Convention on Elimination of Discrimination Against Women, which specifically finds for access to contraceptive information and services. आपने जो लड़की के केस के बारे में चर्चा करी, और इसमें ये बताया गया कि केस के दौरान इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया, और सीलो जिसमें मुझे लगता है आप सब वाकिफ हैं, उसका भी प्रयोग किया गया था केस को मजबूत बनाने के लिए, दो चीज़ों को इस्तेमाल किया. And I'll just quickly run you through the prayers of the petition. So we want the government, all state governments, to roll out the ASHA contraceptive delivery service across the nation with the full basket supply of contraceptives. We want them to address the shortfall of approximately 346,000 ASHA workers. We want them to ensure the entire basket range of contraceptives are available at all public healthcare centres. We want the unmet need to be brought down from 21.3% to a negligible rate. We want India to bring their commitments that were made in the London Family Planning Summit to light. We want a dry
launch drive encouraging condom usage in order to promote safe sex and reproductive rights, and implement mass media campaigns to raise awareness regarding contraceptive information and services. जानने में जो केस है उसमें मांगे की गई है उनको कानून को जिक्र किया गया है, जिसमें वो चाहते हैं कि जो आशा का जो उनका प्लान हर घर घर जाकर आशा सर्विसेज देंगी पूरे चॉइस बास्केट ऑफ चॉइसेस के साथ इसको लागू किया जाए। जो आशाओं में हम कमी देखते हैं उनकी संख्या में इस और आशाओं को भर्ती किया जाए। जो अनमेट नीड हमने देखा था कि बहुत कपल्स दंपति जो है वो चाहते हैं कि कॉन्सेप्शन इस तरह के उनके पास पहुंचता नहीं है, ये 21% के था उसको कम करके बिल्कुल खत्म कर दिया जाए अगले 5 सालों में। और जो मैंने बात किया था कैबिनेट समिट के को लेकर जो कमिटमेंट्स थे सरकार कहाँ खड़े करेगी उस हिसाब से बजट का इस्तेमाल वो करें और लोगों में इंफॉर्मेशन फैलाएं कि मेल स्टेरिलाइजेशन जो है वो आसान है, इसको करने से आप में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपकी बर्दाश्त उनके से होने वाला है। ये सारी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, प्लस ये रिवर्सिबल है। तो कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि आपको बच्चा भी पैदा करना है तो आप इसको कर सकते हैं दोबारा। और मेल और फीमेल स्टेरिलाइजेशन जो हम लोग देखें कि बहुत ज़्यादा फीमेल स्टेरिलाइजेशन होता है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके दोनों को सेम करने की कोशिश मतलब करनी चाहिए सरकार को। और सेफ सेक्स जब हम यौनिक संबंध बनाएं तो किस तरीके से इसे सुरक्षित बनाएं इस पर भी सरकार स्टेप्स लेना चाहिए। और एक मास मीडिया का इस्तेमाल करके किस तरीके से अवेयरनेस कॉन्सेप्शन को लेकर बढ़ाया जा सके, ये सब चीज़ें की मांग इस कॉन्टेक्स्ट के द्वारा की जा रही है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनमें मैक्सिमम अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स व्हिच बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट। तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकते मैक्सिमम ऑफ लोग जो भी है मैक्सिमम लोग को अफोर्ड नहीं कर पाते तो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है क्योंकि सप्लाई चेन से एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मोस्टली। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो कि हमें प्रैक्टिकली चेक करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, उसका एक्सेसिबल नहीं है और लोग यूज़ करना भी नहीं चाहते क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है कि यूज़ करने पे मतलब अच्छा है they don't use it, right? So now I think we can just open for questions and you focus on the PI which we have. I want to keep little focus on the reason for this meeting. Which is legal intervention, PI. Okay, problem हमें मालूम है, solution क्या है? Okay, तो ये देखना पड़ेगा। आशा doorstep delivery service. Now tell me, Asha doorstep delivery service, free condoms, free contraceptives, correct? I would like to have a male person to do this. Ashas in the villages normally are the couples, तो उनको बात करने में हिचक नहीं होती है। अगर एक पुरुष कार्यकर्ता से कर सके तो मेल वर्कर्स get engaged to engage the men, then No, I got it here. See, how would you do a PIL on Asha doorstep delivery service? Second, 23% unpaid leave time. Meaning people aren't given wanted, aren't men wanted, they can't get it. Right? How would you do a PIL? What PIL do you do? Can anybody say? Give him a mic, please. You would file a PIL and the PIL will ask that the scheme be implemented and that the delivery should be done
Sandhya's point of view that the trend should accompany the field, not just within the organization. Yeah, that's okay. Next, anybody else? What would you do in your state? आप अपने state में contraception को मिलना जो अभाव है, जो gap है, उसके बारे में आप क्या करोगे? क्या केस करोगे? 21% बहुत बड़ा गैप है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में बहुत सारे पंडित लोग हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, करेक्ट? और ज़्यादातर ये स्लाइड दिखाता है कि जब ये प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का कोशिश करता है तो आक्रमण होता है महिलाओं पर। Yes, you saw the two cases. They take up this last case, 100 women, Bihar. 100 women, 1 laparoscope. 100 women, 1 laparoscope, abandoned school. कोई पुराना स्कूल था, उसने 100 महिलाओं को लिया, टेस्टिंग किया, राइट, बंद हो गया तो टॉर्च लगाया और एनजीओ ने इंजेक्शन दिया और 1 laparoscope से 100 operations किए. What is the law? How many operations can you do? How many operations can you do? With 1 laparoscope, how many operations? Anybody knows? Under guidelines? Somebody speak loud and tell me. 15 operations in 1 day. 15 operations? 1 after. So 1 laparoscope 50 in 1 day. Correct? बिहार में कितना किया? 1 लैप्रोस्कोप को स्टेरिलाइज करना पड़ता है, एक ऑपरेशन हो गया, दूसरा महिलाओं के लिए स्टेरिलाइज करना चाहिए, बिहार में छत्तीसगढ़ में क्या चीज टाइम पकड़ लगता है जी इसने कैंप को मना किया। सेकेंडली ग्लव्स चेंज करना चाहिए या नहीं? तो पीएल क्या करोगे फिर? ये स्टेरिलाइजेशन के बारे में अगर आपके एरिया में कोई कैंप चल रहा है आप करोगे कैसे? हम जाके देखेंगे कि ठीक अच्छी तरह से इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे और ठीक अच्छी तरह से वो करंट वगैरह देखेंगे और वो रहते हैं ना वो सब काम ठीक ठाक अच्छी तरह। दोस्तों आज प्रोग्राम के हिसाब से at 4:40 we were going to have a session on child marriage, legal strategies for the enforcement of the Prohibition of Child Marriage Act. हम बाल विवाह पर बात करना था, हम उसको थोड़ा पहले ले आए क्योंकि हमारे एक साथी को जल्दी वापस लौटना पड़ रहा है। इस विषय पर बोलने के लिए हमारे पास 3 साथी हैं। एक ने आना है ऊपर, दीपिका ऊपर आ जाओ। तो दीपिका गुजरात से है, ये वकील हैं गुजरात में और ये भी बाल विवाह पर बात करेंगी। हमारे साथ एडवोकेट जयराम कोठारी है, आप कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च बैंगलोर में काम करती है। और तीसरी बंधु बहन दोस्त जिनको आप पहले सुन चुके हैं वो है जहरा विंड, ये सीनियर रिसर्चर है HRMN में। हमारी कोशिश है कि हम ये सेशन 50 मिनट से ज़्यादा न चलाएं। So I first of all request Jayant Kothari to speak. Jayant, you have 15 minutes. And after about 30 minutes, I'll let you know that you have 2 minutes to start off. ताली बजाइए इनके लिए। Thank you, Kamala. Thank you, HRM, for calling me, Sarita, for including me
burdens for prohibition of child marriage, what are the legal problems and how do we understand them. And in this regard, I would like to lay out a few strategies that we have been developing and working on. One thing is there that, we've all been talking about child marriage for many years, but you also realize that when you take up cases in court, judges, lawyers are not familiar with the Prohibition of Child Marriage Act. PCA, we are not familiar with it. We are familiar with the DB Act, we are familiar with the Hindu Marriage Act, and other family laws, but actually there are no cases taken up under the PCA. So nobody is familiar with the PCA, including judges and lawyers. So I think it is important for us to understand what the law is. So the Prohibition of Child Marriage Act, the PCMA, prohibits marriage where a girl is under 18 years and boy is 21 years. So this part I think most of us may be familiar with. Interestingly, while the law talks about the age of marriage for boys and girls, it does, if you are married, if you are under 18 or under 21, your marriage is still completely valid. It's not an invalid marriage. That is how the law is. It only says that the marriage, if either of them is a child, is voidable. So section 3 says that the child marriage is voidable at the option of either child. So that means that after the marriage has happened, even if one of them is a child, it's still a completely valid marriage. It can only, yes, we actually, I don't think many people knew that these were valid marriages. Yes, they're completely valid marriages in law. They can only be annulled or voided, set aside, if one of them takes it to court. So you have to file a petition to annul, to nullify the marriage. So either of the child can do it, any of the parties can do it. They can do it up to 2 years after attaining majority. So if you're a girl, you can do it up to the age of 20 years. Or even before that, through a next friend or a guardian or through an NGO or through anybody else. Only if you do that and the court annuls it, then only your marriage is actually a void marriage. Otherwise, it is still a valid marriage, even though you may have been a minor when you were forcibly married. Only in few cases, under section 12, are child marriages automatically null and void, when you don't need to go and file a petition for annulment. And section 12 says that child marriages are null and void where a minor child is taken forcefully or enticed away from his or her lawful guardian, compelled by force to go to some place, or sold for marriage, or sold after marriage, trafficked or used for immoral purposes. Or if there is a court injunction order to stop the marriage and still the marriage has happened, then it is void. So now, in these cases where you are forcibly taken or forcibly trafficked or forced to go from one place to another for the marriage, it is immediately void. Now actually, in a majority of cases of child marriage, I think we would all agree that many of these situations would be there, where a child is forced or forcefully taken away from her guardian or taken by her guardian to go from one place to another. But there are rarely any cases filed, even under section 12, to declare a child marriage as void, or anyone coming and saying that my marriage is void because I was forcefully taken away. There was in fact one decision of the Punjab and Haryana High Court where the court held that where a marriage of a minor was contracted, because she was taken forcefully from her guardian by the boy who wanted to force her to get married, was void. But today, in our experience, at least in Karnataka, and I hope you share with me your experience in parts from where you are, how many petitions are filed to declare a marriage void, either under section 3 or under section 12 and 14. In Karnataka, we find recently there was a case of a 13-year-old girl who came to us. She was forcefully married. She was taken away by 2 boys in the neighborhood.
And we then filed a petition for annulment in the family court. The family court registrar said PCMA is not, doesn't come to the family court. We don't have jurisdiction over the PCMA. Then I went to show him the PCMA. Then we went to the principal judge. The principal judge said, oh, I've never had an annulment petition before under the PCMA. In the family court in Bangalore. We had to read out, she said, first show me the jurisdiction. So she had to understand the PCMA. She had never taken a case of annulment of a child marriage ever. This was the first case ever. So we actually see that even though the law is there, annulment petitions are not being filed, not being utilized. And this is something that I think is a big problem. If you want to implement the law, the first thing is to utilize the sections that are already there. In an annulment petition, when an annulment petition is filed, often the question asked is what happens to the children? How can you what about the girl? How can you annul the marriage? Where will she go after the marriage? After annulment? Who will support her? And for those questions, that the law already addresses it because it says that children who are born out of child marriages to any girl who is married which is a minor, the children will still be considered legitimate children, even though you may file for annulment. And custody of the children can also be decided by the court if she wants custody. So that shouldn't be a problem. Over here, I would like to also point out that there was an interesting development in Karnataka. In 2017, Karnataka State brought about an amendment. This came out of a report by Justice Shivraj Patil. There was a committee set up under the chairmanship of Justice Shivraj Patil. It was called the Shivraj Patil Committee. And this was actually set up by the Karnataka High Court as an outcome of a petition actually filed by HRLM. So HRLM had filed a petition, I think in 2012 or 13, in the Karnataka High Court saying that the PCMA was not being implemented. The Karnataka High Court said that we don't want to go into it, it's too big an issue to go into it. We will set up a committee by a retired judge. So Justice Shivraj Patil was a retired Supreme Court judge, a committee was set up and he came up with an excellent report, and one of the recommendations in the report was that child marriages should be made void. I mean, if you want to say that you shouldn't have child marriages, you cannot legalize them. I mean, you cannot say that after you're a minor, your marriage is valid and put the burden on the minor child to go and seek annulment, right? If the minor child had that much strength, she would have stopped the marriage. But because she couldn't stop the marriage, she's getting married, and then to put the burden on her for annulment. I mean, it is extremely difficult for a young girl to get support to go to court. So one of the recommendations was that child marriages should be void. They cannot be valid marriages. And in 2017 April, Karnataka brought about an amendment, a state amendment, which said that all child marriages from now on in Karnataka would be void ab initio, means void from the very beginning. The way I look at it is that you don't even need to go to court to get an annulment done. If you say that you were a minor and you were married after this date of the amendment, it's a void marriage. It also made certain other amendments where it increased the punishment period, etc. And I have the amendment if anybody needs to look at it. So this is really, I think, an important advance. And I think this is one issue that we in Karnataka, we as CCRI are trying to take it to other state governments and try to lobby for law reform that other states also push for this. Now the issue of maintenance, like child custody, when you seek annulment, you can also get orders for maintenance. The minor girl can get orders for maintenance, and the court can direct either the husband to pay maintenance, but if the husband is a minor, then the husband's family or parents pay maintenance. Then, what is also important is that if anyone comes to know that there is a child marriage that is going to take place, anyone can file a complaint or go to the court and seek an injunction. And the court can pass an injunction to stop the child marriage. The big difficulty is, again, this is not being used, and courts also don't know that they can pass these
These are the offences. I'm not going to go through them. If anybody has solemnized a child marriage, anybody who performs it, it could be the family, it could be the priest, it could be any other adult, then these are the offences. These are criminal offences. You can file criminal complaints for all these offences. Disobeying an injunction, permitting solemnization of marriage, attending or participating in marriage. All of these are offences. But tell me, how many complaints are filed even against people? What about the pundits who can see that the children are minor or that the girl is minor? How many complaints are filed? As a single priest of any religion, then complaint has been filed? I don't think so. So one is that the Act is not being utilized at all, even in its present form. The next thing I'd like to just quickly point out is that last year there was an important judgment in the Supreme Court, Independent Court versus Union Media. This was filed by an organization called the Independent Court, but we intervened, CCRI intervened on behalf of a group called Child Rights Trust, really to bring up the harms, the reproductive rights and the harms that minor girls face in marriage. And the court ruled that that rape of a minor girl in marriage is marital rape. And I think this is really a big interpretation which is very, very progressive. So the court, there is an exception in our criminal law which says that sexual intercourse by a man with his own wife, the wife not being under 15 years of age, is not rape. But the court said that if we are prohibiting child marriage, 15 should be read as 18. So any rape within marriage where the girl is under 18 is child marital rape. And it also held that the PCMA is a secular law and would override all personal laws. So anything that we say, Hindu law permits minors, Muslim law permits, Christian law permits, none of that is valid anymore. There is a PCMA which overrides everything, and even criminal law recognizes child marital rape. So all of this is to ensure that the PCMA can be implemented strongly. Finally, the PCMA also has officers who are child marriage prevention officers who are appointed by the government, and their duties are to prevent child marriages, to collect evidence, to file complaints, to prosecute, and to create awareness. But we all know that none of this is really being done adequately. I think there is also another litigation pending in the Supreme Court initiated by the Child for implementation of many of these duties by the CMPOs. One example I would like to give in Karnataka is that the Karnataka government, in its over-enthusiasm, has declared every single government revenue officer as a CMPO. So we have 55,000 CMPOs in Karnataka. All government school teachers are CMPOs, all revenue officers are CMPOs, all panchayat officers are CMPOs. So the result of that is that if any NGO wants to report a child marriage, they go to a teacher, and the teacher says, I don't know what it is, nobody knows, they are all CMPOs, but nobody knows what they are supposed to do, and they keep passing the buck. So it is actually not an answer to have too many CMPOs, because they don't know their roles and they don't know their duties. So these are the hurdles that we are facing in Karnataka. So finally, I would say that if you want to look at really legal strategies, one issue really is to use the PCMA. The PCMA is highly underused at the moment. We need to file annulment petitions to annul child marriages that are already solemnized. I think organizations need to be able to tell groups and people this is what you can do. Lawyers need to be familiar so that they can take up their cases. Second, we need to use the law to seek injunction orders to stop child marriages. For this, I think we really need to educate judges. We have many instances where child rights groups have gone to court. Like the marriage is going to take place, like in 2 hours they run and they go to court with the judges. The judges don't know what's happening and they are unwilling to take a step. And so we need to educate our district judges and magistrates that in these kind of situations you have to act really quick, and we need to also build a cadre of lawyers and groups who can take up injunctions. The next is, even after filing annulment petitions, you can seek maintenance, protection orders, custody orders, which often is not being done. The next issue is how do we activate the work by CMPOs and police officers. They have so much powers to stop child marriages and to take action.
but police officers who really, they don't care about child marriage, it's not a priority for them. And in each state, I think we look at how CMPOs are working. Finally, I think we have this big judgment on child marriage and rape, and we really need to use it. There was one case in Karnataka where one brother, his sister was married, and he actually filed a complaint under 376 for rape against his sister's husband, and police actually acted on it. But again, how many people know about this? So I think that also is an issue. And finally, I would really suggest that, like Karnataka has brought out an amendment, can we push for legal reform either at the centre or in other states for amending the law? दीपिका जी गुजरात से हैं, वकील हैं और इसी विषय पर बोलेंगी। Good afternoon, Good afternoon. सभी को सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत कच्चा है, इसलिए मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हिंदी में मैं आप सबके साथ बात करूँगी। जो अभी मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो चाइल्ड मैरिज के बारे में है। जो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज में ज़्यादातर क्या होता है, जब भी बच्चे लोग छोटे होते हैं, बेटा या बेटी उनकी एंगेज फिक्स कर देते हैं, फिर बाद में उनको तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता है कि चाइल्ड मैरिज क्या होता है, वो भी उसे पता नहीं होता है। तो छोटे उम्रों में उनकी शादी हो जाती है, और ये शादी जब होती है तो ज़्यादातर क्या होता है कि उसमें उसके माता पिता की सहमति होती है, और जो गांव के सभी लोग होते हैं या गांव के मुखिया होते हैं वो सभी लोग इसमें शामिल होते हैं। और ज़्यादातर कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो भी उस परिस्थिति में शामिल होते हैं। कोई इसका विरोध या कोई उसके खिलाफ नहीं बोलता है। जो कोई लोग इसके खिलाफ बोलते जा रहे होते हैं तो जो गाँव के मुखिया
के लिए है उसे पढ़ाओ और कुछ अपने पैरों पे खड़ा करो कि जिसकी वजह से वो अपने आप अपना खुद का डिसीजन ले सके। खुद पैरों पे खड़ी होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही। थैंक यू। हमारी तीसरी स्पीकर है जहरा विन, तो मैंने बताया कि HRM के साथ सीनियर रिसर्चर है। Hi, I'm just going to take up a short amount of your time. So, in early 2018, HRM filed a petition regarding the lack of implementation of the Prohibition of Child Marriage Act 2006. And as I'm sure a lot of you know, a lot of the data regarding child marriage is extremely old, and there's not a lot of it. So people basically directed us to go back, find out some new information, and come back to them. So most of my presentation is going to be surrounding the additional affidavit that we filed in the Supreme Court. So PCMA has been in place since 2006, and since then we've seen rates of child marriage fall to 26.8% according to NHS4 data. So this is over a quarter of underage women, but despite this, according to the National Crime Records Bureau, there's only been 323 registered instances of child marriage in police stations across the country in 2006. So we filed right to information requests to the union government and to all of the state governments. And the data that we received back was wildly different from NCRB data. So specifically in Tamil Nadu, we were told that there were 1,033 cases registered with the Directorate of Social Welfare, Chennai alone. And we were also told that despite Tamil Nadu being quite a progressive state when it comes to laws regarding child marriage had increased from 744 instances in 2014 to 1,295 instances in 2017. And in addition to this, the data regarding RTIs and NCRB is wildly different. So for Rajasthan in their RTI reply told us that there were 573 incidents of child marriages. But NCRB told us that there had been 10 cases registered in police stations. So you all know about the Prohibition of Child Marriage Act. I'm specifically now going to talk about Section 16, which governs the child marriage prohibition officers. So one of the key parts of this act is that it talks about members of the localities, gram panchayats, municipalities, but it doesn't say that these people can also be CMPOs. It says that they can assist the CMPO. So it doesn't provide for these people to have additional charges. Jana outlines the duties of child marriage prohibition officers, so I'll just skip this, and I will come to the RTI replies that we received regarding CMPOs. So Haryana is the only state in India that has CMPOs who are still functioning in that role. Every other state, whether they have 2 CMPOs or they have 1,000 CMPOs, they're all working in different roles. Rajasthan, even though they have high rates of child marriage, has 0 CMPOs. And this is a bit confusing because the union government told us that there were 603, but the state government told us that there was 0. Several northeastern states, specifically Nagaland, have told us that there's no CMPOs, specifically told us no child marriage occurs in this state. Sikkim has 2 CMPOs who are supposed to be yet to be appointed. And I'll just read this quote from a HAP Centre for Child Rights report where it was said that in Madhya Pradesh, citing financial stringency, the district magistrates have been designated as CMPOs, and they are so overburdened with other administrative responsibilities that they hardly have time to deal with the issue of child marriage. As Jana said, a lot of people are working as CMPOs functioning in other roles such as district welfare officers, but sometimes their role is so far removed from the issue of child marriage. We're having groups of tax officers functioning as
heard 3 presentations. Are there any questions or comments? And if you have them, please say to whom is this question? I see one hand. Anyone else? 2. Okay. To begin with these 2, please, if you can, do specify to whom is the question. Yeah, gentlemen. Right. Forgive me if this has been ignorant, but I'm an outsider in Indian culture. I'm just wondering, from your research, anyone please answer, what are the causes of child violence? Why does it happen? And related to that, given that it's a social phenomenon, is it even possible to legislate it away? Or will it be a case that these marriages will take place outside of the legal system, as I think Sarah, your data might indicate? Thank you. Thank you. G. Okay. मेरे को 2 जानना है, क्वेश्चन है। एक तो चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर में मेरा जानना है, एक लिखा है जो लड़की साबालिग होता है 18 साल में और लड़का होता है 21 साल में। मेरे को ये कंफ्यूज है, जब हम दोनों 9 महीने प्रेग्नेंट रहते हैं, एक ही प्रोसेस है, पैदा भी होते हैं 9 महीने में, तो 18 साल में इनका क्यों साबालिग हो जाता है और उन लोगों को 21 साल में? ये दोनों का फर्क क्या है? और आज में क्यों बोला गया है कि मैं जब हम बोलते हैं कि लड़का का बराबर है, सब कुछ बराबर है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये जो एक्ट है वो बोलता है आप 18 साल तक चुप रहो, 18 साल में शादी कर सकते हो, ठीक है ना? इनका कहना है 18 साल तक शादी मत करो, लेकिन शादी करो से तुम शादी करना है, शादी से मैं क्या सकते हैं 18 साल तक मत करो। ये एक्ट में हमको वही डाला गया है कि 18 साल तक तुम शादी नहीं कर सकते, लेकिन 18 साल में आप शादी कर लो। नहीं, मेरा सवाल वही है कि 18 साल बाद हम शादी कर रही है हमारे खिलाफ है, तो क्या करना है? वो आज उसमें काम नहीं करता है, क्योंकि मैं इसी मुद्दा को छत्तीसगढ़ में काम करती हूँ और खुद ऑफिसर बोलते हैं 18 साल के बाद शादी होने का हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे मर्जी के खिलाफ शादी होने का 18 साल के बाद में, तो मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, ये दोनों सवाल मेरे को अभी कंफ्यूज है, दोनों का साबालिग और कैसे हो जाता है? मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट आप पास आ गए, आपको यहाँ पर क्वेश्चन है आज आपका, इसके बाद है। My question is upon reporting child marriage, reporting upon reporting a child marriage that is going to happen to the appropriate authorities. So, for example, child like or police or CWC, if that man and they trying to intervene or they are trying to intervene and the marriage happens. So, what is the legal consequence to those officers? Is there any provision in law that says they are under that they can be made liable or something? चाइल्ड मैरिज में जैसे उनके पेरेंट्स को पनिशमेंट होता है और कुछ होता है, लेकिन सरकार को कैसे इससे उत्तरदायी बना सकते हैं, कैसे उनको? Okay, I have a detailed question, and my question is related to the first question. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो वकील हैं खासतौर से वो, and I wish colleague was here, but I do want you to hear it. My grandmothers, both my maternal and paternal grandmothers, were child brides. My mother was a child bride. So we are all illegitimate children of a woman, according to your law, of women who were in a marriage which was null and void, that we had, etc., etc. And if my grandmothers and my mother were here today, we would all be pointing fingers at them and saying, what horrible
did we not get married under 18 and 21? The government didn't come to us, the HRMN didn't come to us, no policy center didn't come to us. We just did it. What were the reasons why I didn't get married under 18? I got educated, I was in good health, all the facilities we needed we had, I could think on my own, and my parents by now had learned. But what were the factors? Education and economic development and general awareness. The people who are getting their daughters and sons married under the ages of 18 and 21, have their communities been provided education by the government or by us NGOs or by anybody? Have they been provided the kind of necessary components? And by the way, by 13 or 14, those people who are laborers, I mean the parents are laborers, they all work. These 13, 14, 15 children, they are working, they are earning, because they have been either trained as farmers or trained as potters or trained as whatever. And that is the time when sexuality is playing the biggest role. 14, 15, 16, where our hormones are jumping up and down. I was looking at the figures in the USA. How many million girls become pregnant under 18? So, my question is, can the government pass such laws without providing the basic minimum requirements? Otherwise, I find it very sad that you call these people to point fingers at them without, look at the condition of our schools. What kind of education are we giving? And you expect these girls to have agency. So, I have problems with this kind of a thing, and I really like to hear from the lawyers. What do you feel? And is it fair to the people to whom you do not provide the basic things which I had, because of which I can get married? Do I have the moral right to stand up and say, hey little girl, illegal, I can stop this, that and the other. So I have problems. So you have all the questions and all three of you need to answer. Can I start answering a few questions? So, I just want to take your question, the first one, which is in a way tied up with causes earlier. So, you said what are the causes? I think the causes, to some extent, Kamal has answered. Education, poverty, these are some of the basic causes. Of course, things are more complicated. A lot of people say that one of the causes of child marriage is also safety of girls. They would rather have the young girls married, and all of that. But I want to respond to the issue that you raised. It's such a prevalent social practice. Can you legislate it away? And I want to link it to your question where you said that if the government doesn't provide them education and other facilities, then can you prohibit child marriage? If you don't provide the facilities which are needed to ensure that they don't go into child marriage. And my response is, yes, you should legislate it away. You can have many social practices that are harmful and that are discriminatory. And just because they are social practices, we can't allow them to continue. And why is there a legislation? Legislation is there because there is a recognition that child marriage is harmful for young girls. I mean, it is both young boys and girls. But really the harms, and we see the prevalence more against younger girls in a larger measure. And yes, the other facilities like education, livelihood, or other forms of advancement are not there yet. But we have to keep asking for that. And we still have to ask to ensure that child marriage is also prohibited. I mean, I don't think we can ask for one or the other, we have to ask for everything. And
fundamental right now, but not that it's implemented, and we have to still ensure that we continue to fight to ensure that the right to education is also provided. I just want to answer a few questions you had asked that लड़कियों के लिए क्यों 18 साल और लड़कों के लिए क्यों 21 साल? Why that difference in age? I agree with you, there should be no difference in age. If you keep one age for marriage, it should be the same age for boys and girls. There's really no difference. And that is the criticism that many people have against the law, that why is there a different age? I think your second question that what about after 18? अगर 18 साल के बाद forced marriage हुआ है मर्जी के बिना, तो क्या वो सही है? No, that is also not acceptable. और हम लोग केसेस देख रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं हादिया केस में she had gotten married to her own wish, but her parents were trying to stop that marriage. We have other cases where adult women are forced into marriage by their families, and now they are trying to get away from that. So that is also a problem. Even after 18 and 21, there are forced marriages, which is also not, which also we have to oppose. So forced is forced, but under 18 is for the law addresses. But yes, we have to ensure that forced marriage above 18 and 21 is also addressed. And I think a couple of you asked about reporting child marriage. If you report it and the officers don't do anything, unfortunately the law has nothing which says what are accountability officers, and that's why they get away with it. There's no accountability in the government. The government should have something to account for, to say why is it allowed for child marriage to happen. I'll further answer your question about the causes of child marriage. So I think as Kamala was saying, education plays a huge part in it. Probably with my research hat on, if you look at the state of Bihar, which has the highest percentage of child marriage in the country, it's something like 42%, and you correlate that with female literacy, there's about 50% female literacy, and it's something that 40% of girls have never gone to school. HR recently published a book on child marriage, which is a compilation of a lot of our fact findings in several different states. And a lot of the girls we spoke to, they didn't even know how old they were. They were just taking a guess. All of them spoke about poverty, their family members pushing them to get married because girls are seen as a burden on the household, or you need to be pushed into the father's family, into the in-laws family. A lot of them spoke about cultural traditions. Even dowry has an impact on it, that the older the girl gets, the dowry increases, the family can't afford it, it's easier to get her married off young. And even women's safety, these notions of purity, honour, it's one less thing for a family to have to worry about if the daughter's married off. They're not worried about her running off with some boy. दोस्तों चूंकि हम लोग okay, last question and then we it's actually I just want to add. Doesn't matter what it is. The idea is that in terms of child rights litigation, if you look at the age of, I'm answering your question, if you look at the age of 18, it is a universally declared age unto when you cannot hold a child accountable for their actions, which is why we have the JLD Act. And now we're talking about an institution like marriage, which has an incredible amount of significance in a person's life. And you're saying that to be held accountable for an action, maybe forced, not forced, even if you think they had the autonomy, or if you think they had, if they're doing it out of their own choice at the age of 18, if we are not holding children accountable for a criminal act in the time they're 18, because we scientifically there's an understanding that at the age of 18 we cannot be fully held accountable for the actions. The child cannot be held accountable for the actions. So I think the same sort of logic applies to why child marriage is sort of. Okay, I won't get into a dialogue with you, so that will be unfair. I will come to you later. I think since we are running behind time since this morning, we
We were told to finish it in 50 minutes, and we are now finishing this session so that the next session can start and we can take some time. I thank all the three speakers very much for your help. And the next session. Thank you very much. तीन एजेंसी ने मिलकर
not like many other laws, which is to control, to put sanction. So it is different in that way. It is in that context a social law. What it does is, जो IPC और CRPC में जो धाराएं हैं जो अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज करती हैं, वो आज भी चेंज नहीं हुई है. ये 3 सेक्शन 314, 315, 316 आज भी स्टैंड कर रहे हैं. What is different today is अगर आप एनटीपी एक्ट में जो चीजें डिटेल हैं, अगर डॉक्टर्स उसको फॉलो करते हैं, then there is no criminal sanction. If there is any exception to abortion service delivery which is not in line with the provisions of the NTP Act, then the booking is under IPC. Then it is a criminal offence under IPC. So NTP Act as such doesn't assign any criminal sanctions. अगर आपने NTP Act के अंतर्गत काम नहीं किया, तो IPC की धाराएं लग जाती हैं. Basically NTP Act कहाँ से बना था? जब 1966 में they formed the Shanti Rashtra Committee, they realized that there are women who are going to need abortion regardless of how healthy their pregnancy is. And even in a scenario if the pregnancy is not healthy and the doctor needed to terminate, आप लोग ये बात सब जानते हैं कि अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी हो तो भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में जाएगी. अगर हम सोशल रीजंस ना भी देखें तो मेडिकल रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से टर्मिनेशन रिक्वायर्ड हो सकता है. मेडिकल इमरजेंसी कभी भी हो सकती है ना प्रेगनेंसी में, तो उसके लिए भी पहले प्रोविजन नहीं था. सो बेसिकली एमटीपी एक्ट जो है, it provides protection to a medical provider who would have otherwise been penalized under IPC. This is very important for all of us to understand because we are talking about rights. Abortion in India is not a right. आपके एजेंडा में भी मुझे बोला गया है abortion rights पे बोलने के लिए हमारे देश में महिला के पास गर्भ समापन करवाने का अधिकार नहीं है. We have a law, but that does not entitle women to a right. So this is also something I want you to keep into account. Again, to give you a snapshot, 1.5 करोड़ abortion हमारे देश में हर साल होते हैं. 5 दशक होने वाले हैं abortion को लीगल हमारे देश में. फिर भी असुरक्षित गर्भ समापन की वजह से 8% महिलाओं की मृत्यु हो जाती है. अगर हम पाई चार्ट देखें कि causes of maternal mortality, unsafe abortion is even today the 3rd largest cause of maternal mortality. This is something for us to really think, क्योंकि abortion is usually a
unsafe abortion. Even when abortion is legal in our country, there are training providers available, and that's what we need to think. So what is it that the MTP Act does? The MTP Act legalizes abortion in India. जो IPC और CRPC की 3 धाराएं हैं, उनके लिए एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है. Decriminalizes the abortion seeker. वरना अगर कोई महिला भी अपना abortion करा लेगी तो उसके ऊपर भी criminal sanctions थे जो अब नहीं है, and makes a conducive environment for provision of abortion services. So there are 3 components broadly that the MTP Act covers. When, that is, कब हम एक महिला को गर्भ समापन सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, कौन प्रदान कर सकता है और कहाँ ये सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, ये 3 चीजें हैं जिन पर मैं आपसे आज बात करूँगी. तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके हिसाब से हम when can a woman be provided abortion services? There are certain conditions prescribed under the Act, and I understand that I guess I am informed the only numbers in the fall. Yeah. So आप लोग तो मैं तो लॉयर नहीं हूँ, आप लोग लॉयर्स हैं, तो आप लोग बताएं कि कब महिला को गर्भ समापन सेवाएं प्रदान की जा सकती है. लॉ में कुछ प्रोविजंस हैं जिनके अंतर्गत महिला को गर्भ समापन सेवाएं प्रदान की जा सकती है. What are the conditions under which a woman can be provided abortion services? Yes, please. In case of rape, okay. In case of contraceptive failure, I will come to that point. Okay. Mental retardation. Okay. What else? Yeah. Please, this threat to the life, in case of the child, this threat to the life of the mother if the pregnancy below 20 weeks, there is initiation of later. So in case there is a threat to her physical health, right? Or you're saying her life, whether it's a matter of life and death, okay? Anybody else? Because there is a complication, a genetic complication. In case there is a genetic complication, in case there is a fetal abnormality, diagnosed fetal abnormality, okay? आप कुछ कहते हो? Fetus level कोई abnormality है, ठीक है? अच्छा, you said a point about contraceptive failure. Does the point of contraceptive failure apply to all women? Married women. What about the other provisions under the MTP Act? Do they apply to all women? Or only married women? All of them. Sorry? Rape सबके लिए apply करता है, बाकी married women के लिए apply करते हैं. All of them. ठीक? All of them. और कोई कुछ कहना चाहेगा? If she is a child, okay, what about the fact that she's a child? If she's a child, then under any condition she can be given an abortion, is it? We have discussed that there is no right or wrong answer at this point in time. I will come back with the answers. See, why am I having this conversation? Is to make you all also talk. हम लोग और ऐसे ही conversations हम जब डॉक्टर्स के साथ में काम करते हैं हम तब ही करते हैं. क्यों ये बात करना जरूरी है कि अगर हम लोगों में confusion हो सकता है और I think आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ में पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल भी मिल चुकी हूँ. अगर उसके बावजूद भी हमें confusion हो सकता है. I'm not saying everybody has a confusion. Many of you would know the right answers. पर हम जब इसमें डिटेल में बात करने लगते हैं तो we realize 8 sections का ये एक्ट है. Unlike a lot of other laws which are very thick, this is a very very small law. But there are still things that we are not very sure of. So that's why we need to realize that amongst us there can be confusion. Imagine what women will feel. उन्हें तो कुछ इन सब चीजों के बारे में जानकारी ही नहीं है ना. So we need to make sure that we provide that information to them. So what does the law say? To your point, if the continuation
pregnancy causes mental or physical injury. आपने बोला that there is a risk to her life. What the law says is that if it can cause injury to her physical or mental, it has a larger interpretation than just risk to life. Okay, if continuation of pregnancy can cause injury to her physical or mental health, and it is not for a psychiatrist to decide that it is going to cause mental health injury to her. Her consulting doctor at that time is talking to her, realizes that if this pregnancy is continued, it will cause her a lot of mental stress. That can be a reason. आपको एक psychiatrist से certificate नहीं चाहिए कि उसको कोई diagnosed mental illness है. As you were saying, pregnancy due to rape. ठीक है, pregnancy due to rape, it can be terminated. There is a provision under the Act for termination of pregnancy in case a woman has been raped. Contraceptive failure, as you said, and fetal abnormality, as one of you said. Yes, as you said. Now, what happens is the 3 points continue with the risks of physical and mental health, or mental health rape, or fetal abnormality. These are 3 clauses that are applicable to all women. There is no discrimination under the NTP Act for married or unmarried. The only provision of contraceptive failure, that is the only provision that applies to only married women. I have no idea what people in 1966, when they were part of the Shakti Lakshman Committee, what did they have in mind when they thought that contraceptive failure can happen only among married couples. I don't have an answer to that. So the other clauses, they were very liberal, but why did they make contraceptive failure applicable only to married women? Only they know. I wish I could go back and ask one of them. So, this is something we need to remember, and that is also something that will continue to be amendments as we go forward. Where can a pregnancy be terminated? There is again a very liberal framework that at an hospital that is maintained by the government. Basically, subcenter को छोड़ के बाकी सभी सरकारी संस्थान, चाहे वो PHC है, CHC है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर एक प्रशिक्षित प्रदाता है, वहाँ पर समापन सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं, या ऐसी जगह जो प्राइवेट सेक्टर में है पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी द्वारा अप्रूव है. और इससे रिलेटेड कुछ मटेरियल हम लोगों ने शेयर किया था, तो शायद आपको पेनड्राइव में आपके बैग में मिला होगा. नेक्स्ट टाइम कौन प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकता है? मैंने आपको बताया था ना, where and who, right? So who can terminate a pregnancy? So the
father, mother, brother, sister, किसी और का consent नहीं required है. The NTP Act says that only the woman's consent is required for termination of pregnancy. However, in case the girl is below the age of 18, as you were talking about minors, or if the woman is mentally ill, mental illness doesn't mean that your pregnancy must be terminated. Right? In case the woman is mentally ill, then you require guardian's consent for termination. Just her consent is not enough. But this does not mean that any woman and every woman who is mentally ill, her pregnancy must be terminated. No, it doesn't say that. The decision lies with her and her family. So, for somebody who is below the age of 18 or a woman who is above the age of 18 but is mentally ill, there is consent that is required. And this consent can be, we've kept the definition of consent fairly liberal in this Act. Consent can be by anybody who is above the age of 18 and who has the ability to care for the woman when she is undergoing the procedure. So please remember that this is also not a binding that a family member has to obey. Section 5 is one section in the law which provides an exception. See, there could be a situation where इस सप्ताह के अंदर termination नहीं हुआ पर कोई medical emergency हो गई, जैसा हम पहले बात कर रहे थे. In case there is a need to save the woman's life beyond 20 weeks, then Section 5 provides that exception that you don't necessarily require a period of providers and a termination can be conducted and information must be provided. So it's not that after 20 weeks if there is an emergency, termination can't be done. It can be done but only to save her life. In 2002, there were some amendments that were done to the NTP Act. What did it basically do? पहले जो private facilities का approval था, that used to happen at the state level. That was decentralized to the district level. What I mentioned was the district level committees. The word used in 1971 was lunatic. Now it is called a legally ill person, and there were some penalties that were imposed. So I can just briefly tell you that what is the function of the district level committees. That this is a committee that is formed at the district level, which is chaired by the chief medical officer, and it has 3 to 5 members. Their job is to receive the applications from private facilities and give them approval. I get asked this question very often कि DLC कितने समय के लिए approval दे, उसको सब list मिलनी चाहिए. Please remember that the DLC is supposed to provide as many facilities as possible for provision of abortion services. The idea is to make services readily available, not to pose restrictions. Unlike the PCPATT Act and many other acts, जहाँ पर tenure और ये सब चीजें defined होती हैं. Once a private facility is approved, it is approved for life unless the CMO finds some reason to believe that hygiene factors or safety factors are not being kept in mind. So the idea is to make sure that abortion services are readily available. So since we are talking about why women and how women can get abortion services, we also need to understand it from a woman's perspective. So a couple of years ago, we did this research in Madhya Pradesh where we spoke to some women who had come seeking post-abortion care. And from among the women who had come to these hospitals seeking post-abortion care, we asked them their experience of having an abortion. So we realized that from among them, more than 50% had tried to start an abortion process at home. Many of them were unsuccessful and reached out to a second provider, then a third provider. So what happens is, the reasons why she wanted to start an abortion at home was she did not want to talk to anybody about it. She didn't want to spend too much money on it. She didn't know where to go, and she didn't know who to ask, right? So all these reasons that she wanted to look at, they were all in a way proved futile because she had to go to multiple providers. What usually starts at about 8 weeks of pregnancy, by the time she reached the hospital for final
open it out to the public to comment if she should have an abortion or not have an abortion. Now this is such a personal experience that could happen in anybody's life. But is this really something that we want out there for people to debate on and pass value judgments? Maybe she should not have an abortion. Whatever are people's reasons, there are so many stigma and biases that are there, and which is what we need to remember that when we talk about abortion as a word, there are different interpretations at the policymakers level, at the implementing level, at the level of providers providing services, even among media. And in all of this, one person we forget is the word. And that is what we need to remember, that it is she really who is going through that, and we need to provide a conducive environment for her. So, keeping into account all of this, in 2006 discussions for amendments to the NPPI started. What were the things that needed to be amended? That if we continue with the same patterns and providers, that is your obstetrician gynecologists who put in Desh mein around 20,000 men and the trained medical officers, we'll never be able to provide abortions for the 1.5 crore women. So we need to expand the provider base. What else do we need to do? We need to make access simpler. We need to make abortion services available on request. We need to increase the upper gestation limit. You would have seen, and you yourself would be aware of all the cases that have recently gone to court for reasons of fetal abnormality or delay. There is a need to increase the upper gestation limit. So the proposal was that for reasons of fetal abnormality, there would be no upper gestation limit, and termination would be allowed at any point during the pregnancy, because that continuation is a risk to the likelihood of the fetus surviving after birth, or even the mental agony for the woman is unmerited. There was another provision of increasing the limit to 24 weeks for vulnerable categories of women, which would include women who been raped or women who have other vulnerabilities, and basically adding more calories. It was a very well thought through amendment, which was put in the public domain in 2014, and ever since that we've all been waiting. There has been back and forth. We've heard that the Prime Minister's office has said that there is expansion of provider base cannot happen, they are not permitting that. But right now nothing is in the public domain. So as far as we all are concerned, the NPP Act currently stands as it is. These are all proposals which we all need to support, but we have to wait to see what the Parliament finally decides on. And just two more slides to talk about, when we talk about the NPP Act, very often it is conflated with the BCPNDT Act. I just wanted to very briefly touch upon the fact that NPP Act is a medical law. It is to make sure that abortion services are available, and it is governed by the Ministry of Health and Family Welfare. It is to provide for services. BCPNDT Act is a very different act, which is to check disclosure of sex of the fetus. It is not for curbing abortion services, and we need to keep these two apart. And we were talking about child marriage in the session prior to this, and there was a mention of POCSO. We need to also remember that when we talk about NPP Act, we have to remember that there are young women who are going to need abortion services, and as she was mentioning that now below the age of 18, even among married couples, it is considered to be rape. So for a woman who is below the age of 18, she comes to seek abortion services, even though it is illegal under the NPP Act, and all she needed was her guardian's consent. Now there is mandatory reporting. And POCSO just says mandatory reporting, and you could go ahead and provide services. But the interpretations are so telling. There was recently a case 2-3 weeks ago in Gurgaon where the Child Welfare Committee under the Juvenile Justice Act, they jumped up and said that no, the doctor was supposed to wait for us to take action. How could they provide an abortion? And they have, in a way, gone beyond the law. Now, I understand that that is an incorrect interpretation of the law, and even to also sort of talk about that. But we need to understand that there are, as it is, so many barriers for women's access to abortion services, and we shouldn't conflate these laws and add those to that. So this is where I'm going to stop and hand over to Vaz and Sneha. And if you all have any questions at this point, or later
this was a lovely presentation, and I think everybody here has a basic understanding of what the law is in India at this moment. I would start with a little bit of experience that we had when we started these cases in Supreme Court in 2016. So the first case when it went to Supreme Court challenging the constitutionality of the Act itself was back in 2008 when a gynecologist, Dr. from Bombay, he came to us with the case of a woman who had suffered with some complication in her pregnancy, had gone to the doctor denied an abortion because it was post-20 weeks, went to Bombay High Court, where Bombay High Court said that we cannot allow it because it is post-20 weeks. She eventually faced a miscarriage. So this is, I think, that was the beginning of when somebody started questioning the viability of the law itself. That case is still pending before the court. And then in between in 2016, we went to Supreme Court with a specific case of relief for a 24-year-old lady victim who was pregnant and was at 24 weeks. And she wanted an abortion because carrying that child itself was a lot of trauma for her because she was pregnant from weight. And apart from that, the child was also suffering, the fetus was also suffering from an abnormality called encephalitis, which meant that the skull bone was not formed. जिसका ये मतलब है कि अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी करती हैं तो वो बच्चा कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जब ऐसे केसेस शुरू में जाने लगे उसके बाद 2017 में कुछ हमने 15 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हम लेके गए जहाँ पे हर केस के साथ एक नया सवाल खड़ा होने लगा कोर्ट में। शुरू में 2-3 केसेस थे जो सिमिलर थे पहले केस से और हमें हर 2-3 केसेस में कोर्ट से अच्छा ऑर्डर मिला। Court ने कहा yes, we understand that in situations like this, where there is no chance that the fetus could survive childbirth, he will allow an abortion. And हमें लगा कि okay, the court was opening up to idea of to allowing late abortions. But then 3-4 cases के बाद, somewhere in March or April 2017, we got a case where the fetus was suffering from Down syndrome. Now Down syndrome is an abnormality where just post-childbirth would have severe mental and physical abnormalities. अब वो कितनी मात्रा में होगा वो childbirth के बाद ascertain कर सकते हैं. But the possibility of the child surviving was 50%. ऐसे situation में कहीं ना कहीं वो debate था judges के साथ कि क्या इस केस में हमें allow करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए. What is the argument? So ये case आया and then similarly दूसरा case आया. And court ने and medical boards ने दोनों cases में deny कर दिया कि ऐसे cases में क्योंकि there is a 50 to 75% chance that the fetus would survive post childbirth हम allow नहीं कर सकते abortion. तो उस जब ऐसे दो cases हमारे साथ आए तो हमें realize हुआ कि हम जिस तरीके से cases को assertive कर रहे हैं शायद वो कहीं ना कहीं resonate नहीं कर पा रहा या वो understanding को share नहीं कर पा रहा judges के साथ. तो पर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जजेस के लिए भी हमने केसेस को 3 टाइप के केसेस
जून में एक केस आया हमारे पास जहाँ पे दिस पेटिशनर फ्रॉम कैलकाटा 26-27 वीक्स की प्रेगनेंसी थी एंड द फीटस वाज सफरिंग फ्रॉम हार्ट एब्नॉर्मलिटी, जहाँ पे उनका हार्ट का एक पार्ट प्रॉपर्ली फीटस का काम नहीं कर रहा था. एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम द कोर्ट recognized the fact that not just the viability of the fetus is important but also the condition in which the child, the condition of the standard of life the child would have. क्योंकि जैसा वीडियो में डिस्कस किया, अगर हम एक्ट की तरफ देखें सेक्शन 3(2)(b), एक्ट कहीं भी फीटस की वाइबिलिटी की बात नहीं करता. ये क्वेश्चन है ही नहीं लॉ में कि अबॉर्शन अलाउ करना चाहिए या नहीं अलाउ करना चाहिए. वो इस बात पे डिपेंडेंट हो कि फीटस जो है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा. सिर्फ दो गवर्निंग फैक्टर्स है. ये क्या इस प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएशन से मदर को कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है फिजिकल या मेंटल, एंड दूसरा है if the continuation of the pregnancy is causing severe physical and mental handicap to the child or the fetus. तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा और क्लियर हुआ एंड जजेस ने वो एक्सेप्ट किया कि हाँ वो गवर्निंग फैक्टर होना चाहिए. एंड पहली बार 26 वीक्स में हमें एक अच्छा ऑर्डर मिला जहाँ पे कोर्ट ने इस राइट ऑफ बॉडी दैट इन सच केसेस द वुमन शुड हैव द राइट टू चूज एंड हर हेल्थ इज सुप्रीम ओवर द हेल्थ और द राइट ऑफ द अनबॉर्न फीटस. ये चीज उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये ज्यादा जरूरी है और इस चीज पे इस मुद्दे पे बात करना भी ज्यादा जरूरी है. फिर हमारे पास एक दो केसेस आए जहाँ पे ये सवाल था कि 24-25 वीक्स तक तो ठीक है, लेकिन जब भी फीटसेस 26, 27, 29, 30 वीक्स पे हो, क्या उस वक्त भी अलाउ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बॉडी की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका होता है फीटस में उस टाइम पर. उसी दौरान हमारे पास एक केस आया बॉम्बे का जहाँ पे एक 13 साल की बच्ची was pregnant because of rape and उनका gestation period 30 वीक्स था. हम कोर्ट में गए, बिल्कुल इमीडिएटली हम कोर्ट में गए और उससे कुछ ही दिनों पहले चंडीगढ़ वाले केस में कोर्ट ने मना कर दिया था. तो हम भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हमारे ख्याल में भी थी कि पता नहीं कोर्ट कैसे क्या करेगी. एंड काफी ज्यादा ऑपोजिशन भी आया था कि गवर्नमेंट काउंसिल्स का ये कहना था या उनके साइड से भी डॉक्टर्स थे जिनका ये कहना था कि फीटस तो नॉर्मल है, फीटस में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है. एंड 31 वीक्स हो चुके हैं, 4-5 वीक्स या 6 वीक्स में डिलीवरी हो जाएगी, तो रहने दो, लेट हर कंटिन्यू द प्रेगनेंसी. देन द क्वेश्चन वाज, डू वी एक्सपेक्ट a 30-year-old to become a mother and give birth to a child? Because a situation like this pushes her away from the normal of life. And apart from that, एक 13 साल की बच्ची अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है उसका, बिकॉज उसकी बॉडी डेवलप नहीं है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं है, उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं है, और सिर्फ इस प्रेगनेंसी की वजह से उनकी जान को उतना ही खतरा है जितना कि बच्चे की जान को है. एंड अगर उनको इस मोमेंट पे हाँ गॉड ये भी कहते हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे और उन्होंने प्रेशराइज करते कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो, जरूरी नहीं कि बिकॉज हमें उस टाइम में लगता है कि अच्छा देयर इज नो एब्नॉर्मलिटी टू द फीटस, कि वो बच्चा जब पैदा होगा तो उस बच्चे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 13 साल में उस जो लड़की है उसका शरीर भी इतना डेवलप नहीं है कि वो एक फुल ग्रोन और हेल्दी बेबी को जन्म दे सके. तो जब ऐसी चीजें कोर्ट के पास आई तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी लगा कि इस मुद्दे पे थोड़ा सोच-विचार होना चाहिए. और उस केस में भी 31 वीक्स में कोर्ट ने बोला इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करिए एंड विदिन 24 आवर्स उनका अबॉर्शन हो जाना चाहिए, बिकॉज continuation of this pregnancy is a risk to her life. It is not about the condition of the fetus but the condition of the mother, the pregnant girl in this case. उसके बाद हमने कई केसेस करे जहाँ पे कोर्ट कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस में नजर आया है, जहाँ कोर्ट अब 31-32 वीक्स तक भी fetal abnormalities के केसेस में ऐसे कोई केसेस में नहीं जहाँ पे एक इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि फीटस सर्वाइव नहीं करेगा, बट उन केसेस में भी जहाँ पे कोर्ट को ये लगता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो फीटस का होगा उस गर्ल को बहुत ही खराब होगा या वेरिएबल होगा, या बिकॉज ऑफ दैट इट विल अफेक्ट द मदर्स लाइफ आल्सो इन physical manner or in a mental health manner. In those cases कोर्ट उस चीज को आइडेंटिफाई कर रही है, उस चीज को समझ रही है. ऐसे केसेस में जो पिटिशनर्स हैं हमारे, उनको हक होना चाहिए चूज करने का कि वो अबॉर्शन
मुद्दे पे और ज़्यादा ओपन की बात कर रहे हैं, बिकॉज जब हमने शुरुआत करी थी तो कहीं ना कहीं हमें ये रिएक्शन मिला था कि अच्छा मतलब ये एक राइट है। इस अबॉर्शन को, जैसा नेता ने कहा, इंडिया में अबॉर्शन एक अधिकार नहीं है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जजेस के साथ भी नजर आ रहा था कि उस चीज़ को रिकग्नाइज करना कि अबॉर्शन इज अ राइट, wanting or not wanting to have a child is also a right। कि कहीं ना कहीं it's an obligation, कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एज एन ऑब्लिगेशन भी देखा जाता है कि अगर महिला है, मैरिड है, तो she wants a child, और वो क्यों अबॉर्शन कराना चाहेगी, क्यों, क्या रीजन है कि अबॉर्शन कराना चाहेगी, जिसकी वजह से भी ज्यादातर केसेस में लोग इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। तो वो चीज़ आई थिंक कहीं ना कहीं अब और ज्यादा ओपनली डिस्कस हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग एवं हर एक सोसाइटी के हर एक स्टार्टर से लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं। एंड आई थिंक टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट जो इस अबॉर्शन एक्ट का जो अमेंडमेंट आ रहा है, उसको जो पुश मिल रहा है थोड़ा बहुत, आई थिंक दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट। एंड 2014 वाले अमेंडमेंट के बाद 2017 में जो प्राइवेट मेंबर बिल भी है उसमें भी ये चीज रिकग्नाइज करी गई है कि उस चीज को प्रायोरिटी पे भी पुश करना जरूरी है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग अब कोर्ट्स में आ रहे हैं एंड केसेस बढ़ रहे हैं। अब यही है कि हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये अमेंडमेंट पास हो जाए ताकि हर एक इंसान को कोर्ट की तरफ ना जाना पड़े, क्योंकि एक साल में हमें कुछ केसेस भी होंगे टोटल, बट जहाँ साल में 1.5 करोड़ लोग अबॉर्शन करा रहे हैं, इस केसेस कुछ भी नहीं है, विच मीन्स कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस बारे में बात करनी है। जो केसेस हम इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कर भी रहे हैं वो 1 या 2 स्टेट से हैं, एंड उन स्टेट से कहीं ना कहीं क्योंकि 1 साल से जो कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन चल रहा है हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के साथ, लोगों के साथ, तो वो मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है, जो 1 या 2 स्टेट्स में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स भी ओपनली इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन दूसरे स्टेट्स में भी हो ताकि सेंसिटाइजेशन बढ़े, लोग समझे कि अबॉर्शन सेफ है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो डर रह सकते हैं कि अबॉर्शन बहुत अनसेफ है, स्पेशली अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन है, लेट अबॉर्शन से अनसेफ है, अगर अभी करवाएंगे तो अगले प्रेगनेंसी में दिक्कत है, बट विच इज नॉट ट्रू एंड दैट इज नॉट समथिंग आई थिंक वी हैव सीन। हमारे साथ संदीप है एंड इनकी वाइफ वी डिड हर केस लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट में 29-30 बीच में हमें अबॉर्शन का ऑर्डर हमें मिला था। शी वाज 21 years old and they recently had a child। अबॉर्शन के बाद शी वाज अगेन प्रेग्नेंट एंड दे रिसेंटली हैड अ बेबी। ना उनको अभी माय बेबी को अपना आई थिंक ही डिस्कसेस। सबको नमस्कार, मैं महाराष्ट्र में से आया, मेरा नाम संदीप यादव है। हमारे केस में ऐसा हुआ था कि बच्चों को जो प्रॉब्लम दिखा था ब्रेन में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे अकेले ये चला था, चेकअप चला था। तो जो हम चेकअप के लिए जाते थे, मेरी बेटी जाती थी चेकअप के लिए वैसे, तो जो है सोनोग्राफी का डेट तो पूरा के तीसरे टाइम का जो होता है मालूम पड़ता है 20 वीक्स के पहला, तो मैंने दिया नहीं। तो उसके बाद जो आता है 20 वीक्स के दूसरे दिन या तीसरे दिन आया था, तो उसमें मालूम पड़ गया था कि बच्चों के ब्रेन में प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये था कि जो नदी गया है पानी का, तो वो गाढ़ हो गया, तो गाढ़ बढ़ने से वो ब्रेन दब रहा है, तो पूरा दब के सर बड़ा हो सकता है या जैसा पगला सा निकल आ सकता है। तो 20 वीक्स होने के बाद मालूम पड़ गया, तो हम गए डॉक्टर के पास, आपने बीच वाला दिया नहीं था, चेकअप के टाइम आए थे तो सोनोग्राफी का डेट दिया नहीं था। तो मेरी मिसेस बोलने लगी, तो पहली बात तो पेशेंट जहाँ जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो डॉक्टर उनका बात करने का तरीका वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो पेशेंट को दर्द बताता है तो वो सुनते ही नहीं, जो हम बोले वैसे गवर्नमेंट डॉक्टर बोला। तो उसके बाद जो सोनोग्राफी हमने निकाला, तो गवर्नमेंट ने कुछ संस्था को दिया, चिकित्सा संस्था को दिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी छुपा रहे थे कि डॉक्टर का नाम क्या है।
7-8 दिन के बाद आइए फिर चेकअप करेंगे। तो मैं बोला सर इसमें क्या प्रॉब्लम, मतलब ब्रेन में प्रॉब्लम है तो हो जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है, वो कुछ टेंशन वाला बात नहीं। तो मैं दूसरे प्राइवेट डॉक्टर के पास तो बोलता था ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आपके 20 वीक्स हो गए। तो मैं मेरे मैडम के पास गया जहाँ मैं काम करता हूँ ड्राइविंग का। तो मेरी मैडम को बोला उनका नाम है आलिया सानी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उनके फैमिली ने भी। और वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा तुरंत और सोनोग्राफी निकाला तो मुझे मालूम पड़ा था 20 वीक्स हो गया और ऐसा प्रॉब्लम है। मैं मैडम को बोला, डॉक्टर को बोला प्रॉब्लम है तो इसको कुछ सॉल्व हो सकता है, तो वो बोले सॉल्व तो नहीं हो सकता है, तो आप उसको दवाखाना लेके जाए। मुझे गवर्नमेंट डॉक्टर ने ऐसे बोले थे कि आप उनको जवाब दो तो इसका जो है ट्रीटमेंट हम करते रहेंगे। पर मैं बोला ठीक है, मैं तो उसको दवाखाना लाते रहूँगा पर वो ठीक होएगा वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हर 3 महीने बाद वो जो पानी का नली है वो चेंज करना पड़ता है और वो खत्म जाएगा। वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो लड़का ऐसा चल सके या दिमाग से कुछ नहीं, पूरा हार्मोन ऐसा था। तो हम बोले तो हमको तो हैप्पी बच्चा चाहिए। तो बोले ठीक है क्या करेंगे, तो हमने निर्णय लिया कि ऑपरेशन करेंगे। तो ये मालूम नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है, कोई तो पता नहीं कि इधर जाके प्राइवेट में या गवर्नमेंट में जाके होता है डिलीवरी। और जो हमने डॉक्टर लिखित था साहब के पास, उन्होंने कहा ये सब करेंगे तो उसमें वो डॉक्टर जो है डिलीवरी करने वाला वो आपको गारंटी नहीं देगा कि आपकी बीबी बच सकती है या नहीं, या अगला बच्चा आपको होगा या नहीं, क्योंकि वो आधे घंटे में कोई झटपट काम निपटाना चाहता है, आपका पैसा कमाना, उसका प्राइस 50,000 के आगे। और गवर्नमेंट के पास ये भी नहीं है, सोनोग्राफी की मशीन भी नहीं है, वो भी उन्होंने संस्था को दिया है कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राइवेट में तो सोनोग्राफी की इतना प्राइस है 3 से 4,000 तक प्राइस है, तो हर तक कितना 7-8 तो लगता ही है सोनोग्राफी। तो आप देखिए वो सबसे कितना होता है। तो ये कि जो अपना भारत में है तो 20 वीक्स के अंदर तो और उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे और सबको इधर आगे आना चाहिए ये करने के लिए, कि चुपके से करें तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मैं बहुत डर रहा था, मेरे घर वाले ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, पर मेरे साथ निखिल दादा सर डॉक्टर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मैडम और मैं जहाँ पे काम करता हूँ आलूजा सानी, उन्होंने इतना मुझे ये किया, बहुत मदद किया। तो मैं मेरे घर वालों मेरे बाजू वाले लोगों ने कोई ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं कि ये होगा नहीं होगा, ये होता ही नहीं है, पर मेरा विश्वास था मेरे साथ इतने अच्छे आदमी ये सब है तो मैं घबरूंगा नहीं और मुझे ये न्याय मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और थैंक यू। अब तक पूरा पैनल स्नेहा मैम का पूरा पैनल के लिए मैं थैंक्स बोलता हूँ और निखिल दादा सर के लिए, और वो बॉम्बे में भी प्रॉब्लम है कि वो यहाँ तक केस था पैनल तक दे देते और उनका मन से थैंक्स होता है। Also in the context, I ran up a case that we did in the Bombay High Court, where actually the bill was discussed in the judgment. The judgment was passed on the basis of what they thought the purpose of construction of the Act as it exists today. So what they did was basically Section 5 of the Equity Act allows for an exception. Under Section 3, there's a ceiling of 20 weeks after which an abortion cannot be done. But Section 5 carves out an exception, and it says it's immediately necessary to save the life of pregnant women. Then the ceiling as set out in Section 3 can be not considered. So basically what the court did is they constructed Section 5 in a purposive manner to further what the mandate of the Act is to allow a woman to have an abortion. They implemented Section 5 in such a way as to mean that even if there is a risk, a serious psychological risk to the woman, then that the contingencies as set out in Section 3 must also apply when a doctor is allowing an abortion to be done under Section 5. So for instance, if there is serious fetal abnormality, if there is a grave risk to the mental health
the bill also increases the CA to 24 weeks, and also unlimited. Like in the case of fetal abnormalities, it's unlimited. In case of 24 weeks is for rape, it is for other vulnerable categories of women, whether it is single women, minors, women who get raped, or women with disabilities. That list is treated fine. Right. So in a very interesting way, we're taking into consideration what the bill sort of provides, and the judgment is that is inconsistent with that. Therefore, they apply Section 5 in allowing abortion to be done in the case of fetal abnormality. So what does this basically in effect mean? Does it mean that now going forward, a doctor can generally apply Section 5, or does the case still need to come? There is some confusion about that. We weren't able to understand whether that particular doctor would directly be able to use his own discretion to be able to allow an abortion under Section 5. It's still from the area as far as that is concerned. But since we can ask for clarification from the court. Sorry. Since we're running a little low on time, we can open the floor for questions. If anyone has any questions, We will ask later. We will ask that later. Yeah, anyone from the audience to ask any questions? आपने कानून कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश दुनिया का छठा देश है और पॉपुलेशन की दृष्टि से आप लोग जानते हैं तो वहाँ पर कोई भी नंबर अगर बढ़ेगा या घटेगा तो देश के ऊपर और प्रदेश के ऊपर और दुनिया में डिपेंड करेगा। 1.5 करोड़ लोगों की अभिभावना बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 22.5 करोड़ लोग रहते हैं इस समय। उत्तर प्रदेश में सेल्फ निवासन की बातें आज के तारीख में सरकारें भी नहीं कर रही, सरकार के लोग नहीं कर रहे, डिस्ट्रिक्ट लेवल है ऑफिसर नहीं कर रहे हैं, कम्युनिटी में कोई स्टिग्मा है ही। हमारे देश के सेक्टर के लोग ही उस पर कम बात। इसको लेकर के हमने पिछले साल 20 में एक अध्ययन और अध्ययन की रिपोर्ट ने चैनल को भी भेजा था और लोगों ने उसे 20 जिले के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स उनके साथ शेयर किया, स्टेट पर शिक्षा और आईपास के लोगों के साथ शेयर किया। लोगों को आवश्यकता है, अब इस पर कौन बात करें? वो लोगों की स्थिति 22 सप्ताह कर रही है, 12 सप्ताह 20 सप्ताह की बात होगी तो बात कोर्ट में, लेकिन लोगों की नीड है, उस नीड को फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए? उनकी जब बात करें तो कहें कि हमें आवश्यकता है, लेकिन ये सेंसेस कहाँ है? या तो 50 किलोमीटर पर जहाँ पर उनका खा सकता है, या कोई प्राइवेट अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है, महिला प्राइवेट अस्पताल में जा नहीं सकती है, तो महिला की तरफ वो CSC पर कहीं उपलब्ध नहीं है। खाली की बात करें हर जिले में 4 खाली बनाए गए, वहाँ पर सेंसेस नहीं है। अब इसके लिए मुझे लग रहा है कि कोई उपाय करने की आवश्यकता है। इसके लिए हो सके तो क्लियर करने की आवश्यकता है, कि लोगों को उपलब्ध हो सर्विसेज अपने CSC लेवल पर, और एक और डिमांड है क्योंकि लोगों का जान जा रहा है, लोगों की खेत बिक्री चला जा रहा है, लोगों का जीवन बिक रहा है, लोग मर रहे हैं। जो मर रहे हैं तो आप 1.5 करोड़ काउंट कर लें, लेकिन जो महिलाएं असुरक्षित जन्म से गुजर रही है उनके बाद उनके ऊपर जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जिसको लेकर के वो 4-4 महीना 6-6 महीना सफर कर रहे हैं, उसके बाद नहीं जीता क्योंकि तो गिनती नहीं। तो मुझे लग रहा है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। Now you mentioned abortion under NPT Act can be done without consent of anyone, but then it is overriding the provision of Hindu Marriage Act, where it provides as a ground of divorce if it is without the consent of the husband. So which act will override in this regard?
sometimes these cases are in combination. So how much time does it take that you as lawyers and the company is taking that petition forward? How do you handle those situations? I'll quickly answer Nicole's question. So, luckily, in these cases, because the court understands that it's a time-sensitive case, so ideally the court takes about 1 week to give the final order. So, we as lawyers, because the cases are from different states, we take about 4 to 5 days to file the case because we draft, get the affidavits and everything. So, the idea is within 2 weeks, 2 weeks is the standard time for getting the case to filing it and then getting an order. This is roughly 2 weeks. If it is done, it's pretty short. And the courts are sensitive, so they will review the case comes to us today. We ask the medical board on the same day to assign within 2 days, and then in the next 2 days you get the report and you pass the order. So it's ideally 5 to 7 days. To your question about the conflation with the Hindu Marriage Act, see what the MTP Act says is that the consent of only the woman is required. What it is in a way trying to do is to establish the ability of the woman to exercise her agency. Now, in that way, I could have listed like 16 other acts to which MTP Act conflates things. PCP, MTP and MTP are again different, but there is a conflation that happens at implementation. POXO, as Mohammed already raised the point, that young women are being denied services because mandatory reporting is required. But MTP Act says that if you experience rape, regardless of your age, you come, you get a service. Now, MTP Act allows for termination. Hindu Marriage Act, there is an interpretation of the Act which says that yes, that was legal there, but here it is required that you consent with each other for everything. And in one case, it was considered as a non-prolate, but recently there was another case, I don't exactly remember the details of the case, but where the law did sort of uphold the woman's right to take her decision. It only has a provision of her right to be able to exercise her decision. So we have to remember that if we keep layering the laws, then we will probably not be able to move forward at all. We have to see what is the essence of the reasoning and we want to take that forward. May I just add to what she said? HME per se doesn't say that it's a ground for divorce. It's an interpretation of cruelty, as she said. But then again, that's a very patriarchal way of interpreting cruelty. The way some of the judgments, older judgments say that a woman doesn't leave the husband's friend, doesn't cook for him, goes to a mother's place without his consent, works against his consent. They are all the times have to change their thinking, we all change that. But so that's the answer to your question. There is no possible conflict. Words for the act. It's an interpretation how the judges say that this is cruelty, this is not. I just want to say that as a trans person, you are also under the trans umbrella intersex people also. I think before the intersex variations, they are genuinely proven that like intersex people are different. Different beyond they can be. I'm not audible. No, there's a lot of echo. So your voice is not clear. आप माइक हटा के बात कर लो क्योंकि echo की वजह से समझ नहीं आ रहा. अभी हाँ. My question is like being a trans person under the umbrella of trans person, there is also an intersex variation variant people. So they are also identified at some levels as trans people only. So in the world, like it's now seen in many cases that intersex features are avoided. So being an activist and lawyers, so what is your future plan of actions regarding intersex features avoided? Do you have any more questions? Can we take the questions first and then we'll answer all of them? That's the question. I think that's the last step. Allow the last one. See, you raised a very valid point, and this is something that we do need to understand. Not just the definition of trans
So these have to be looked at on a case-to-case basis. So this is important that one is cognizant of that and decisions are taken into regard to this issue. But thank you for raising that point. I will just add to it. It is so, these cases that are given to the Supreme Court, the only opposition that we have faced is groups that have come up to the court and said that, if you are allowed to increase the limit from 20 weeks to whatever limit, be it 24 weeks or anything above that, it is automatically like increasing sex-selective procedures and you are allowing people to do it. Because it's somehow, according to them, it is somehow related. But it is not, because I have spoken to any number of gynecologists that everybody has the common feeling. Sex-selective procedures can be done as early as 7 weeks. And after 12 or 30 weeks, even a normal sonography can tell you the sex of the fetus. Now, जब वो 12 हफ्ते में ही पता चल जाएगा, तो you will not wait for until post 20 weeks to find out. And then say, oh, now because I know that it is of a sex that I do not prefer, so I will go and get an abortion. So, even when we talk about intersex periods of, it's the same, because without getting a sex-selective procedure, you will not know what is the sex of the fetus. So, automatically then, it will not attract only everybody, but it will also attract other laws that are running the illegality of procedures. Thank all the speakers. I think it's been an interesting discussion, but there are a lot of other issues that are wrapped up in sexual court, issues of morality, of ethics, of inherent gender discrimination when it comes to issues of abortion, and we hope to take that discussion forward. We also hope that a lot of states, the advocates from different states, will be more willing to take up cases like this in the High Court, because it furthers the discussion around this issue. And when more people are having discussion, I think we reach more resolutions to the problems. So thank you. और थोड़ा सा और सब्र करें, इस सेशन के बाद छोटा सा ब्रेक होगा, सोइए मत, स्टे विद मी। ये जो सेशन है ये ऑब्स्टेट्रिक वायलेंस और डिसरिस्पेक्टफुल केयर का है, यानी कि जन्म देते वक्त महिलाओं के ऊपर जो मारपीट को सहना पड़ता है डिलीवरी के दौरान, ये सेशन इसके बारे में बात करने वाला है। और इस सेशन में हम लोग के पास 2 स्पीकर्स हैं जो बात करेंगे इस मुद्दे पर। एक है हमारे बच्चे यहाँ शिक्षा बनीना, एनर्जेटिक पर्सन जो प्रयास में काम करती है। प्रयास जैसे आपको सब पता है, राजस्थान में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है और जनस्वास्थ्य अभियान के स्टेट कन्वीनर है प्रयास। और काफ़ी टाइम से प्रयास जो है वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, यानी कि हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो जो पैसे खर्च होते हैं उसको लेके बहुत सारे केसेस का डॉक्यूमेंटेशन किया है। और मेडिसिन को लेके भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण काम है। यहाँ हमारे साथ शिक्षा में जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करती हैं और केस डॉक्यूमेंटेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल करती हैं, कंसल्टेशंस ऑर्गेनाइज करती हैं, पब्लिकेशंस व्यक्ति भी हैं। और जिस प्रोजेक्ट पर ये काम करती है HRL के साथ मिलकर काम करती हैं उस पर, तो मैं पहले आमंत्रित करती हूँ कि आप इस पर बात करें। शिक्षा बेनिफिट्स सुबह से बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं और ये टॉपिक भी बहुत ही सीरियस और दिल दुखाने वाला टॉपिक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबको थोड़ी नींद आ रही है। सो आई थिंक पहले मैंने सोचा कि एक कहानी सुनाऊंगी, पर मुझे एक चीज़ समझनी कि हमारे यहाँ बीच में डॉक्टर्स कितने,
केसेस हम कर रहे हैं, इसका केस कोर्ट में भी गया है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, वी गेट एन ऑर्डर, बट जिस तरह से प्रेयर हम देते हैं उसमें ये चीज़ जो मेंशन करनी है ये बहुत ही ज़रूरी है। अब इस केस में क्योंकि मेटर्नल डेथ था तो एक बहुत बड़ा इशू बन गया, इसलिए वो केस लगाना आसान हो गया। इमेजिन कि इसका मेटर्नल डेथ नहीं हुआ, आप सोचें कि ये महिला अगर जिंदा हो गई, इसके दोनों पेरेंट्स में जिंदा हो गए, स्वस्थ हो गए, तो क्या कोई ये इशू रेज करता कोर्ट में जाने के लिए? हम वही केस को रेज करने में आसान समझते हैं जिसमें वी हैव समथिंग टू प्रूव। नाउ इफ देयर इज वायलेंस such as the loss of hitting or saying abusive words, we can't always prove it. Maybe physical violence we can prove क्योंकि marks होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जो verbal abuse है वो हम prove नहीं कर पाते हैं। तो I guess when we get such kinds of cases, we have to talk about the issue of the treatment of the woman. I don't think कि जो NCI की guidelines इसमें कहीं भी लिखा हुआ कि आप औरत को ढंग से ट्रीट ना करें, इसलिए मैंने शुरू में पूछा कि कोई डॉक्टर है क्या, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर कि क्या गाइडलाइंस में जो डिलीवरी की गाइडलाइंस उसमें क्या अच्छे से मेंशन है कि किस तरह से आपको पेश आना है महिला के साथ, किस तरह से बर्ताव करना है प्री डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी। आई एम श्योर कुछ तो गाइडलाइंस होंगे ही। इफ एनीबडी इज अवेयर ऑफ एनीथिंग लाइक दैट यू कुड शेयर विद मी, बट अदर दैट जो वायलेंस है अगर हम उसका मीनिंग देखें डिक्शनरी में तो उसमें साफ साफ लिखा है कि any action or word that is intended to hurt. So we forget the words. For example, there have been a lot of cases where we see that while a woman is delivering, the nurse says things like, and I quote, कि करते वक्त नहीं सोचा कितना दर्द हो रहा है. This is such a common line that the nurses tell the woman while she is delivering, and this is really violent. I mean, this is absolutely demeaning and dehumanizing the woman. How dare she says करते वक्त नहीं सोचा अब क्या अपनी दर्द का हो रहा है. So इस तरह के बहुत सारे आपको दिखेंगे केसेस जहाँ पे हेल्थ प्रोवाइडर्स इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं. और जैसे कि ये केस है, इस तरह से और भी कुछ केसेस हैं मध्य प्रदेश के और राजस्थान के नाम में पाए हैं जहाँ पे डिलीवरी से पहले से थोड़ा थोड़ा वायलेंस का वो देखना शुरू हो जाता है. किस तरह से कि महिला को प्रेगनेंसी से पहले जो 4 ANCs मिले हैं वो ढंग से नहीं मिलते तो उसमें भी वो मना कर देती है. कई बार नर्स कहती है, ANM कहती है कि नहीं मिलेगा, खाना जो करना है कर ले. So she is not afraid to say all these things because she knows कि सारा से ज़्यादा क्या होगा, उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे या नर्स को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेज देंगे. So there is no fear of law, there is no fear of anything. ये बहुत दूर की बात है कि हम इंसानियत चलाएंगे and all that. This is a long process, but there is no fear of law. The kind of cases that we read, they're not scared to say anything. They're not scared to do anything. So violence is happening all over in all the hospitals, and this is also another reason why धीरे-धीरे when we talk to people, they don't want to go for institutional delivery. Yeah, and the government is focusing a lot on institutional delivery, but the path to the institution is really difficult, and people are opting for private facilities. We don't go to government hospitals. We are advocating for government hospitals here. Even we don't step inside government hospital. I live in Jaipur, and there is this huge medical college hospital called SMS Hospital. I also didn't go. I had a ligament tear, and I did not dare enter the government hospital because I knew I would have to stand in line for hours, and the doctors won't be there and all that. So this is, it's a scheme. It's like an intention by the government to destroy the government institutions so that more and more people keep going to the private institutions. So this is also indirectly increasing our direction to private hospitals, and ultimately the corporate private hospitals are gaining a lot of profits, and government hospitals are just breaking down. So I'll end this. Thank you. Obstetric violence का जो मुद्दा है वो पिछले 15 साल तक ज़्यादा उभर के आया है. जब से ये पॉलिसी बना कि सारी डिलीवरी जो है इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को पुश करते करते ये जो वायलेंस है जो हम देख रहे हैं तो वायलेंस भी बढ़ता चला
बार इस वायलेंस को इतना नॉर्मलाइज किया जाता है, इतना आम है कि महिलाएं इसके बारे में सोचती भी नहीं। जैसे मार खाना, थप्पड़ मार दिया, है ना, तो कुछ गाली बोल दिए, तो इसके बारे में कंप्लेन करने वाली बात शिक्षा कह रही थी, तो इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि ये नॉर्मल सा हो गया कि आप जाएंगे तो आपके साथ ऐसे लोग करेंगे ही करेंगे। और ये दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ है वो है सत्ता या पावर का इशू, क्योंकि उस समय प्रोवाइडर महिला से ज़्यादा पावरफुल है, तो एक तरीके से उसका नाजायज फायदा उठाकर वो अक्सर ऑब्जेक्ट वायलेंस के इलाज करते, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उभर के आया है और विश्व भर में इसमें हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे रिसर्च होना शुरू हुआ है। इंडिया में भी वाइट अलायंस ने इस मुद्दे को काफ़ी उठाया है और WHO के काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स इसमें आए। आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूँगी कि हमारे अगले स्पीकर देवस्मिता जी बात करें। शी इज ह्यूमन राइट्स लॉयर जो सैम से आई हैं और बहुत पैशनेट है अपने काम को लेकर, केसेस की डॉक्यूमेंटेशन करती हैं, जो भी वायलेशन औरतों के खिलाफ हुआ है इस पर उन्होंने काफ़ी PIs फाइल किए हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में, और इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हैं गुवाहाटी में टी गार्डन के एरिया में प्राइमरी हेल्थ केयर मिलकर, और इसके बारे में हम अनुरोध करेंगे आप अपने जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा करें। हेलो, गुड इवनिंग। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जस्ट वी नो व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव वायलेंस, इट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड व्हिच इट्स वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी, जो हम लोग का इक्वलिटी का आर्टिकल 14 इज वायलेटेड, आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अगर कोई प्रेगनेंसी का समय, चाइल्ड मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव केयर का समय अगर हॉस्पिटल में गया and the lady is humiliated and this is violation and its dignity is concerned, so it's directly it's our fundamental right to be infringed. So वो हमारा right है। If we see about the government hospitals में my personal feeling is two stragglers of people they go. If it's their top shots, bureaucrats, yes they will go because through they will get VVIP treatment because high top facilities are there, especially in the Assam we have seen that, or the poor people. Poor people are treated like cats and dogs. Wherever they go in the government hospitals,
and she was referred to Silchar Medical College. Silchar Medical College ले जाने के बाद blood transfusion दिया गया, but due to excessive bleeding, she died. Hemorrhage हुआ उसका. So this is only because the obstetric violence उसका ऊपर जो हुआ गया है, जो care during childbirth के समय लेना चाहिए था, the nurse and the doctors उन्होंने. We have filed a petition in Guwahati High Court. तो judges ने सुना, इसके बाद तुरंत जो स्कीम के तुरंत इंटीरिम ऑर्डर हम लोगों को मिला वो केस में, and the case is pending. और एक केस में जो हुआ, the lady was from the border, international border area के से थे, and it was one of the district of Assam, it's called Kadimganj district, and she was in her labor, she came to the hospital, and the doctor, resident doctor, he was busy in his private practice. He did come when she was in her labor, then later on, when he was called for, then also he did not come. Then he just sent the message to the nurse that tomorrow morning I will come and check her. At night, 1 o'clock, she was in her again, she was suffering and she was screaming in her labor pain, and then nurse, with the help of nurse, she delivered the baby. And then her private parts has to be forceps was used, then her private parts has to be little bit cut. And the cotton and everything was put in there. But the next very day when the doctor came, after his round in the entire hospital, he came to visit her, and then her private parts was stitched without cleaning up her private parts. So whatever cotton and everything was inside, and later on she was discharged, and slowly, and when her husband told that let her be there for 2 days, she delivered on 17th, and on 18th only she was discharged in the evening. Well, at least for 40, even in the normal delivery, the norms is that 48 hours there has to be there for observation in a hospital. But prior to that, she was discharged, and when her husband told that we stay in the far off places, it's almost 50 kilometers from the hospital, then doctor says that this is not your father's hotel, that you will decide here. So after that, she was discharged. When she went back, she was having fever, and she was just 21 years old. She was having fever and all, and then later on they have come to another hospital, and then later on she died. She was diagnosed as sepsis because all the foreign bodies like organs and everything was inside, and her private parts was stitched. So she died because of within 21 days of her childbirth. This case also, when we took up to the High Court, one of our prayer is that disciplinary action against the doctor. Even a criminal case was registered. Right now, a criminal case is pending, and he is on bail. And so, any sort of obstetric violence, I will request the House that please try to bring it up and file cases in the High Court for compensation, because women are not object. Please give the dignity so that a woman also can fight for her rights. Thank you very much. और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने रेज किया कि गवर्नमेंट अस्पतालों में आप किस वर्ग से हैं, उस पर बहुत निर्भर करता है कि डॉक्टर्स आपके साथ कैसे ट्रीटमेंट करें. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ अक्सर काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, और डॉक्टर्स उनके साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है. लेकिन अगर आप फटे पुराने कपड़े में आए हैं, अगर आप गरीब हैं, तो डॉक्टर्स को लगता है कि जो मर्जी कह लीजिए कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला. और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हम इसको दे रहे हैं. अब चाहे हमारा इंतजार कर रहा है, तो 5 मिनट के लिए मैं फ्लोर दूंगी. किसी को कोई सवाल पूछना हो हमारे पैनलिस्ट से, तो आप उसको रेज कर सकते हैं. पॉइंट को शॉर्ट रखिए ताकि सबको मौका मिलता है. कोई सवाल? ऐसी परिस्थितियों में किया क्या है? ये कई केसेस आते हैं जिसमें महिला प्रसव के दौरान मारपीट होती है, या इस तरह की बातें आपने कही नहीं तो वहाँ मारपीट, तब तो नहीं चिल्लाई, आप कुछ चिल्ला रहे हो, ऐसे खूब कुछ सुनने को मिलते हैं. और महिलाएं शेयर भी करती करती है उनके अपने बीच में. ऐसी स्थितियों में किया क्या है? यहाँ भी केवल बात सुन के हम लोग चुप रह रहे हैं, लेकिन आगे क्या किया जाए इसको रोकने के लिए? ये कहीं ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है. ये सवाल आपने उठाया है, इसको कैसे किया जाए? और सवाल है, 2-3 सवाल लेके कोई रिस्पॉन्ड फिर करेंगे हमारे. क्या कोई एक्ट है इस पे? मेरा मतलब बात है, क्या कोई एक्ट है? इसको एक्ट डायरेक्ट कैसे है?
नहीं पता था टाइम। तो उसके बाद अच्छा तो तुम्हें लड़की पहला करती है कि घर मत आओ, मेरी सब लड़का वाला तो फिर सब देते अब तुम्हारे माँ बाप को बोलो, या जो उसको रेस्ट पीरियड मिलना चाहिए आफ्टर द डिलीवरी वो नहीं दिया जाता कि हमने भी बच्चे पैदा किए थे तुमने कर दिया तो क्या हो गया था आपको। सो व्हाई हैव वी स्पोकन इन द मेडिकल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे ध्यान नहीं लगा कि मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इतना वायलेंस से होता है, लेकिन जो ये घरों की चार दीवारें में दैट्स आल्सो नॉट अ बिग वायलेंस, राइट? सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आई वुड लाइक टू से समथिंग। आई एम नॉट श्योर हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अनुज कंसर्न, बट आई थिंक आप लोगों का जो कंसर्न है उसमें से एक चीज़ हम भूल रहे हैं कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 2010 में मेडिकल एथिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल दिया गया है एज टू व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्विस प्रोवाइडर। एंड हम लोग जब भी हमारा पिटिशंस डालते हैं हम ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के बारे में बिल्कुल नहीं बात करते हैं, नाइदर डू वी टेक दैट seriously, nor we try to see whether the state is enacting it adequately and efficiently. So I think आपने जो कहा कि क्या कर सकते हैं, पहला बात तो ये है कि हमें देखना चाहिए कि हर स्टेट में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत सारे सिस्टम्स, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश हुए हैं कि नहीं। यदि नहीं तो फिर उसके ऊपर एडवोकेसी या लीगल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं। थैंक यू। Just one check there is a legal establishment act of the private sector, not so much for the government sector. तो ये है, लेकिन ये जरूर है कि एथिक्स के हिसाब से जो चार्टर होना चाहिए, पेशेंट चार्टर, उसमें इसको इंक्लूड किया जाता है। तो दैट पेशेंट चार्टर इज वैलिड फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल। I wanted to respond to you, sir. आप लोगों का सवाल थोड़ा सिमिलर था कि करना क्या चाहिए। तो इमीडिएटली ये है कि जैसे नमस्कार ने बताया कि केसेस फाइल करना वो इमीडिएट एक्शन है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर हमें देखना है तो वो हमें लगे रहना है, मतलब बहुत टाइम लगेगा ये कामों के चीज़ को सॉल्व करने में। और बहुत दफ़ा ये होता है कि जब आप कम्युनिटी लेवल तक जाते हैं, जब आप बात कर रहे हैं, सेक्स एजुकेशन वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उससे कभी कभार ऐसा लगता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है कि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा शुरू करने में। बट दोनों चीज़ें साथ में लेके चलिए, केसेस भी हमें खूब लगाने का, साथ ही साथ रस्तों में भी खड़ा होकर पॉलिसी भी खूब करनी है। और जो आप कह रहे थे सरकार है ऑलरेडी कॉग्निटिव, बट आई कैन ऑल्सो थिंकिंग करेक्टली इफ आई एम रॉन्ग, अदर वायलेंस इज स्टिल कवर्ड इन लॉट ऑफ एक्ट्स, लाइक महिला का जो इशू होता है घर में डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत होता है। ये टॉपिक रखने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसके बारे में इतनी बात भी कर नहीं रहे हैं, बहुत कम। अगर केसेस भी लगा रहे हैं महिला हिंसा में रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो ज़्यादातर मेटर्नल डेथ हमारे पास में जो केसेस हैं वो सारे मेटर्नल डेथ हैं। और क्योंकि हम फील्ड वर्क करने गए तो हमें पता चला कि उसके साथ मार्केट भी हुई है। क्या ऐसे केसेस हैं जिसमें मेटर्नल डेथ भी वहाँ माँ सुरक्षित है, बच्चा सुरक्षित है, सब कुछ सही है और मार्केट हुई है और हमने भी केस लगाया है। सो वो बहुत कम टेंशन है ना के This thing I would like to respond. See, for घरेलू में अगर कुछ हिंसा होती है, not like in male child, female child, we have special legislation protection of women for domestic violence act. Basically, this act are there to protect women from the different sort of violence. But this is especially we are focusing now on like institutional care, where there is institutional care and there is violence. There we are speaking about. And it is not act. And I'm going to say that we can take this discussion over tea. There's just one last question. The rest over tea, please. We will have these two speakers. We are running very late. बताइए। इस मैडम ऐसे आया था जो हमने दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया था लास्ट में 1 जून को दिया था, तो उसमें मैसेज किया था हमने कोर्ट में। तो
इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताएंगे, तब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में क्या हुआ था। कि जब मैरिज किया था तो कोर्ट ने ऑर्डर अच्छा दिया। जब हम ऑर्डर हम पे 6 तारीख को उसका था ऑर्डर लिखा था कि एक तो कुछ वो रह गया था, तो क्या था आप बात वगैरह के फिर दोबारा का मतलब बहुत बुरी कंडीशन थी उस वक्त की। और फिर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर को मैं गया था, मतलब मेरा पूरा दिन बर्बाद हो चुका। उसके मतलब गया डॉक्टर से बात करने वहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगा कि जो सरकारी जो डॉक्टर हैं वो मतलब उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि मतलब उसको जानते ही नहीं। सवाल ये है मैम कि मतलब जब हॉस्पिटल में जाते हैं, वुमेन हॉस्पिटल में जा रही है, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि मतलब नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसा होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसा होना चाहिए मतलब जो तुरंत एक्शन होना चाहिए कि आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए वुमेन से। अगर ऐसे वायलेंस होता है अगर उन्होंने भी बोला क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपाइल दोस केसेस कंपाइल करने के बाद हम लोग पीआई का वो लेके जाएंगे ऐसे होगा सो दैट डॉक्टर्स का बिहेवियर जो ऑब्स्टेकल केयर में जो वायलेंस होगा वो नहीं करे, बिकॉज कुछ गाइडेंस कोर्ट अगर फ्रेम करके देते हैं तो व्हाट आई फील विल बी बेटर। बिकॉज हम लोग का केस में कोर्ट इंटरव्यू किया है, गवर्नमेंट को हम लोग का जो केस फाइल किया है कोर्ट में गवर्नमेंट लॉयर को पूछा है आप लोग का डॉक्टर्स ऐसे बुरी तरीके से क्यों पेश आ रहे हैं पेशेंट के साथ। सो अगर हम लोग सब केस स्टडीज देखते हैं जहाँ मेटल डेथ होंगे, अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है तो अगर ऐसे ऐसे 4-5 केस स्टडीज लेने के बाद इफ यू गो फॉर पीआई विद स्ट्रिक्चर सो दैट आप मतलब ऐसे ना हो तो बेहतर हो। मैं बस समाप्त करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव वायलेंस की वजह से जैसे हमारे पेरेंट्स ने बताया कई सारी महिलाएं प्रेफर करती हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाए जहाँ पर उसका बिहेवियर का बेहतर होता है। और एक तरीके से घर में डिलीवरीज को हमने बंद करा दिया, जुदाई आप देखभाल कर रही थी और एक तरीके से आपकी साथी थी डिलीवरी के दौरान उनको तो आपने निकाल दिया। लोगों को आपने कहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाइए, वहाँ लोगों के साथ आप मारपीट करने लगे। तो ये गंभीर समस्याएं हैं जिस पर और चर्चा करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप पेशेंट्स रखिए और यहाँ पे बात सुने, चाय आपका इंतजार करिए। या
इस बीच में हम लोगों का जो संगठन है महिला स्वास्थ्य विभाग में उसकी मीटिंग में वो आई, उसे पता लगा और हम सफर और हैदराबाद फोरम के लोगों ने उसे ले जाकर 3-4 मिलकर आलोचना उसकी जांच करी। So then the organization took it up and ultimately they took up the King George Medical College. यूनिवर्सिटी Now a university. उसमें जांच करवाई, उसके अलावा उसको प्रिंट मीडिया के साथ में बात करवाया गया। ये मसला अखबारों में भी निकला और फिर इसके बाद उसने लगा कि उसके पति कंवर पाल सिंह ने दोनों ने न्याय की मांग की और दवा की मांग की। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में फिर से उसकी जांच हुई और वहीं से उसकी डायग्नोसिस। King George also they diagnosed her correctly as this vaginal fistula. The diagnosis was the same, and they took it up in the media, in the newspapers, and they campaigned on it. लेकिन कोई बेड न होने के कारण, अस्पताल में कोई बेड न होने के कारण उसकी भर्ती नहीं हुई। 25-26 अक्टूबर को फिर से बुलाया गया, ऑपरेशन का डेट दिया गया, लेकिन उस पर भी ऑपरेशन नहीं हो पाया। उसको फिर जनवरी 2008 में बुलाया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि फरवरी 2004 का केस जनवरी 2008 के ऑपरेशन के लिए बुलाया जा रहा है। 1 साल हो गया इस सारी प्रोसेस में। अगर आदमी के पास धन होता, पैसा होता तो उसका सारी या उसके पास किसी भी तरीके का पावर होता तो उसका केस इतना लंबा नहीं खींचता। इस बीच में उसकी मजदूरी और उसकी वो दूसरी प्रॉब्लम थी वो आगे चलती है। So it took 1 year, and they kept on promising to operate, and they did not operate, and they kept on calling, and they did not do anything. And she had this illness of continuous urine discharge, which gives rise to infection actually inside the system. It's a very discomforting. 4 फरवरी 2008 को फिर से उसकी जांच हुई और ये 5 फरवरी को उसका ऑपरेशन हुआ था। मतलब करीब 1 साल लग गया तो उसका ऑपरेशन हुआ और उसकी 22 फरवरी को उसको छुट्टी दी जाती है अस्पताल से, लेकिन पेशाब की नली लगाई जाती है। ऐसे पेशाब की नली लगाई जाती है तो पेशाब की नली उसकी जो है पर एक बार 11 मार्च को उसको बुलाया जा रहा था, नहीं निकाला गया। फिर दोबारा जो है उसको बुला करके 24 अप्रैल तो 2-3 महीने तक वो पेशाब की थैली लेकर रहती है। But the tube which carries the urine was supposed to be removed, and they promised to remove it, but they removed it very heavily. ये उसकी कहानी थी और इसके लिए जो भी पैसा था वो सफर के लोगों ने कलेक्ट करके इसमें भी पैसे खर्च हो रहे थे जो करवाया गया था। करवाने के बाद महसूस हुआ कि नहीं, इसको लेकर के हम लोगों को कोर्ट में जाना चाहिए और फिर इसके बाद वो हैदराबाद फोरम हम सफर साथियों के द्वारा स्थानीय संस्था जो काजी की थी उनके सहयोग से इसका हाई कोर्ट में किया गया था और अभी रिसेंटली 9 मार्च 2018 इसके लिए आर्डर पास हुआ है, जिसमें एक तो स्टाफ की भर्ती, जो उन्होंने बताया कि हमारे पास स्टाफ कम है। So ultimately they decided that he must go to the court. Even if she's been treated and so on, he must go to the court. Because this was a case of, neglect. You go from hospital to hospital, years pass. And people asking for money and all that sort of thing, and in the end it's done. So we decided to go to the court. कोर्ट का आर्डर तो लंबा है, लेकिन आप लोग लेकर के पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 3 चीज जो मैंने उसका विश्लेषण किया उसमें था, सरकार की तरफ से जो एफिडेविट्स दिए गए उसमें समझ में जो आया जज को आया कि पुअर अटेंडेंस इन मेडिकल सर्विसेज, जो मेडिकल सर्विसेज हैं या सर्विसेज देने वाले डॉक्टर्स हैं उनकी उपस्थिति बहुत कमजोर है, मतलब वो नहीं है, अस्पताल पर नहीं है, सेवाएं नहीं है। So the first thing is actually I just put it to pick up my own and then the case in Supreme Court. We filed the case, but the case took 20 years. As you are not disclosing a very important fact. कितना साल लगा? नहीं, मैं उसको बहुत साल लगा। 2007 का केस था और 2007 में जो है 8 में आया, इसका तो अपना 9 मार्च 2018 में आया। तो करीब 10 साल के आसपास He's being very kind to human rights law. इस साल 10 साल से अधिक हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग रहा। पर्सनली मैं इसमें
काफी टायर्ड हुआ। मैं और मेरी एक बड़ी थी नंदी, और वो महिला आयोग में जाना इस केस को लेकर के इलाहाबाद में वकीलों से बात करना, और वहाँ से जो उसका पति था वो रात में मुझे फोन करता था, सर कुछ नहीं हो रहा है, HRL वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कोलेज साहब हमसे बात हुई, शर्मा जी से बात होती है, तो शर्मा जी से मैं बात करता हूँ, उनसे मैं बात करता हूँ, तो कुछ संतोष देता था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी बात, सो बेसिकली 10 साल से ज्यादा मतलब ऐसा वेस्ट हो गया। फ्रॉम Allahabad High Court is very badly understaffed with judges, so this is our excuse. Very badly understaffed, so the case will not come for years and years and years. But it is something to be remembered that Salender's case took 10-11 years for final judgment to be done. लगा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि जो नीचे लेवल पर एससी पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर जांच के सिस्टम नहीं है, तो आप कैसे मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं? देखिए तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है। So now look at it, it's a fantastic order. Have you not seen the Salender order? Has it come to you on email? Have you sent it on email? Salender order has been sent on email. First, the judge is looking at staff strength in all the critical hospitals in the state of UP. And the judge is finding that the recruitment and the attendance is 30% or 40%. So out of 100 doctors who are supposed to be there, 100 nurses, 100 ward boys, 30% is actually recruitment. First issue. डॉक्टर और स्टाफ दोनों की भर्ती की बात हमने की है। दूसरा जो है दवाओं की आपको उपलब्धता दोनों की बात की दवाएं पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जाए, खर्चित की जाए, और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में लोग गड्ढे में डाल करके रोकने वाली बात है Very important. Medicines are not bought. Medicines are not available. The patients are sent out to buy medicines which are supposed to be given free. मेडिकल केयर ऑफ वुमेन्स ANC पर जोर दिया उन्होंने, क्योंकि ANC हो भी जा रही है, मेडिकल केयर हो भी जा रहा है, और मेडिकल केयर की स्थिति बहुत ऊपर है, तो उसको लेकर के और पैरा बनने लगा है। So antenatal care, postnatal care is very poorly developed. इसके अलावा हमने ट्रॉमा सेंटर को इम्प्रूव करने की बात की, और भी सारी चीजें IPHS को लेकर के इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं आप, CSC पर इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, PSC पर क्या होना चाहिए, अस्पतालों में क्या होना चाहिए, वो है नहीं कहीं, तो उसे इम्प्रूव करने के बारे में भी, और वो है क्यों नहीं, ड्यू टू स्टाफ सबसे बड़ा स्टाफ नहीं। Then they visited the trauma centers and they described the filthy conditions of the trauma centers, where the AC and the ICUs, intensive care units are not functioning, air conditioners are not functioning, and if I remember right, there was a part where they had machines that they had, equipment that they had purchased was stored in the toilet and so on. उसमें पुलिस को भी ADBP को भी आरोप किया है कोर्ट में, क्योंकि एम्बुलेंस को रेफर मिलना या फिर ट्रांसपोर्ट जो उल्टी सीधी जगहों पर खड़ा होगा उसको लेकर के भी ऑर्डर उन्होंने दिया, उसी में किया है। बहुत अच्छा, जजमेंट तो बहुत अच्छा है, बस इसका कंप्लायंस कितना होगा ये फिर आगे देखने की जरूरत है। Ambulances were not available. So we recommend that you read the judgment because it is a brilliant judgment. Maybe he got compensated for 11 years of waiting, but it came before a brilliant judge who covered all the aspects of the public healthcare system in Salender's case. And want to add one more thing. In that, the health secretary filed an affidavit saying the trauma centers are working in perfect condition. So what the judge did was he said, Mr. Advocate, आप जाके check करो. तो कोर्ट में बैठे हुए हैं, उसको बोला जाके check करो. They went immediately and checked and gave a report that it is filthy, it is dirty, it is not functioning, ICU is not functioning, air conditioners are not functioning, वगैरह. उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हेल्थ सेक्रेटरी को, और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेन किया ऑर्डर, सस्टेन किया, अलाउड द ऑर्डर, दे सेड वेरी गुड ऑर्डर, एंड नाउ दिस कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट द हेल्थ सेक्रेटरी इज गोइंग ऑन इन इलाहाबाद. Yeah, very good order, sir. So that is the story of Mr. Salender's case, which we got totally frustrated. We thought it was finished. There was no chance. जज ने तो ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश का हेल्थ सिस्टम राम भरोसे
लिखा हो, जजमेंट भी लिखा, राम भरोसे तुझे लिखा हो स्टेटमेंट भगवान के भरोसे है, जो हो जाए वो सही है। So the judge wrote in his judgment that the healthcare depends on the grace of God. But it's a beautiful judgment, you must see it here. Beautiful judgment. Call it not God, Ram. Ram. The head of the country, Ram. राम भरोसे, राम उत्तर प्रदेश के थे भी ना। Any questions to Rajni? We'll take the question now. Yes, please. Just to clarify, whether this particular woman's case is same, because when you explained the case, what I understood is that it was a medical negligence. A woman had a leakage of urine, but when it comes to the thing, you are talking about the UP's public health system. So, did she ask for compensation, or did she have to go to consumer court? So, did you get the case supported? कंपेंसेशन नहीं है और हम लोग धोखा बोलने में नहीं है, इसको हम लोग पहले अपने लेवल पर लोग सोच रहे थे कि यहाँ से पहले सेमेस्टर समाधान हो जाए, लेकिन नहीं हो पाने के बाद हम लोग उसको करते गए, क्योंकि एक साल तक को झेल गए, फिर हम लोग PIL भी गए थे। हालांकि उस बीच में हम लोगों ने राज्य महिला आयोग वगैरह को संपर्क किया था, तो लेट हो रहा था, कुछ भी नहीं आ पा रहा था, तो हम लोग राज्य महिला आयोग वगैरह में कई बार चक्कर मारे, वहाँ से कुछ हो नहीं पाया। So this went straight to the High Court. So this was a writ petition? It was a writ petition, public interest writ petition. It went straight to the High Court, the directions were given. For the judge took the approach, I want to correct all the institutions in Uttar Pradesh, so these are the directions I am giving. But he didn't get compensation, and you're right, we have to look at that. This particular family, even after suffering for 1.5 years or something, she wanted to correct the public health system of UP. She didn't ask compensation for her. No, she. You will engage for 1.5 years. I can tell you, she asked for compensation, but it was not mentioned in the order. Am I right? क्या क्या डिमांड की गई थी? इस तरह की डिमांड की गई थी, लेकिन महिला को क्या किया? नहीं, वो तो सही है, बिल्कुल सही। दरअसल एक पिटीशन की गई थी, इसके बाद जब देखिए कंपनसेशन वगैरह का मामला जो है मीडिएट करता है, उसका मतलब होता है कि उसमें भी बात हो रही थी, या फिर सरकार से बात हो रही थी, तो कंपनसेशन बहुत डिले करके 5 साल बाद 10 साल बाद किसी कंपनसेशन का बहुत माने नहीं होता है, उसमें एक पिटीशन भी थी, और उस पिटीशन में था कि हमें तो एक तो हमें न्याय चाहिए, दूसरा बात एक तो आगे का सिस्टम है वो कैसे इम्प्रूव हो सकता है, इसलिए उसमें कंपनसेशन नहीं था। See, you're right actually. You're very right. This is a very nice question. Now that you mentioned it, the judge took the case as a chance to improve the system. But what about the woman? You forgot the woman in the process. You forgot the woman completely. Chance to improve the system. So we must challenge in the Supreme Court and get compensation. You're right. Is there, I'm just clarifying, I'm not sure whether a medical negligence case can go directly to the High Court with the writ petition, because consumer court is there for writ petitions. Yes, you can go in some cases, I suppose, directly. But medical, see, the focus was not medical negligence so much. The focus that she should be operated and she should be correctly treated, and that other persons like her should be correctly treated. But you're right, medical negligence normally goes to the consumer forum. And from the consumer forum, then it comes to the High Court, then it comes to the Supreme Court. This case went directly to the High Court, didn't go to the consumer forum. District Consumer Court, State Commission, National Commission, Supreme Court. That's the national. This is the High Court भी जाती है। नहीं, High Court भी वो वही के medical council of India. लेकिन इसमें this was a public interest petition filed directly in the High Court. Correct?
High Court has not given compensation, correct? Now we have to challenge that order because it is a recent order. We will challenge that order and ask for compensation. हो जाएगा. Any more questions? I was not very sure if such order also lead change the system also. Because after having a legal system producing an outcome which is telling us, but all of us know that the health system is we are broken and that is justice situation. Even the fact that all the Supreme Court orders are not implemented and there is huge contempt and court would take contempt at these issues. What is the outcome? What is the use of an order that simply says this is the problems in the system? मुझसे जवाब अगर चाहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स होते हैं और जो दूसरे कानून हमारे हैं अगर वो हैं उसके आधार पर आप जन संगठन किसी भी संगठन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए दबाव दे सकते हैं. He says his answer to that is that if there is a social organization, then we can take the question to improve the system. But I want to add to another. The High Court didn't just say that these are the problems. High Court said you had shortage of staff 60%. Fill up all the posts. High Court said you had so many crore rupees, several thousand crore rupees. Spend that money, improve the trauma center, repair the whatever AC. Very good. Then he ordered an order. ठीक है कोई आर्डर बनाने को आर्डर अपने आप ही काम तो करेगा कुछ भी किया वो कुछ भी नहीं किया वो. So what I say is after an order comes, the order is not implemented automatically. It is for the organization to implement it. That is what they do. अब मुझे लगता है कि बोर्ड में और जो उसमें वो ही लोग थे लायर्स थे इन लोगों ने कोशिश करके एक ऑर्डर निकलवा दिया. अब उसके बाद कंप्लायंस की जिम्मेदारी संगठनों की भी. Implementing an order is a responsibility of the petitioner organization or the NGO or whatever. People's organization. इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं स्टेट की जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन वो उसको लेकर के संघर्ष कर सकते हैं. All people's organizations are responsible for implementing. I'm the lawyer. Any other questions? It is also not the court's responsibility to hold the government in contempt if it doesn't follow the judgment. But it doesn't like. Yes, it is. That issue or it not holding the in contempt. Yes, it is. What is it called? What is the legal term for that? To find out if you are implementing the order and to punish. What is the legal term for that? What is the legal term? Continuing maintenance. That means I don't sign the order and throw the file into the dustbin. I pass the order, then I implement the order. The court implements the order. Okay? Anything else? मेरा एक मुद्दा है. कोई से आपसे इतनी बात पूछते रहिए कि आपका जो केस है बहुत महत्वपूर्ण केस है क्योंकि सिस्टम को सही जगह पे लगाने का काम जो है क्योंकि सिस्टम रहते हैं पॉलिसीज रहते हैं लेकिन वो काम करने का जगह पे लाना वो बहुत बड़ा मतलब होता है क्योंकि इसमें करप्शन भी है ब्यूरोक्रेसी भी है सब चीजों को ये कैसे एड्रेस किया है. मेरा सवाल ये है कि हम लोग यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स बोल के स्टैंडर्ड्स है अगर वो सभी सही तरीके से अगर हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो मतलब ये सभी ब्यूरोक्रेसी की करप्शन एकदम दूर हो जाते हैं सबको मालूम है. पॉलिसीज पॉलिसिंग करने के लिए रहते हैं और पॉलिसिंग में मतलब जन संगठन जैसे आप जिक्र हुआ जन संगठनों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. तो अभी ये जीत के बाद ये केस में जीत के बाद ये जो सिस्टम जो देश में लाया गया है इसको बरकरार रखने के लिए आपकी तरफ से कोई संगठन होकर आई है अगर आई है या आप कोशिश कीजिए जानना. नहीं यार टीचर्स को लेकर कर रहे हैं इस आर्डर को लेकर इस आर्डर को लेकर के इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई और कंसर्न आप है उसको जरूर कर सकते हैं. कोई और कंसर्न है अभी उत्तर प्रदेश का जो संगठन है फोरम और हमसफर महिला स्वास्थ्य ये तीन लोग नहीं इसके बाहर का नहीं रहता क्योंकि अभी 9 मार्च को आने के बाद
पर कोई इस तरीके का कि हम लोग इसको दूसरे अब यहाँ से चाहते से इसको और भेजा गया मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के अलावा छोड़ देने लगा गया है, तो में इसको डाला गया है, इस आर्डर को तो में भी डाला गया है। अब कितने लोगों ने इस पर एक्ट किया नहीं, मैं मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कितने लोगों ने किया, लेकिन हम लोगों ने तो इसको पढ़ा है तो इसको सेलिब्रेट किए तरीके से नहीं 10 साल इस मुकाम पर पहुँचे हैं, इसके तो जीत पाए तो लोग अलावा कुछ हो नहीं सकता, आप लोग नहीं मान सकते। और कितने राज्य नहीं कुछ नहीं होगा। तो ये आया है और इसको लेकर के हम लोग काम करेंगे, सोच सकते हैं क्या सोचना होगा हमें कि उत्तर प्रदेश में इस आर्डर का कितना कंप्लायंस हो पा रहा है उसे देखा जाए, लेकिन अभी कुछ इस तरह कुछ प्लान नहीं है। See, I want to make a point about PIA. What is the PIA? One is you have policy of government. Policy हमेशा बड़ा अच्छा रहता है. Policies are always very good. Practice is good. Then you have programs of government. This is our program, this scheme, this scheme, Pradhan scheme, this scheme. Practice is good. What is the PIA? What does the PIA do? PIA only does this much. This is the scheme of the government. This is the policy of the government. And therefore, this is the promise of the government. This is the practices here. Therefore, implement. That is all. Implement how the policy said there will be 50,000 doctors. Actually, there are only 10,000. Let go. Policy allocation of budget is 5,000 crores. Select this case. Allocation is 5,000 crores. Spending is 750 crores. Spend the money correctly. CAT to audit. So what is PIA? PIA is an affair. आप actually सरकारी हथियार को यूज करते हो. You are using the weapon of the सरकार. मेरा पॉलिसी, मेरा स्कीम, मेरा योजना, जो हर प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर वगैरह 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 टीवी पर बकवास करेगा, लेकिन वो बकवास जो है बहुत जरूरी और अच्छा बकवास हमारे लिए लॉयर के लिए PIA, क्योंकि PIA क्या करेगा, उसको लेगा आराम से, इसको लेगा पिटिशन में रखेगा और कॉन्ट्रास्ट करेगा, लीगल कॉन्ट्रास्ट है So all these promises of the government, we listen very carefully. Public interest lawyer listen very carefully. What is the promise? What is the practice? We go to the High Court, implement promise. That is all that the PIA does. Remember that. On any topic, when the tsunami happened in Chennai, government gave a rehabilitation paper. I'll give you house, I'll give you compensation, I'll give you this. The lawyers were very happy. We took the program quietly. Then we did fact finding, then we found it not implemented, then we went to High Court, then we went to Supreme Court, and we got thousands of crores of rupees. Thousands of crores. Government was supposed to spend to implement its own policy. So PIA is nothing but that. And always pay attention to government's promise. हमारा परंपरा है इंडिया में कि मिनिस्टर जबरदस्त प्रॉमिसेस करेगा और लिखित रूप में देगा, नोटिफिकेशन निकालेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑर्डर निकालेगा, टू टेक दैट क्वाइट एक्सटेंड. इसमें सेक्रेटरी ने जो दिया है उसने बताया उन्होंने 22.5 करोड़ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर 316 तहसीलें हैं, 822 ब्लॉक है, 5,959 ग्राम पंचायतें हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है, 18 डिवीजन है, लेकिन अस्पताल की बात करते हैं तो पॉपुलेशन की बात है उत्तर प्रदेश की. अस्पताल की बात करें तो 174 जो है हॉस्पिटल्स हैं, CSC 821 मतलब 1 लाख पर एक CSC से भी एक कम है, 822 लाख है एक कम है. फिर वो कह रहे हैं SC 3,496, फिर वो कह रहे हैं 10,000 की पॉपुलेशन पर हमारे पास एक बेड है. उसका सेक्रेटरी बोल रहा, उसका कोई थोड़ी बोल रहा, सेक्रेटरी जो एफिडेविट दिया वो कह रहा 10,000 पर हमारे पास एक बेड है. अब आप सोचिए 10,000 पर एक बेड है तो किस तरीके से आप सेंसस देना चाह रहे हैं, कैसे दे पाएंगे, कहां से आएगा चीज पूरा होगा. फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि 40 से 60% जो पोस्ट वैकेंट है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है.
machine in a day. These people are doing 100 operations, one machine in a day. So that is how the court called them. सरकार का पॉलिसी है, तो सरकार का गाइडलाइन है और सरकार का प्रैक्टिस. That is PI. So shall we stop? Please say PI or PI or? कैसे PI कौन सा कैसे है? This कैसे? अभी जो केसेस का कैसे बताया ना, ये केस PI नहीं है. अगर PI है, तो जैसे उन्होंने बोला कि जो औरत को क्यों कंपल्सन नहीं मिली, तो औरत को कंपल्सन तो इंडिविजुअल हुआ, तो PI में क्या इंडिविजुअल कंपल्सन मांगा जा सकता है? Anyway, it doesn't matter. See, it doesn't matter. Even in PI, you can get individual compensation. No problem. I know some high courts are saying, if PI है, so you cannot get any benefit. If public के लिए benefit है, then those judges have no brain. You can get, why not? See, I am Senator, went to court. She went for herself also. She went for the public also. So you can go for private purpose also. You can go for public purpose also. Isn't it? So private purpose will give me compensation. Public purpose will do everything in this state. Don't worry. So we go to the next person. Vincent is an advocate from Manipur. He's going to talk about the case that he made in the Manipur. Good evening. So I will talk to briefly on the CCRI that have been filed in the state of Manipur. Before that, in the state of Manipur, mostly rural places, there is no private hospital. So the healthcare facilities are solely dependent on the sub-centers, primary care centers, CCRI district hospitals. So if those facilities are not properly implemented according to the guidelines, then the rural places, the rural remote places don't literally have access to the health facilities. So we conducted fair findings and filed 20 GPIS. That's ranging from 2006 for 2-3 years, 16, 17, and 18. And so I will tell you some cases regarding why we find the PI. There are cases where there were like no buildings and it was not a rented house. And then in a single room, in one case, in a single room, there were 4 beds, forget the same building, all the equipment, fractures, everything was run in a single room. And so, and one problem is doctors don't stay in the primary health center. They are normally from the urban areas or the semi-urban areas. They just come once in a month or maybe once in 2 months. So that's the case. And they say because the road is not good, it's not during rainy season, it's literally not accessible. So the problem is, they say they do not come very often. So they come once or twice in 1 or 2 months. So we find a case in that case, and there are cases where doctors were not there, infrastructures were not properly treated. So these are the cases we find. तो मणिपुर में बहुत कम प्राइवेट अस्पताल है या प्राइवेट अस्पताल ही नहीं है, सब पब्लिक सर्विस है, पब्लिक अस्पताल है और उनका जो हालत है बहुत ही खराब है. जैसे बता रहा था कि पूरा हॉस्पिटल एक कमरा से चल रहा है, उसके 4 बेड है, इक्विपमेंट है वगैरह वगैरह एक ही रूम में है और डॉक्टर महीने में एक बार आता है और ऐसा बहाना देता है या एक्सक्यूज देता है कि रोड खराब है इसलिए नहीं आ पाए तो महीने में नहीं आता. So that's one scenario, that's one case, and we're able to find it's 23 plus one case on the blood bank. There are 5 blood banks in the state of Manipur. 3 is in Nepal, 1 is in one district,
one is in the Peggy district. So there is 5 bloodline and then only 1 blood storage unit. So in all the 7 districts hospitals, 5 district hospitals are running without bloodline and blood storage, including the primary health center and sub-district hospitals and CX. कानून के हिसाब से ब्लड बैंक होना चाहिए, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 1 ब्लड बैंक है, तो सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 1 ब्लड बैंक से ब्लड देगा। And in the state of Manipur, there is no CCRI unit in all the districts. This was recently, and so. And there is shortage of power, shortage of water supply. So these are the cases, some cases that we find. It is 20 PIs. And then, so after filing the PIs, the High Court constituted a committee. So a committee consisted of lawyers from every districts. They were asked to inspect, and most of the primary health centers, district hospitals, and the others, sub-centers, and submit the report. They have submitted the reports before they go on for field inspections. They were briefed on how to go about doing the big findings. They were briefed by the petitioner, by us. So we asked them to go about doing the findings with the checklist. So they did that, they submitted the reports, and they have submitted the reports to the High Court. And now the High Court have asked the counsel for the petitioner, for the government advocates to prepare the regulations and something so that each particular health will be can be considered clearly appropriate or can be passed. हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाया था, क्योंकि अस्पताल का जो कमीशन था बहुत ही खराब था, तो हाई कोर्ट ने वकीलों का कमेटी बनाया और डिस्ट्रिक्ट से वकील को दिया और वकील जाके जांच किया, रिपोर्ट फाइल किया और मैटर इज पेंडिंग। And among these 23, there is one case regarding occupation. The primary health center was occupied since 1994 by the Sunrise First person. They were using it as a camp. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कब्जा किया असम लाइसेंस। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट जोन में, जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़। सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस को कब्जा करता है और सिक्योरिटी फोर्सेस अस्पताल को कब्जा करेगा, अपना मतलब बैरक्स जैसा कैंप के लिए। And so the court has passed an order directing the Sunrise to vacate the primary health center. The primary health center was inside the premise of the army camp. But now it has been vacated. Currently, the primary health center is being run in a makeshift house. But it has been vacated by the house because they were used for storing the army as a storage and for raiding cattle. They were not usable anymore. So currently the primary health center is being run in a makeshift house. हाँ, तो ऑर्डर आ गया हाई कोर्ट से कि सिक्योरिटी फोर्सेस ये अस्पताल के प्रेमिसेस से हटने का ऑर्डर हो गया, क्या से निकल जाओ, तो निकल गया है। लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ कि ये जो प्रेमिसेस है इसका उपयोग नहीं हो पाएगा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, तो मतलब खराब हो गया था। लेकिन ऑर्डर हो सकता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट ऑर्डर हो सकता है। You have to get out, security forces to get out of hospitals and to get out of schools. You stay in your camps, you stay in your tents, but you cannot take these facilities to the army. Any questions for himself? Okay, so we come to the end of our dialogue. Does anybody want to ask any questions about the earlier sessions? Any questions
about PRLs, anything about the board session today? Yes, please. I wanted to know कि अगर implementation only government promises or implementation में अगर इतना gap है, तो should political parties को agenda implementation देती है, should they be binding on the political parties? Should the assurance given in an election manifesto be binding on the party? That issue the Supreme Court has issued notice on recently. But there is an earlier judgment of Supreme Court that you cannot get a court order to force the parties after they win an election to implement the manifesto. So that is being re-looked at by Supreme Court. I think there is no reason why a registered political party that makes official promises in its election manifesto, when it comes to power, why it cannot be held liable to implement those promises. It's an interesting question. हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, हम लोग जो फोरम्स हैं, जो लोग जनसंगठन हैं, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी ऐसा होता है कि बाल अधिकार पर काम करने वाले लोग बाल अधिकार कुछ मैनिफेस्टो बनाते हैं, महिला अधिकार पर काम करने वाले महिला इन मुद्दों पर जो काम करते हैं उसमें मैनिफेस्टो बनाते हैं और लोकल पार्टी को लोकल लेवल से जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसको देते हैं, लेकिन आने के बाद कई बार आप जानते हैं इस तरीके से मैनिफेस्टो कितना पालन होता है, तो इसमें हो जाता है सरकार पार्टियां अपने मैनिफेस्टो का पालन नहीं करती हैं, हमारे मैनिफेस्टो का पालन। वो दिक्कतें हैं, ये सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का आर्डर कर देगी, जरूरी नहीं आ जाता है इसको 100% मैनिफेस्टो पर काम करना, तो अच्छी बात कोई एक साथ जा रहा है, यही ना बात नहीं करने से इसको करा मैनिफेस्टो को अनिवार्य बनाया है, कंपलसरी विचार करते हैं। I think just reflecting on the entire day, one of the things that, because it's such a complex idea, like reproductive rights, it's connected with feminism, capitalism, place in society, we really must have a way to introduce the idea of reproductive rights to young women in school. Like it should be a part of sex ed. Is there a way to do a PIL on that, which is to include that if you're like complex things like sterilization, these are the procedures, or what are the schemes that if you are giving birth, what are you entitled to? Like it's because at a later stage it is so hard to instill in us the idea that these are your rights. Whereas if we can start doing it at a young age, once somebody is 13, 14, as soon as, along with sex ed, everybody is talking about sex education as if that is the only thing that is really affecting us, but whereas very real topics like obstetric violence, which women should be aware that what is happening to them is not normal, and so maybe we can look into what are the legal options that as to making all of this part of young people's education. It's strange that at 27 I'm starting to think about obstetric care. I didn't before. My mom went through something similar, and we all just assume when she tells us the story that it's a part of the birthing procedure where the nurses are rough with you if you are having a bad delivery. So I think that's something that would be great. Shiva, very important point, and there are precedents for this. On environmental education, Supreme Court gave orders for the schools and colleges to begin environmental courses. I think there is some case pending on constitutional law that it should be taught. Children are not even taught what the Constitution of India says. Can you imagine? They go to college without having a class on the Constitution of India. So why not have reproductive rights? Even a more fundamental question. What is a woman's right over her body? Everybody says consent. What does consent mean? Can anybody tell any of the lawyers, anybody? What is it consent? When a woman says, I consent to do a certain procedure or take a certain contraceptive, because now they are going to give you injectables. So in tribal areas, there is something called injectables there. One injection. They are going to give tribals.
ये HPV vaccine in Andhra Pradesh and Gujarat, they gave injections to 11-year-old girls. What is consent? Can anybody say? How is consent taken? The most important thing. Yes, you. How is consent taken? Consent means an informed choice. Informed choice. How is it taken? Without any kind of pressure, until or coercion, the law is informed. Yes, these are the repercussions, and you have an option whether you want to say yes or no. It's not a compulsion. And then consent is the answer. Nice answer. There are repercussions, and these are your options. So when you give an injection, let's say, right, you will say, this is possible, repercussion. आपको शायद palpitations हो सकते हैं, blood pressure हो सकता है, आपको heart attack हो सकता है. Out of 100 cases, 1 case you have heart attack and die. आपको rashes होगा, आपको swelling हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है ना? Who says, does anybody take consent of a woman? In India, repercussions they never take. If you see the advertisements on copper tea and all that, even government advertisements, you search, where is the point when they are talking about repercussions? It can, inside your body, it can do things, it can fester, it can turn toxic, it can give you infections. What should you do? Never say. And what will they say? It is 100% safe. Now you can file public interest litigation on this because you are misleading women into thinking these are absolutely safe. You understand? So in form you said repercussions and you said options. Correct? So when a woman is on the table and she's giving birth, see what happens in India. She's having a cesarean. They've opened her up. They've delivered the child. Then she is in that and is under anesthesia. Then they ask her or her husband, "Lagao, isko lagana bahut zaruri hai." And they put in the contraceptive device. And she's under anesthesia. Is that consent? Where is the option that madam, you don't have to do anything? You just get your husband to use a condom. That's all. Option is there. No? You can get your husband to do vasectomy. That is easy. It is cheap, it is easy, it is better than doing all this insertions. Who gives options in India? Nobody. Who gives repercussions in India? Nobody. They don't even give you a written form somewhere. और वो written form अगर देगा तो वो अंग्रेजी में होगा. It will be in English. And then she'll be illiterate, so she'll put a Tamil version. जरूरी कागज है ये बोली भाषा में लिखी कागज है. So these are all issues. I want to say on health rights, you can take in each state, you can take hundreds of cases to your high court. Hundreds, all winnable cases. But nobody fights for women in the courts. Nobody fights for them. That is why the government takes it for granted. चलो injection लगाओ. Injection लगाओ, ये करो, वो करो. Who wants to ask that? Let's talk quickly. Ask us. No, I just wanted to respond to this suggestion of including more stuff in sex ed. Please, this is why I want to respond to his suggestion of including more stuff in sex education. The thing is that if the sex education, at least proper ones, the fact is that in 8th grade and in 10th grade, these two are the only grades where we are taught about sex, menstrual cycle, contraceptives and everything. And even when we're taught all these things, they just skirt around the topic. They say, this is a vagina, this is a penis. They don't even pronounce it properly. So including new stuff in sex education is great, but the thing is that there is no proper sex education. Whatever we have learned about sex is from books, porn, and other materials instead of school. So the fact that the Central Education Board know that young people especially who are having sex right
can you do a PIL to have the government have it as part of all the syllabus? Yes or no? Yes. Definitely. Who will do it? Lawyers, hopefully. I don't know. And minors. Can minors do it? Minors can do it through their mothers. What's your name? Nikki. So you do it like that. It's called a petition of a minor. Nikki so and so, age so and so, residence so and so, through a mother, Sarita so and so, age so and so. You can do a petition. Ready? Yeah. For sex education? Hopefully, yes. And what? And a critique of the existing sex education? Yes. What do they talk about? How do they skirt? They don't show about anything. They just say that the penis enters the vagina, the ovaries and the sperm and the baby is formed. Then never sorry. It's a joke, isn't it? So, and this is in like school. Yeah, today. Everywhere. No. Now, to make a PIL really good, can you do a little research about how internationally, which is a very good system of sex education, say in Europe or wherever, and this is a course content? But it's saying that even in an international basis, there are some exclusion, especially towards the minority, like the LGBTQ+ community. Yeah. You don't explain. No, pause a minute. I don't go into the exclusion thing now. You're on the main track, right? On the main track, you're saying there should be sex education here. You're pointing out about how it's pathetic, according to you. Yes. Right? Probably according to the judge also. Yeah. But he'll say, okay, yes, now what do I do? And then he'll say, why sir, look at the Sweden system. Look at their standard 10 class book on sex education. Yeah. Look at Norway, how they teach their people in the class level. You understand? Yes. So you have to do a little bit of hard work. Your opinion is important. Your criticism is probably bad. But you have to be a little bit academically research oriented and show what is happening in other developed countries. And then say we want this system, as in Sweden or Norway, to which the government will say we are culturally different. They'll answer no. You can argue your own case actually. Seriously, I tell you, with the way you stood up and spoke, you're quite precise in your use of words, and you're very poised in your delivery. So you stand up in the Supreme Court, and then the government will say, and anticipate what the government will say. And you'll probably be the Attorney General, which is the senior most law officer in the country, and you say, what is this young girl doing? What is who does she think she is? Doesn't she understand culture? We Indians are culture, we don't talk this kind of stuff. He's going to say that, so then you'll answer that, right? I don't see how sex and information awareness relates to culture, which may or may not be incorrect and may or may not be inclusive to people of this country, especially since this country is theoretically secular and is an advocate for freedom and diversity and equality. So if I was the judge, I would allow you. I would dictate the order stated. So you got it, everybody's got it? This is the power of PI. क्या होना चाहिए आपके दिल में क्या है क्या होना चाहिए इंडिया में क्या सिस्टम होना चाहिए क्या थिंकिंग होना चाहिए क्या प्रैक्टिस होना चाहिए क्या है और लोग हमेशा प्रॉब्लम बताते रहेगा Give me that word. Yes, give me that phrase. Just say, give her the mic, please. Give her the mic. And just turn around and say it to everybody. We are talking about. Turn around. We are talking about. Sir, and about in Manipur, many can encounter is that. That's why we reduce this crime every 8 years, more than 8 years, and fighting cases. For that, we talk there and break. The time I am saying to sir that we are stop crying and we are courageous, we are brave to fight against the
fake encounter in Manipur, filing case to the Supreme Court. So in Manipuri, kappa lepe, kappa means cry, and lepe means stop. Kappa lepe is the word. Kappa lepe. Kappa lepe, stop crying. Yeah, you lost your husband, isn't it, madam? You lost your husband. How old was he? At the time he was about 30 and I am 29. Yeah, many young widows is here in Manipur, produced by the armed forces operating in Manipur due to fake encounter done by the security forces about 20-30 years. From 1979 to 2012, we find the case collectivity, the victim families, and all the extrajudicial killing. Then now we got some answer from the Supreme Court that from 2012, the second encounter killing is stopped, and we are still struggling to get justice. We are looking for the punishment about which is involved in these fake encounter killings. This is the process. CCRI investigation is going on. We welcome Supreme Courts and we thanks to Sir Collins Gonzalez. He is the counsel advocate for our case. Then before our case is done by one very unfortunately he was not here. His name was Mukul Sinha from Gujarat. He filed a case of 6 cases. Then I further tell in my session. The session is on Wednesday. We are all waiting to hear. A couple, I asked you to stand up only for this couple, lepe, don't cry. In India, our activists are lawyers, mainly are lawyers. All the time they are talking about problem. All the time. Yes, samasya hai, ye problem hai, ye hai, wo hai. And nobody is acting. That is why we wanted this conference. We want the advocates to go after promising to do cases. If we work collectively, we are brave, we are courageous, we don't need to cry. We have to stronger. Stop crying. Any other question? We have a 3-minute film after this, only for 3 minutes because we must be over time. So shall I end the session now? Any more questions? I will end it now. Thank you everybody. We had a very good first day. I want to just briefly tell you before I close up the session what is coming tomorrow. Tomorrow we have a very interesting session on rape and sexual assault. Then we have a session on marital rape. Let me ask a question. How many feel that a husband cannot be held guilty of having sex with his wife even if she says no? How many feel that it should not be a crime? The wife says no, the husband says no, you're my wife, I will have sex. How many feel it should be a crime? Should. How many feel it should not? So tomorrow you have to argue with everybody. I think there are many more also, but they have not said anything. Then we have hysterectomies. Doctors doing hysterectomies. जो जरूरी नहीं है वो hysterectomy. This is a Rajasthan case study. Then the transgender judgment. Okay, this is going to be an interesting case. Kamala has suggested that we move the transgender judgment up so that she can be here Wednesday. Can we do that?
Yeah, can we do that? So the transgender judgment we start with, and the cases are there. Then we have the Food Security Act. Then we have a very interesting session on violence against Dalit and tribal women. Then we have the child law, trafficking. So tomorrow we have a very heavy day of work. So we'll end the session now. We'll have a 3-minute film. I want to request all of you, at 7 o'clock we'll come and knock on your door. Please have breakfast early. Breakfast is at 7:30. And please come to this room without us calling you today. We have to come and wake you up. Please come here at 8:45. Exactly at 9 we will start. Okay? Sarita, is that fine? So 9